Okay, live on. एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ी रो कहानी एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ी रो कहानी वीर योद्धा जातिया में जीतिचु जीतिबु इतिहासे लेखा अछि लढ़िचु लढ़िबु गोधूली को दे आमे लघुर रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे We are live on YouTube. You can, yeah. एठी सूर्य उइले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर एठी सूर्य उइले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर आउ बाजी उठे मृदंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ मुसे कलिंग वीर पाई कर ताले ताले एठी गारे बालुत खेले वीर पाई कर ताले ताले केते जे पूजा पाठ केते जे पिठा पଣା सभिंगु कोले मु करे छोटी चिता भरी दिए अनेक रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ी रो कहानी
एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ीर कहानी वीर योद्धा जाति आमे जीतिचु जीतिबु इतिहासे लेखा अछि लढ़िचु लढ़िबु गोधूली को दे आमे लघुर रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग। एठी सूर्य मुहिले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर एठी सूर्य मुहिले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर आउ बाजी उठे मृदंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ मुसे कलिंग। एठी गाँ गाँरे बालुक खेले वीर पाइकर ताले ताले एठी गाँ गाँरे बालुक खेले वीर पाइकर ताले ताले केते जे पूजा पाठ केते जे पिठा पଣା सभिंकु बोले मु करे आपणा झोटी चिता भरी दिए अनेक रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ मुसे कलिंग। एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ीर कहानी एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ीर कहानी वीर योद्धा जाति आमे जीतिचु जीतिबु इतिहासे लेखा अछि लढ़िचु लढ़िबु गोधूली को दे आमे लघुर रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग
We have 4 minutes to go. Abhijit, you can repeat. एठी सूर्य उइले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर एठी सूर्य उइले नाचे मयूर सागर झरणा पहाड़ सुंदर आउ बाजी उठे मृदंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ मुसे कलिंग वीर पाई कर ताले ताले एठी गारे बाळू तो खेले वीर पाई कर ताले ताले केते जे पूजा पाठ केते जे पिठा पଣା सभी रे आपणा छोटी चिता भरी दिए अनेक रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे ना कि केबे डरे ना मुसे कलिंग हाँ मुसे एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ीर कहानी एठी केते झड़ बात्या बढ़ी पानी आउ केते मरुड़ीर कहानी वीर योद्धा जाति आमे जीतिचु जीतिबु इतिहासे लेखा अछि लढ़िचु लढ़िबु गोधूली को देई आमे लघुर रंग मुसे कलिंग मुसे कलिंग केबे हारे ना कि केबे डरे ना केबे हारे जय जगन्नाथ समस्त भाई और भौणी माने आशा करे समस्ते भलरे अछंती। आज आमे समस्ते ओडिया एआईएमएल गोष्ठीर चतुर्थ वार्षिक समावेश पई एकाठी होइछे। मो ना कुमारिका मोहांती आ मु आज एई समावेशर परिचालना आरंभ करिबाकू जाउछि। मो परे आहुरी परिचालक माने आसीबे और विभिन्न वक्ता मानक वार्ता आपण समस्तंकु पहुंचाइबे। We have several distinguished speakers joining us today to discuss several topics on AI in more detail. Mo confident achi je we will have a very productive and informative discussion going forward.
आपण माने समस्ते आज समय काढी जोग देइथिबारु मु आपण समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद जणाउछि। ए वर्ष आम कॉन्फ्रेंस रो थीम हेउछि इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एआई बिल्डिंग एक्शन प्लान 2030 बा एआई माध्यम रे सम्मिलित विकास 2030 पई कार्य परिकल्पना प्रणयन। आजिकाली चारिआडे एआई चर्चार विषय हेलानी। एहार कारण अनेक थाई पारे। गत किछि वर्ष हेला एहा टेकिज मानक चर्चा भितरे सीमित रहुथिला, किंतु एक गत किछि मास हेला रादर वर्षे हेला चैट जीपीटी ओ एआई इमेज जनरेटर्स रो बहुल व्यवहार देखिया को मिलुछि। इंटरनेट रे एआई कंटेंट रो मात्रा मध्य बढ़ी जाइछि ओ लोक एहा को ग्रहण मध्य करलेनी। आज आम गहन रे कर्नल आदित्य परिडा अछंती। से जने इंडियन आर्मी वेटरन और जने प्रोफेसर मध्य सुदूर स्वीडन रे थाई आम गोष्ठीर जने अभिन्न अंग। मु कर्नल परिडा को निमंत्रण करिया को चाहूची ओ ए सभार उद्घाटन करी एही कॉन्फ्रेंस को इंट्रोड्यूस करिया को निमंत्रण करछि। कर्नल परिडा। धन्यवाद कुमारिका। सुनि परछु मते? एम आई बी ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओडिया ना इंग्लिश ना मिक्स? नमस्कार सर, आपण ओडिया रो स्टार्ट करंतु, इंग्लिश हिंदी जहा सुविधा। ओके, थैंक यू दामोदर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जेमती कुमारिका कहिले, आई मीन आई वेलकम यू ऑल। समस्त को स्वागत। जो डिस्टिंग्विश स्पीकर्स, हमर जो odisha.ml रो जो मेंबर्स आ जेते सब यूट्यूब माध्यम रे भी सुन वर्तमान आ जेते सब ओडिया भाई भौणी जो माने ओडिसा रो जॉइन करछथि, समस्त को जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जयंती। आपण माने ए जो कॉन्फ्रेंस टा होउची तारो ऑलरेडी कुमारिका कोन हमर थीम इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एआई। म्यूट हे गलेनी बोधे, वॉल्यूम आसुनी। सुबुची सर, सुबुची। ओके, थैंक यू। तो इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एआई बिल्डिंग एन एक्शन प्लान। तो एथिरे आज आमे देखिबा माने एआई ऊपर मो बेसी किछ कहया को चाहुनी, काई जेते सब आम भितर अछंती समस्त जानचंती एआई कोन। मु कहबा को चाहूची कि odisha.ml आ तार जो ए माने हाईली एनर्जेटिक मोटिवेटेड आ जो हमरो टीम यंग टीम अछंती, लेड बाय अंजन एंड दामोदर साहू एंड Abhishek and lot of others. I can't take the names. नीलिमा आपण भी अछि। नहीं, मु by accident I came in touch with अंजन 2 वर्ष तळे and last तापरे हमें किछि एक्टिविटी भी आरंभ करथिलु। सो ता ऊपर मु टिके परे जीबी, किंतु वर्तमान मु कहया को चाहूची जे इनक्लूसिवनेस ता कोन आमे चाहूचु। व्हाई इनक्लूसिवनेस? आमे समस्त जेमते जोडी के कामटा करूछु, तो हमको एमिति का आगु को भी आमे सब हमर मेन एम होची ओडिसा पाई, हमर उत्कल जननी पाई आ उडियांक पाई। तो केमिति हमें हमर जो यंग जनरेशन अछंती, जो माने लेस गेटिंग लेस अपॉर्चुनिटी, हाउ वी कैन डू द हैंड होल्डिंग, से मानको हमें केमिति सपोर्ट करिया, से मानको केमिति हमें आगु बढ़िया को दबा, एंड विथ अ गोल ऑफ मेकिंग इंडिया मेकिंग Odisha a global hub, global AI hub. So with that aim आमे चेष्टा करूछु, एंड मु जहा देखुची हमर जो odisha.ml बहुत बढ़िया काम करूची। इन फैक्ट एटा जो व्हाट्सएप ग्रुप टा अछि एते एते इंक्लूसिवनेस अछि, एंड माय हेड्स ऑफ टू द कोर टीम एंड स्पेशली टू अंजन जे माने राती नसुई के भी जस्ट रिप्लाई दी चलची, एंड ही वांट्स टू कीप एवरीवन involved, active, and be part of this group. So seita ko that is a very great asset for odisha.ml. तो एटा को केमिति हमें आगु बढ़ेबा, मो परे जेतले मोर आउट अछि 5 मिनिट रो स्पीच टे ऑन द व्हाट इज द एक्शन प्लान, सेतरे मु कहया को चाहिबी, किंतु इंक्लूसिवनेस रे मु कहया को चाहिबी जे हमरे करि परिबा। एंड आपण मन को भीतर बहुत जेते मु देखुची, माने मु सब मेसेज जाको इनवेरिएबली पढुची,
मु देखुची जे हमर जत्ते सब मेंबर अछंती बिकॉज़ यू ऑल आर हाई अचीवर्स जत्ते हमर ओडिया ए जो यंग फ्रेंड्स अछंती यूएस रे होंतु कि यूरोप रे होंतु कि अन्य देखोस देश रे होंतु यू आर ऑल excellent, you are all domain expert, you are all, you are all high achievers. Only thing required is to do little hand holding. अब सेति की जदि हमें करि पारिबा ताले हमें बहुत किछि करि पारि कहबा को बहुत किछि चाहूची किंतु ऑलरेडी 6 मिनिट पळेलानी आई डोंट वांट टू डिले मो एक्शन प्लान ता इंक्लूसिवनेस टिके आरंभ करूची बट इंक्लूसिवनेस एंड एक्शन प्लान मु पुणी मो नेक्स्ट ईयर रे जते बेले 5टा बेले होबो सेते मु कहबी मु एति कहि रहूची आई जस्ट अगेन वंस ऑफ ऑल समस्त को बहुत बहुत वेलकम एंड आई जस्ट वांट दैट दिस कॉन्फ्रेंस शुड बी अ ग्रेट सक्सेस एंड इट शुड बी द पाथ ब्रेकर फॉर आवर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ओडिशा वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कुमारिका माइक नहीं आपनकर माइक सुबुनी अभिजीत कैन यू टेस्ट मु सुनी पारुनी कुमारिका को I can't hear also. No, your voice is not coming, Kumarika. Yeah, voice आसुनी माइक देखंतो आपनकर माइक चेक करो एबे असला हां यस यस एबे असला थैंक यू धन्यवाद कर्नल परिडा एबे आम संगे रे अछंती आयस्कांत महांती आयस्कांत इज द फाउंडर एंड एमडी ऑफ तत्व टेक्नोलॉजीज एंड president of TIE Bhubaneswar chapter and also a core member of Invest Bhubaneswar Connecting Odisha leadership team. So who else could be a better person than him to speak about Bhubaneswar entrepreneurs of AI for AI. So welcome Shri Ayashkant Mohanty, over to you. समस्तଙ୍କୁ नमस्कार माने सारा विभिन्न देश विभिन्न जगह ओडिया माने रही ओडिशा विषय चिंता करवा इटा आमे तो ओडिशा रहू किंतु बाहर रही कि ओडिशा समय बाहर करी चिंता करवा गोटे बहुत बड़ जिनस आ मु तो जड़ित अच्छी मूल समस्त जो प्लेटफॉर्म सहित लास्ट 4 वर्ष हेलानी स्पेशल थैंक्स टू अंजन एंड दामोदर बाबू एंड अन्य मन सहित मु कथा भी होई किछि लोक तापर आसी मु देखा भी लास्ट कॉन्फ्रेंस पर किछि लोक एठी हम कंपनी एठी हेतिला देखा भी करछंती आ समान से जो एनर्जी सबुट गोटा डॉक्टर परिडा कहले जे से जो एनर्जी दे काम से जो इंक्लूसिवनेस से समस्त काम करछंती डेफिनेटली ओडिसा रे गोटे किछिटा भलो जिंस होबा को जाउची एटा मु बहुत माने स्ट्रांगली फील करछि आ सबुट बड़ जिंस गोटे बड़ फील करछि आमाने एठी ओडिया रे कथा होउछंती जेते कॉन्फ्रेंस हम माने अटेंड करथु एबे जाइतिली गोटे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद रे ओडिया माने करतले सब इंग्लिश से कथा होता हम ओडिसा रे आसी कि हम ओडिया रे इंग्लिश से कथा बा हम ओडिसा को केते भल पाइबा ओडिया को केते भल पाइबा से जिंसटा देखि होची सो कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी विषय तो समझ जानि चंदी उणा अधिके किंतु मु गोटे कथा कहबी जे ओडिसा स्पेसिफिक ओडिसा को केमिति गोटे हम एआई कैपिटल करि परिबा मते डाकिथिले कि गवर्नमेंट ओडिसा रे जो गवर्नमेंट ओडिसा किछि दिन पूर्व गोटे एआई ट्रेनिंग स्टार्ट करथा मते टीवी माध्यम डाकिथिले दमदर भी जॉइन करते किता परे सो आमे ओडिसा को केमिति ओडिसा रे कैपिटल बहुत लोग चिंता करछन करिया पे ओडिसा रे आमे देखिबा हमर कोन यूएसपी अछि हमर शॉर्ट एनालिसिस कर देखिबा कि आमे कोनटा कले ओडिसा के क्रिटिकल मास ऑफ इकोसिस्टम टा बिल्ड करि परिबा डेफिनेटली ओडिसा वर्तमान देखिबे टेक्नोलॉजी कंपनी अनुसार बहुत बड़ बड़ कंपनी आसी ओडिसा रे खोललेनी आपण कोन डिलॉयट कोनतु आईबीएम कोनतु एसेंशियल कॉग्निजेंट समस्त आस्टन करिया पई बट सेमाते एआई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एटी करिवे की जेतेबेले मु किछि लोकन तो कथा बार्ता हेली सेमान कले रिसोर्स एक अभाव अछि सो प्रथम जिंस मु कहिबी जे हमकु जदि एंटरप्रेन्योरशिप की इट से विषय एरिया रे बिजनेस स्टार्ट करिया गति प्रथम इट क्रिटिकल मास रिसोर्स करिया पड़िबो सेति पई कोन करिया पड़िबो ना हमकु इंडस्ट्री एकेडमिया मिचिया को पड़िबो
गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होगा को पड़ो गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करबा कथि कि जो माने एआई बिजनेस करिवे कि एआई बिजनेस आनिबे कि स्टार्टअप स्टार्ट करिवे एआई बेस ऊपर करिवे से मानन को किछि टैक्स बेनिफिट हो किछि इंसेंटिव हो हम देले लोक माने आकृष्ट हे अलग जगह आसी करिवे या पे देखि जे मु विभिन्न इंस्टीट्यूट मान को जाई थी देखि जे से मानन ट्रेनिंग रे से माने एआई और एमएल पढ़ेवा स्टार्ट कलेनी बहुत भलो जिंस किछि यूनिवर्सिटी माने करथि किछि इंस्टीट्यूट माने कलेनी तांका पिला मान को आहेड ऑफ टाइम रखिया पाए किंतु केते गोटे स्टार्टअप मध्ये भी स्टार्ट कलेनी एटी एआई एमएल किछि प्रोजेक्ट करछंती किछि कंपनी करछन किंतु आकु जदी कोइ गोटे एआई कैपिटल मु एबे मते मझिरे गोटे यूरोप रे गोटे टॉक दउथली गोटे माने गोटे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होउतला सेठी गोटे सहर सेमन सेठी डाटा साइंस ऑफ एक्सपर्टाइज बिल्ट अप करछंती तो केम जेटा सेही भइया हम जे ओडिसा गोटे एआई कैपिटल चिंता करछंती रिसोर्स क्रिएट खाली भुवनेश्वर हबनी ओडिशा जेते इंजीनियरिंग कॉलेज के जेते टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अछि कॉलेज स्कूल लेवल हम पाठ पढ़ा जति हम एआई टाको गोटे लोक पिला मान मुंडे भर्ती करबा एटा गोटे फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजी कुछ हम जानि छै समझ जानछन एआई गोटे एमितिया जिंस किछि इंडस्ट्री हो सब सेक्टर एटा प्रযোज्य हो तापर एआई जेहेतु गोटे गोटे फ्यूचर समस्त एआई निर्भर होबा को जाउचंती हम जदी प्रोएक्टिव भाबा रिसोर्स क्रिएट करबा आ ताकू प्रॉपर यूटिलाइज करबा तेनु या पर इन्वेस्टमेंट दरकार इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करिवो कि प्राइवेट सेक्टर करी इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट दरकार ट्रेनिंग जो संस्था गुडिक कि जो ऑर्गेनाइजेशन गुडिक ट्रेनिंग देबे सेही विषय रे समान केमिति हमें आउल प्रोत्साहन करबा ता सहित जो मेंबर माने अछनी खाली प्लेटफॉर्म लिमिटेड न रही की मु समस्त कहबी जे आमे समस्त जदी गोटे गोटे मेंटर भैया सब लास्ट टाइम भी कहली यूनिवर्सिटी हो कि ऑर्गेनाइजेशन हो मेंटर वाला काम करबा से ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल मो ऑर्गेनाइजेशन तत्व टेक्नोलॉजी रे हम श्री संबल दामोदर बाबू के संबल के आसीबे कि हमें एआई प्रैक्टिस का बिल्ड करबू संबल इनकम मेंटर इट्स नॉट फ्री इट्स ए पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग हेले कोन हबो ना एकी इकोसिस्टम ना बिल्ड हो खाली पढ़बी तो ताको इंप्लीमेंट करिया कोठी ताको हम एही जिंस करिया को हेले हम समस्त मिल मिसे की काम करिया पड़बो एटा बड़ सेकंड जिंस होची जे हम एंटरप्रेन्योरशिप जो करिबा इंटरप्रेन्योरशिप काहे की लोक करबो से काहे की बेंगलोर करबोनी एठी हैदराबाद ओडिशा काहे की आसीबो से रिसोर्स आसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करिया कोठी गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रथम कोन से कंपनी प्राइवेट कंपनी एते इन्वेस्टमेंट करबेनी गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर तो हाई एंड कंप्यूटिंग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर करिया कोठी वी शुड हैव जेमित ऑफ ऑनलाइन करते ऑफलाइन रे भी एक नंबर ऑफ सिम्पोजियम वर्कशॉप एटी हम करिया कोठी लो अवेयरनेस ता क्रिएट हो এই যে एक्टिविटी गुटा कॉलेज जाई कि आम मान भीतर आमे गोटे 4-5 विषय में क्रिटिकल मास क्रिएट कर दे परबा और इंडिया कोन पृथ्वी रे भी आम गोटे पोजीशन क्रिएट एआई बाय पोजीशन क्रिएट कर दे परबा गवर्नमेंट ऑलरेडी गोटे स्कीम गवर्नमेंट करी कि से माने ट्रेनिंग करिया पे स्टार्ट करले एआई एमएल ट्रेनिंग से माने करतली आ इंसेंटिव किछि से माने प्लान करतन जोन देबे ट्रेनिंग तांक करितन सेति के सीमित गवर्नमेंट रे काम होला हम समस्त मिलमिशी एथि काम करिया को पड़िबो आ गोटे हला जे एआई रो यूसेज एआई रो अवेयरनेस एआई एथिक एबे गोटे आपण समझ जानते किछि लोक एडवोकेट करतन एआई ता भलो किछि गोटे एआई ता हमको लिमिटेड कर दोची कर दबो कि हमर चिंता कि हमर चिंता शक्ति ताको कमे दबो ये थिंकिंग पावर कमे दबो तो दीटा ही करती तार भी बैलेंस टीम को एआई ओडिशा गवर्नमेंट की हम सजेस्ट करबा कि ओडिशा गवर्नमेंट शुड कम विथ एआई पॉलिसी how AI to be utilized, how AI to be for समस्त कल्याण पाई एटा यूज हो यूज फॉर समथिंग एल्स सो एई जो जिंस को नै को बहुत आशावादी अछि ए कॉन्फ्रेंस जो स्पीकर माने आज कहिबे तो किंतु हमको ग्राउंड रे आसी भी काम करे जो माने ओडिशा आसुचन जो समय पृथ्वी रे अछंती ओडिशा आसुचन किछि समय देकी आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन समान त मिसिकी किछिटा समय तांकु देखा कस गला पर रिमोटली रही ता मेंटरिंग करी यदि आमे किछिटा परिवर्तन आनी परिया बहुत बड़ कथा एति की कहि मु अगेन धन्यवाद समस्त को सुजोग देइते बारू आ बहुत आशा करे एई जो हमर प्रोग्राम ता होती बहुत सक्सेस हो थैंक यू धन्यवाद श्री महांती बहुत भल कथा कहिले जे इंडस्ट्री और एकेडेमिया मिसी की मेंटर करी आगेबा को हेबो आ वर्कशॉप माध्यम रे समस्त को सचेतन कराई आगु को बढ़िबा को हेबो बहुत भल कथा कहिले धन्यवाद एबे हम संगे अछंती श्री प्रियदर्शी सडंगी प्रियदर्शी जने एआई टेक्नो फंक्शनल एक्सपर्ट और स्टार्टअप एंथुसियास्ट भी वर्तमान से एसटीपीआई रो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एमटेक रो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भाबे कार्यरत
से आज रोल ऑफ एआई एज अ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ओडिशा विषय रे कहिबे। आपन को स्वागत कर प्रियदर्शी, ओवर टू यू। जॉइन करें कि नमस्कार मैडम। नमस्कार आवाज आछी? हेलो हाँ आस्ते हाँ आस्ते आगे नमस्कार समस्त को। मु प्रथम भावितली गोटे प्रेजेंटेशन देबेली बट प्रेजेंटेशन दवा को चाहोनी। इट शुड बी ए फ्री टॉक, आराम से जब समस्त कथा हो। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को, स्पेशली अंजन भाई जहाँ को प्रथम इंट्रोड्यूस हेली बहुत लेटली ए टीम को एआई टीम को आसिली। विगत 10 वर्ष पाखापाखि हम डेटा एनालिटिक्स साइड रे काम करुचे। कॉर्पोरेट रे किछि वर्ष काम करथिले एज वेल एज हम निजर कंपनी निजर कंपनी फाउंडर थिली जो हम एआई रे सर्विसेज दोथुरु एज प्रोडक्ट बनथुरु। लास्ट प्रोडक्ट हम जो बनैथिलु गोटे बहुत बड़ा जिनिस बनैथिलु। एबे जोटा आपण देखुछे सैटेलाइट रे जो हम देखुनी फिल्म रे देखुछे सैटेलाइट रे ट्रैक करछि, नंबर ट्रैक करछि, हम ताको एग्रीकल्चर यूज करथुलु। एंड द केस स्टडी थिला मयूरभंज रे हमर मामू घर सेठी किछि जागा अछि जोटा कि एक्सेसिबल नय। हम बैंक वाला को रिक्वेस्ट करू से आगे जाई परिबनी, देखि परिबनी, एटा हे परिबनी, लोन अप्लाई करियो, अप्लाई कला 3 मास लागि पहुंचे। सो आमे कोन करलु कि आमे ताको टैगिंग करिया स्टार्ट करलु एंड ताको मैप रे गूगल मैप रे पुल अप करलु एज वेल एज सैटेलाइट रे डायरेक्ट फीड अप आमे दवा स्टार्ट करलु। एटा ट्रायल बेसिस रे आमे करथुलु सो दैट जे गोटे ये फार्मर जे रायरंगपुर रहितो जोटे भुवनेश्वर 300 किलोमीटर दूर रे से जोटे लोन अप्लाई करछ भुवनेश्वर रे गोटे कोनसे मेन ब्रांच रे से संगे संग कोन करियो ता लिंक टा पठाई दबो एंड मैनेजर देखि परिबे कि रियल टाइम सिनेरियो रे कोन होउची। तो मैनेजर के जीवा को पड़िबोनी से एठू बसी लोकेशन देखिले केमती ये चाष करूची कि चाष करूनी ठीक ठाक करूची लोन डिसबर्स करो फेज वाइज ना से फार्मर को आसे पड़ियो ना एठी बैंक मैनेजर से जीवा को पड़ियो सब जिनस हला समस्त लाभवान हला। एटा गोटे छोटो केस स्टडी हम एटा इंप्लीमेंट करथुलु आ गोटे पैंडेमिक रे करथुलु। द बेस्ट केस स्टडी जोटा मु इंप्लीमेंट करथिले हम मणिपुर रे गोटे अदा इन 2020 नवंबर रे हम ताको ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करथुलु। एवरीथिंग हम सैटेलाइट रे एआई तो कहबुन स्पेसिफिकली हमें डेटा साइंस हम यूज करथिलु। एआई कहबुन बिकॉज़ एआई से एते मॉडर्न नथला नाही हम पाखरे डेटा सेट्स थिला बट हम मशीन लर्निंग यूज करथुलु सो दैट जो चेक पॉइंट जियो लोकेशन रे क्रॉस करके जाउतला सेटा ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट जो रिटेलर शॉप जो माने बिक्री करते से माने नोटिफाइड हे जाउतले से माने तार नेक्स्ट फॉरवर्ड लोकन कहि परतले ओके एती क्वांटिटी ऑफ अदा हम पाखु इंडिया कंट्री जो मणिपुर रो आसुची हमको एई डेट रे पहुंची जिवो। एटा गोटे बेस्ट केस स्टडी हमें पैंडेमिक टाइम रे इधर यूज करथुलु। सेकंड केस स्टडी जे आपन को पचारिया के जिबे जदी जोंटा के हमें एबे गोटे वर्कआउट कर गोटे स्टार्टअप से हम काम करछे से माने ईवी व्हीकल बनाउछन्ते। ईवी रे आपन पचारियो एआई केमती यूज हो। मु गोटे लोक जे कि वर्ष गोटे दिन रे 1000 टका कमाइले मोर संसार चलिबो। मु आज जानि पालु पेट्रोल सपोज मु पेट्रोल गाड़ी चलाउछि पेट्रोल मैं भर्ती करिनी मु जाउछि मो गाड़ी रास्ता मधे पेट्रोल सरी गला और मीटर कोड खराब देखाइला मु करबी कोन। थिंक इन द केसेस एटा जदि हम ईवी को बैटरी को ए कर देलो शिफ्ट कर देलो मु चार्ज करे भूली जाइछि किमा मते अलर्ट्स आसेनी रास्ता मधे मो गाड़ी बंद गेला मजे जे लोक से तो लेई पळेबे गाड़ी को टाणी के आनो कोठी चार्जिंग स्टेशन को चार्ज कर जदि एटा इन एडवांस मते प्री इन एडवांस मते इंटिमेशन आस जो जोटे के एथर यूज करछ अपन एथर गाड़ी गोटे ईवी गाड़ी स्कूटर अछि अपन तो यूज कर सेटा एवरी वन डे से अपडेट हे जाउथो आपनकर जो रेंज रे से कंप्यूट करके जाउथो एज पर द आपनकर बैटरी कंडीशन टायर प्रेशर एज वेल एज आपनकर गाड़ी मेंटेनेंस अनुसार हम सेटा को ऑटो रे आगे ऑटो रे हम सेटा इंप्लीमेंट करिया कोरुछु एंड हां एटा टाइम लागुची डेटा कलेक्शन रे प्रॉब्लम होउची बट हां हेई आसिलानी आमे चेष्टा करछु जदी गोटे के लोकोटे तार ईवी ऑटो नउची सीए भाबिया पूर्व आमे ताको इंटीमेट करिया आरंभ करी ओके फाइन तमर बैटरी एति चार्ज छै पाखरे एठी ईवी स्टेशन अछि एठी जाओ माने ताकू तुम जाई परिबो नाही ताकू जबरदस्ती फोर्स करिया पड़ियो ताकि तार रोजगार जोटा रेवेन्यू अर्निंग स्ट्रीम रे सीए प्रॉब्लम न हुए बिकॉज़ तार रेवेन्यू पर ता फैमिली डिपेंड करछ। एटा गोटे छोटो केस स्टडी। थर्ड केस स्टडी एक्सीडेंट प्रिवेंशन जोटा के होची जोटा कि आपण जो गाड़ी जो जाउचनी बहुत जगह लोग ओवर स्पीड करछनी क्रॉस कटिंग करूछन्ते आपण जो कैमरा लागि छै सेटा प्रोजेक्ट चलछि होपफुली सेटा इंप्लीमेंट हो आरंभ हे जिवो। जो क्रॉस कटिंग करछन लोग क्रॉस कटिंग करी पळंती धरा पडंती कि गोटे कैमरा रे एट ए टाइम 5टा 6टा इमेज से ट्रैक करिया डिफिकल्ट हे जाय सेटा एबे इंप्लीमेंटेशन हो आरंभ होछि। ऑल दिस केसेस वी आर यूजिंग एआई स्टिल आमे वर्ड सिलेक्शन कि आपण एनएलपी कोन सेटा आमे मूव करना आमे केवल इमेज प्रोसेसिंग ऊपर एबे फोकस करछु बिकॉज़ हमर मोस्ट जगह होछि एग्री साइड
Apart from it, STP रे जो इंडस्ट्री 4.0 रे जो काम करछु, we are targeting the PSUs. PSUs, yes, PSUs पाखरे पैसा भलो अछि, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ କି ଆସି କିଛି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एक कोलाबोरेशन जो बाहागरटा जो हुए जो होबा दरकार सेटा टिके कष्ट हुए, स्वामी एटा कहले स्त्री माननो तो स्त्री सेटा कहले स्वामी माननो तो सेही जो जिनसटा का हम चेष्टा करछु. आई एम टॉकिंग टू मल्टीपल PSUs asking them give us some POCs proof of concept बना के दियंतु. स्टार्टअप फॉर्म को कहछु भाई देखो PSU मागुचंती 30 दिन 45 दिन भीतर तम सेटा गोटे किछि करि के दियो. एई जो जिनसटा समान आगो पछ होउचंती PSU कहछु ना कि हमें 30 दिन मन देई परियो. स्टार्टअप तो सर 3 मास आगुरटा हेई परिबोनी. सेही जो छोटो जिनसटा ताको हम जो मैनेज करे चेष्टा करछु कष्ट होउची हां के तो संभव. PSU रे बहुत जार कहछन आगे हमर कार्बन जमी जाउची, हमर अंडर वाटर जो ताकर एस्पॉन्ड अछि से एस्पॉन्ड एसिडिक एस्पॉन्ड ता भितर गोटे के गोटे ड्रोन अंडर वाटर रोवर पठेबो जेंतर इमेज प्रोसेसिंग करथबो सामने रियल टाइम से जानि परिया दरकार जे सेटा केतल फाटी जो कि केतल भांगी जो. आपण नले एवरी ईयर पढुथुवा नालकोर एस्पॉन्ड भांगला, आरएस पर एस्पॉन्ड भांगला, एटा हे गला जेसी एक जण गां वाला गां रे पसी गला सेठी चाष जमी भांगी गला. दिस आर स्मॉल केसेस न्यूज ऑल को बारे, बट से जो इकोनॉमिक जो से जो लॉसेस करे बहुत बेसी लॉसेस करे. सेही छोट छोट जिंस आपण गोटे बस सबमर्सिबल गोटे ड्रोन बनेला ता गोटे इमेज प्रोसेसिंग में सेट कर देलु छाडी देलु से चेक कला देखिला ओके एथि फाटा होइछ इमरजेंसी रेड अलर्ट दे देला संगे संग ताको गोटे किछि गोटे सॉल्यूशन दे पारले. कहार जीवन किछि किछि केसेस होछि कि हमर जल्दी गोटे केस स्टडी आस्तला हमर ताकर कॉस्टिक सोडा एस कॉस्टिक सोडा अछि सेटा बहुत एसिडिक था सेटा 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जदी हाई प्रेशर तले बाहरिबो अपन सामने हाथ भी हाथरा कणा हो जिवो. सो से जो जिंस सेठी ह्यूमन जाई परिबो सेठी रोबोट्स जीवा दरकार किमा डिजिटल ट्विन अपन कहि परंते. डिजिटल ट्विन इज एमर्जिंग टेक रो गोटे इंडस्ट्री 4.0 गोटे कांसेप्ट सेथरे भी हम एआई जगह यूज कर परिबो. बिफोर हम से जगह को न जाय कि हम से जिंसटा भी बहुत जगह यूज एटा केस स्टडी हमको रिक्वायरमेंट आसी छि हम तापर स्लोली वर्कआउट करूछु. एतिकी जिनस हम जोटा कहूँ जो इम्प्लीमेंट हम जो एमर्जिंग टेक जो हम एआई यूज करू ताकू छाड़ी के हम एजुकेशन सेक्टर रे बहुत जिनस हे करो. इवन आईआईटी भुवनेश्वर हम किछि जिनस देखु आपण माने एकना तो बहुत जिनस कहबे एजुकेशन सेक्टर जो पिला माने आजकल ऑनलाइन पढुचंदी ऑनलाइन पढिबार तार मेरिट्स डिमेरिट्स घर बसी बहुत पाठ जानि दे परछे. डिमेरिट्स मोर पोस्चर मोर आखि पर प्रेशर पडुचे मोर साइकोलॉजी पर प्रेशर पडुचे. फॉर एग्जांपल मो झियो आमे त भाबिलो हां छोट पिला मोबाइल देखला से एबीसीडी पढियो एबे से मोबाइल रे एडिक्ट हे होछि ना मोबाइल नथले से चित्कार करछि सेटा को तार हम पाखे किछि मेकानिज्म नाही. धीरे धीरे आमे त चेष्टा करछु कि मोबाइल रे छडेबो. दिस इज सो एटा ए जिंसटा गोटे किछि एआई आमे इंप्लीमेंट करिया दरकार जेमि ओके 10 मिनिट हला पर ऑटोमेटिक सीएस पिलारो बिहेवियरल पैटर्न स्टडी करके बंद करे दाओ. वी आर एक्सपेक्टिंग सेटा ऊपर गोटे स्टार्टअप काम करछन ताका हम किछि हेल्प करछु. अपार्ट फ्रॉम इट हेल्थ केयर there is a startup which गोटे अछि आयुष लेवल स्टार्टअप तार मो मेंटर थिली लास्ट 5 years ago. they are into ayurvedic treatment ayurvedic data science use करछन्ती to find out आपनकर gastrointestinal acidic pattern of खाइबा आपनकर देखुछन्ती को लोकेशन रे अछन्ती तार वेदर कंडीशन एयर कंडीशन देख चेक करछन्ती एंड आपन से लोकेशन रे कोन फूड हैबिट्स आपनकर मिलुची आपन जो फूड हैबिट्स कोन मिलुची माने सपोज फॉर एग्जांपल तुलसी पत्र और महू खाइले आपन ठंडा छाडी दियो. बालेश्वर तुलसी पत्र रो पैटर्न आ तार आपन बॉडी पर इंपैक्ट अलगा कटक रो अलगा पलंगीर रो अलगा वाइजग रो अलगा आसीओ. सो दिस इज प्रूवन मेडिकल एटा प्रूवन अछि. तो आपन को जदी एसिडिटी हेची वाइजग रे अछन्ती आ आपन को 5 तुलसी पत्र और चमचे महू खाइ देले हेजो सेम मे नॉट बी एप्लीकेबल इन बालेश्वर. So similar sage in sort of काम करूछन्ते and they science for it for ayurvedic not for allopathic. This is a beautiful case study. I used to like it in am I audible? Yes you are. मझे ब्रेक ठीक होची किंतु इट्स ओके. अब आपण फ्री जाइला बोले. आपण ऑडिबल नाहंती वर्तमान. No, we can't hear you. हमें सुनी पारुना आपन को. Priyadarshi, we can't hear you. हाँ, सी बोले तांकर किछ नेटवर्क इश्यू अछि.
Yeah, Okay. Kumarika. I think to move on. अच्छा हाँ ठीक हाँ आम जी शुणी पारे भी प्रियदर्शी मैम कथा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू थिला व्यावहारिक चैलेंज को नहीं मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करी कृषि कार्य से जियो टैगिंग कथा जणाइले तापरे ईवी फील्ड रे भी आई इम्प्लीमेंटेशन कथा जानी बहुत उत्साहित लगिला चैलेंजेस विषय भी कहले डिजिटल ट्विन उपकारिता विषय भी जानिया को पाइले हमें ओडिशा रे एआई स्टार्टअप्स मानक उद्यम कथा सुनी जाना जाउछि जे ओडिशा रे एआई रो व्यवहार विषय रे आशावादी हेबा भूल नुहे तो जदि तांग सहित आउ केबे कथा हे परिबा हमें आउरी डिस्कस करि परिबा कुमारिका he has to be one of the leading mentors for the young entrepreneurs that is निश्चय तांकर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी मु जानिया को पाइली से आगुर भी मेंटरिंग करचंती एबे हम संगे रचंती डॉक्टर सोफेन कुमार जेना डॉक्टर सोफेन जादवपुर यूनिवर्सिटी रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे पीएचडी लाभ करी यूनिवर्सिटी ऑफ लुइविल केंटकी रो पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज पर इंडस्ट्रियल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स फील्ड रे कार्यरत अछंती से आज हमको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज द बिगिनिंग विषय रे कहबा को कहिबे डॉक्टर सोफेन ओवर टू यू नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को तो मु स्क्रीन शेयर करिया चाहे किछि प्रेजेंटेशन ने तो कहबी फास्ट देखा जाउ जो स्क्रीन ने हां देखा जाउ कैन लास्ट हाँ धन्यवाद सो मु समस्त ट्रेडिशनल एआई एमएल स्टार्टअप बहुत कथा कहले मु तेतरु बाहर टिके कहबी काफी टेक्निकल फील्ड तो एआई रो यूज एबे हम स्टार्ट हे जे फील्ड किछ लास्ट 5-6 वर्ष हेलानी बट फिर भी ए फील्ड काफी रो आ डायरेक्टली इंपैक्ट करू जे इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन को केमते करिवे तो को जगह रे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यूज होची तो हां ओडिया रे तो सब जिंस कहि परिनु ओडिया बहुत खराब तो ओडिया रे कहले कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हला संगणक तरल गति विज्ञान तो मैं इंग्लिश रे किछि टेक्निकल वर्ड को रखिबी तो बेसिकली हमरो जिंस हला मैं फ्लूइड मैकेनिक्स यूज करू तो हम कल्याण पढिरा आछन दे इंडियन आर्मी रे जानि जंदी हमर एरोस्पेस हो हम फास्ट स्टार्ट हेतला एरोस्पेस हो सबमरीन हो हमर एरियल व्हीकल हो सेठू आरंभ करी हम ब्लड वेसल ह्यूमन बॉडीज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल 99% जिंसला फ्लूइड जेतले 99% जिंसला फ्लूइड हमें तार सॉल्यूशन चाहिबा जे हमें फ्लूइड केमति डिजाइन करबा जिंसटा को तो एरोप्लेन जेतले हमें डिजाइन करबा जेतले स्टार्ट हेतला 40-50 वर्ष पूर्वे कंप्यूटर यूज करके डिजाइन करबा सही कंपनी बोइंग एरोस्पेस में बहुत टाइम स्पेंड करतले तार विंग ऑप्टिमाइजेशन द इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऊपर तो जिनसोडा सॉल्व करा जाए तीन प्रकार प्रोसेस थाए गोटेला एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनामिक्स बहुत बड़ विंड टनल करा जाए एरोप्लेन मॉडल तैयारी करा जाए ता भीतर विंड टनल ले टेस्ट करा जाए जोटा कि काफी एक्सपेंसिव हुए मास भी केते एक्सपेंसिव सेकंड वाला थ्योरेटिकल फ्लूइड डायनामिक्स जोटा एनालिटिकल सॉल्यूशन किछि करा जाए मैथमेटिकल इक्वेशन नो एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करेनी क्लोज फॉर्म इक्वेशन नो मास भी ता नेक्स्ट स्लाइड ता आपको थर्ड है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जोटी मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूज करके प्रॉब्लम उडा को वर्चुअल दुनिया सॉल्व करा जाए और तार देखा जाए जे विंग रो केते शेप रहइबो कोठी केते प्रेशर रहउची ड्रैग केते लिफ्ट केते तो एउडा हमें कैलकुलेट करि परिबा तो बेसिकली तार एप्लीकेशन कोठी हमें करि परिबा तो एरोस्पेस पहली त पूरा फ्लाइट जाउची केतळे शॉक वेव जनरेट होउची केते प्रेशर होउची केते टेंपरेचर होउची केते ड्रैग लिफ्ट कैलकुलेशन अब फ्लाइट रो इंजन टरबाइन यूज करि परिबा हमरा हीटिंग एयर कंडीशन वेंटिलेटर एचवीएक सिस्टम घरे ऑटोमोटिव रे करि परिबा केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करि परिबा हमर इंजन आईसी इंजन कंबशन साइकिल ले करि परिबा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हमर मोबाइल टू ने के लैपटॉप हमर डाटा सेंटर तार कूलिंग केमथि हबो करि परिबा मॉडर्न डे जोटरी मु काम करूतली यूनाइटेड स्टेट्स रे बायोमेकानिक्स रे ह्यूमन बॉडी भीतर मु तो हार्ट रे काम करूतली तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड जो फास्ट मो ग्रुप काम करता माने आर्टिफिशियल लंग्स रे काम करूतले ता ऊपर भी काम करतले गोटे लंग्स टा को जदी खेलै दिया जाए गोटे हमर कलिंग स्टेडियम साइज रो से टिश्यू गुडा शेप आसी जीवो सेतिके एरिया से माने कवर करिवे तो एठी हम जो कॉस्ट रा कथा कहउतले गोटे कॉस्ट कंपैरेटिव देबी गोटे
गोटे आवर जदि हम फ्लाइट टेस्ट करबा खाली एक्सपेरिमेंटली अराउंड $100K आसुची जोटी हम जदि गोटे आवर फुल लोड पीक कंडीशन में सीएफडी करबा 100K 1K रे आसी जीवो कंपेयर टू 100K एक्सपेंसिवनेस एक्सपेरिमेंट वर्ष 1K अराउंड आसीबो पीक आवर जोटी कि बहुत सारा बड़ सुपर कंप्यूटर बहुत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सब यूज हो आ काफी जिंस हम एक्सपेरिमेंट रो पाई परिबानी माने एक्सपेरिमेंटली बहुत चैलेंजिंग है से जिंस हम पाई परिबा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स रो तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स बैकग्राउंड कोन मैथमेटिक्स बाकी किछि जिबा को चाहुनी तो जो हमर नवम श्रेणी पढुतले न्यूटन को नियम F = ma से सरल इक्वेशन ता जतो हम फ्लूइड पे आसुची ए नाभियर-स्टोक्स इक्वेशन हे जाउची सेटा तो एटा ऑलमोस्ट 150-200 वर्ष इक्वेशन हेलानी आज पर्यंत भी तार किछि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूनी आ क्ले मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट आज भी $1 million प्राइस अचन जदि के तार सॉल्यूशन करूचन बट फॉर्चूनेटली एग्जिस्ट करूनी सेति पे हम कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म को जिबा तो कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म हेले माने ट्रेडिशनल एआई आपनकर आज बहुत एप्लीकेबल होची बा कॉमन सेक्टर रे आपन यूज करि परचन स्टार्टअप टू नै आपनकर लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर्यंत गोटे बट कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स बैरियर अछि कारण एठी बोथ सॉफ्टवेयर और तार यूज होतो हार्डवेयर काफी एक्सपेंसिव होउछन तो एसपीसी हमें आज देखिबा जे जतले लॉस एल्यूमिनस लैब रे 1965 रे प्रथम स्टार्ट करथले 3 मेगा फ्लॉप रे तो आज ही हमें पहुंच गले 1.2 एग्जा फ्लॉप रे पहुंच गले और सॉफ्टवेयर गुडा भी काफी पैरेलल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर गुडा डेवलप होची सी फॉरट्रान सी++ आज भी कोडिंग होची पैरेलल एनवायरनमेंट रे कुडा प्रोग्रामिंग भी जीपीयू आसिलानी तो काफी ये चली तो वो आसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को जोटा हमें मु काम करथिले 8-10 वर्ष पूर्व यूनाइटेड स्टेट्स जेतले नॉर्मली हमर हार्ट टोटली मनुष्यर फेल ही जाउची हम कहूनी जे भाल्व बाय किछि भाल्व तो रिपेयर होची तो टोटली हार्ट फेल ही जाउची सेतबेले आईडिया थला हम आर्टिफिशियल हार्ट तयारी करबा आपण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा कहउछन हम आर्टिफिशियल हार्ट तयारी करथि जोटा कि प्रोडक्ट फॉर्म में थिला मो पाखरे तो से आर्टिफिशियल हार्ट रे कोन गोटे इटा गोटे माइक्रो मोटर टे जोटा सर्जरी करी कि हम हार्ट रे फिटिंग करूथलु आ थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से ताको हम रोटेट करूथला आ से कीप ऑन जंती अपन हार्ट नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होची तो सेटा टोटली निजर एबिलिटी लूज करूची एता को फ्लो रिसर्कुलेट करूथला बट जिंस हला जे तळे ए जो जिंस हार्ट भीतर होतला गोटे आर्टिफिशियल डिवाइस लागला पर का ब्लड डैमेज होतला हेमोलिसिस ब्लड क्लॉट बहुत सारा रिस्क आसुथला आ ए सब जिंस एक्सपेरिमेंटली देखिबा बहुत एक्सपेंसिव थिला गोटे लीटर ऑफ ब्लड आनिबा एक्सपेरिमेंट 10 मिनिट भीतर करबा ना ब्लड क्लॉट ऑफ प्रॉपर्टी आसु काफी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट बहुत जिंस जणा पड़ेनी सेतबेले मु आ गोटे टीम थिला जने प्रोफेसर सर्जन थिले हमें सेतबेले ए जिंसटा कंप्यूटेशनल एनालिसिस करथिलु डिवाइस रो ऑप्टिमाइजेशन करथिलु डिवाइस रो साइज शेप केते रहइबो ब्लड केमिति मिनिमाइज हो डैमेज रे तापर काम करथिलु एंड इवेंचुअली ताको एफडीए अप्रूवल करथिला आज दिन रे ऑलमोस्ट से $4.99 बिलियन यूएस रे व्यापार करूचंती से माने बिजनेस हेई सेलानी तो अराउंड 2028 बेल को 15% इंक्रीमेंट हबो एबे $1.98 बिलियन रे अछि 28 बेल को $5 बिलियन रे पहुंच जिबे तो एटा गोटे एग्जांपल में आउ किछ आसीबी वीडियो को माने कथा छडा आउ किछ बहुत भी काम करी जो एग्जैक्टली हम देखेबी देखाउ छ स्क्रीन नेबे आज्ञा देखो देखो हां हां तो एटा गोटे मु थिली वालपुल कंपनी रे तो अमेरिकन कंपनी से बनाए होम अप्लायंस तो चैलेंज थला जे एक्सीडेंटली अपन वाशिंग मशीन हो बा यो तापर जदी पानी पड़ी जाउ ता भीतर काफी सेंसर आईओटी डिवाइस होची से नष्ट करि पारुची ता भीतर को जाई के केते अमाउंट वाटर जाउची तो हमें एक्चुअली मशीन थोई कि तापर पक्केबा टेस्ट करबा काफी डिफरेंट हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट रे करथिल जब एक्सीडेंटल जे वाटर पडुची से जाउची ना नाही जो डिजाइन हेइथला आपण देखि परथुए पानी पडुची जाउ नाही भीतर को हमें काफी माने कंप्यूटेशनल जब प्रेडिक्ट करथुल केते अमाउंट रो जाउची तापरे कैटरेज डिजाइन अपन को जो वाशिंग मशीन भीतर पानी आसिला परे डिटरजेंट संग केमिति मिक्स होची केते इफेक्टिवली वॉश करूची से सब जिंस करिथुल ता छडा भी बहुत बाकी जिंस जेमति इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग अपन को काफी इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस सिस्टम रे हाई टेंपरेचर
होउची कोठी ताको केमते हम इफेक्टिवली कूल करबा आपन को पीसी मदरबोर्ड सेट प्रोसेसर जते टेंपरेचर होउची ताको केमते हम डाटा सेंटर रे कूलिंग करूचे इंडिविजुअल ये करूचे सेडा हम काफी जिंस इलेक्ट्रॉनिकली करितलो आ गुडा जिंस भी करि जोटा कि नेशनल सिक्युरिटी बा ये सहित जडित जोटा कि मु पब्लिक देखै पारुनी आ गोटे रिसेंटली एबे जिंस देखे जोटा काफी इंटरेस्टिंग हबो सेटा एबे रिसेंटली करिछु जोटा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम हेची सेठी वर्तमान गवर्नमेंट प्लान करिछि जे गोटे टर्बाइन सेटअप करिया पई तो तार कंसल्टेंसी वर्क मते आसीतला जे टोटली पेनस्टॉक केमिति पानी जाउची एटा तार जस्ट रिसेंटली तार कंसल्टेंसी मु करिछि सरदार सरोवर डैम गुजरात पई गुजरात गवर्नमेंट पई तो सामने टर्बाइन सेटअप करिवे तो पेनस्टॉक बा टर्बाइन ने बनेवा पूर्वरु टेंडर ये करिया पूर्वरु तो से माने चाहुतले वर्चुअली जे केमति काम करछि देखिया पई जोटा कि रिसेंटली शेष करिथिली जिनस तो वर्तमान गोटे जिनस हला जे एआई रा यूज कोठ आसुची जेतेबेले जिनसटा काफी एक्सपेंसिव होची कंप्यूटेशनली करिवा मास मास लागुची एचपीसी रे करिया पई तो आइडिया होची जे वर्तमान एआई को कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से मिक्स करा जाउची जेति के अमाउंट रा माने डाटा जनरेट करूछु बाकी एआई को यूज करके हमें मिनिमाइज करछु डाटा जनरेशन और प्रेडिक्शन को हमें मैक्सिमाइज करछु सपोज मते फुल लोड कंडीशन और हाफ लोड कंडीशन ने मते कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स करी आ जन पचाइबे 75% लोड कंडीशन ने मोर कोन होबो केते प्रेशर डेवलप होबो केते वेलोसिटी आसीबो तो सही कंडीशन पई हमें रादर देन गोइंग फॉर एचपीसी कंप्यूटेशन हमें एआई की इनकॉर्पोरेट करूछु एक्जिस्टिंग सीएफडी डाटा सहित प्रेडिक्शन पई तो गोटे काफी नुवा ब्रांच स्वीडन स्टॉकहोल्म रे बेल्जियम रे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी रे काम चलची गुडा जगह रे एबे काफी डेवलपिंग फेज रे अछि नॉट की एक्सेसिबल होची बट फर्स्ट बैरियर हला जे कॉस्ट जेति की हमरो एचपीसी बा लाइसेंस जेति की लागुची एटा काफी ये होची सेति पई हमें ट्राई करूछु काफी डेमोक्रेटाइजेशन पई काफी ओपन सोर्स ये पई तो एवडा आसुची तो हमर इंडिया रे भी काफी ट्राई हेची लास्ट डेवलपमेंट पई बट फेल्योर कोठी ना कोठी हेची हमर जतबेले पोखरांग टेस्ट परे हमर अमेरिका जतबेले सैंक्शन लइतला बार्क ऊपर से माने कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर कोन से अमेरिका प्रोडक्ट यूज कर पन कारण सिमुलेशन प्रोडक्ट रे अमेरिका मार्केट ही लीड करतला तो से माने अराउंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन 100 कोटी 150 कोटी इंडिया रे स्पेंड करितले निजर इंडिजिनियस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पई अनुप्रभा थिला से सॉफ्टवेयर ना बदे 2014 पर डेवलप करले बट सेटा सेति की फलप्रद हेलानी यूज हेनी एबे भी हमें यूके और यूएस मार्केट द्वारा डेवलप काफी सॉफ्टवेयर डेवलप करूचे आंसिस साइमेंस स्टार सिस्टम वाला प्लस एबे भी गुडाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आसुची तो काफी फ्यूचर ब्राइट अछि तो होपफुली धीरे धीरे बड़ा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री आसीबो तांकर जति की रिक्वायरमेंट ताको फुलफिल करिवो तो बस एति की कहबी अब बोधे हमें पहुंच गेलन टाइम रा गोटे मिनिट खंडे टाइम रहिला किछि किछि क्वेश्चन थिबो नबा तापरे एंड करू सेशन को धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर सोफेन आपण सीएफडी और एआई रो जो लिंक कथा कहिले प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कांसेप्ट करी कि केमिति कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करी हबो से जानी कि भल लागिला आशा करूची ए फील्ड समस्त को टिके सचेतन कराई आगु को पिला माने भी आगु को इंटरेस्टेड हेबे एबे मो हैंड ओवर करबी अनुराग को से मो पर नेक्स्ट मॉडरेशन करिवे आपण समस्त संगे रे कथा है कि बहुत भल लागिला धन्यवाद समस्त को जय जगन्नाथ एवं वंदे उत्कल जननी तो अंजन सर दामोदर सर एवं सबु आम कम्युनिटी मेंबर मन को धन्यवाद देवी जे मते अपॉर्चुनिटी देले एठारे मॉडरेट करिया पे आउ जेते बेले भी पृथ्वी रे कोनोसी ग्रोथ हुए आम मनीष जीवन रो एटा गोटे हिस्ट्री रो गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट पार्ट की आमे सब बेले ग्रोथ रो विम्स एंड फैंसीज रे एते आगु को पळे जाऊ कि किछि वर्ग सब बेले पछरे रहि जंती तो एई हिस्ट्री रो बार बार सिखी कि आज जेते बेले आमे जो एआई एमएल रो जुगो को आसी गले हुए तो एई ठारे आमे से भूलटा न करिबा एवं जेमती आदित्य सर कहिथिले कि आमे एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ ऊपर बहुत आरंभ रु ही तापे प्लानिंग करिबा
तो एई प्रति किपरि नजर दे हबो ता पई आज रो जो हमर थीम ओडियाज इन मशीन लर्निंग कॉन्फ्रेंस रो एटा हुए तो गोटे प्रथम बटरफ्लाई इफेक्ट सृष्टि करिवो जोटा आगु जाइथिबा सबु एआईएमएल प्रैक्टिशनर मानको मनरे गोटे हृदय स्पंदन सृष्टि करिवो। तो प्रथमे आमे गोटे पैनल डिस्कशन टे करिबा जो पैनल डिस्कशन रो मेन उद्देश्य होची कि लैंग्वेज disabled personalities and economically backward people केमिति AIML द्वारा पछै जिवे नै एवं हमर जो ग्रोथ टा हबो सेमान को इंक्लूसिव रखि की ग्रोथ टा करि हबो। तो ए पई मोर हमर पैनलिस्ट मन को एठारे इनवाइट करिया को चाहिबी। मो पैनलिस्ट माने हेले आशीष सामल भाईना, अनिश महापात्र and जोशित मोहंती। So first of all I would like to invite Ashish Samal Bhaina, who would first introduce us to the need of inclusive growth when it comes to Indian languages. Ashish Bhaina, please. Yeah. धन्यवाद अनुराग। नमस्कार समस्त को आज सुजोग मिली समस्त को धन्यवाद जनाऊँ। सो या अनुराग जमिति मेंशन कले कि इंक्लूसिवनेस एंड मोर टॉपिक रही हो कि केमिति हमें लैंग्वेज की भाषार प्रयोग करी केमिति हमें इंक्लूसिविटी को बढ़ाइबा। सो किछि स्लाइड्स मु प्रिपेयर करिछि जोटा कि मु शेयर करिवि सो दैट हम माने इजीली कैप्चर कर परिबा। शेयर कर परछंती मत एक्सेस मिलिनी। अनुराग आपण शेयर करि परिबे कि? अभिजीत मु स्क्रीन शेयर कर दूं सर। एक्सेस दी होबो कि? अभिजीत एड मु एक्सेस दो जेबा। एबे चेक कले आशीष अभिजीत देला कि? नहीं मते वर्तमान जे आसीनी। राइट माउथ रे रोज यदि मॉडरेटर भी शेयर कर परिबे देन एबे अपन एक्सेस जाइते आशीष भाई। नहीं ठीक अछि भाई ताले मु शेयर करछि। अभिजीत अनुराग की अब के जने शेयर कर परिबे कि? हां मु शेयर कर दो छी। ओके हाँ तो आशा करछि समस्त स्क्रीन देखि पाछबे। आसुछि ठीक है धन्यवाद अनुराग। ओके हाँ हमें सो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। सो आज विषय जमती रहबो इंक्लूसिवनेस। सो इंग्लिश और ओडिया मिसई की कहबा को चेष्टा करिवि। सो इंक्लूसिवनेस बाय डेफिनेशन itself means giving or providing equal access to both opportunities and resources available for the people who might have missed it or might be excluded intentionally or unintentionally. It could be both.
सो वर्तमान जेहेतु आम डिजिटल इरार कथबार्ता करूछंती तेणु सबुठ बड़ रिसोर्स अवेलेबिलिटी रोची वर्तमान इंटरनेट पाखरे एंड इंटरनेट इज द मोस्ट important resources available in current time. So there are two things we have to keep in mind. आम पाखरे इंटरनेट समस्त को इक्वली एक्सेसिबल रोची कि सेटा मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर साइड आसीबो एंड सिमिलरली जदि भी एक्सेसिबल रोची आमे ताको कंज्यूम इक्वली करि पारछु कि जेमिति कि ता माने जणे जेमिति इंग्लिश रे इंटरनेट रे कंटेंट एक्सेस करि पारछि मु जदि ओडिया रे चाहिबी मते सेही कंटेंट की सिमिलर क्वालिटी रो कंटेंट मिलि पारिबो कि नाही. सो दैट इज ए बिग क्वेश्चन मार्क वर्तमान समय. आमे यदि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा ना परवर्ती स्लाइड रे मु देखिया को चाहिबी लैंग्वेज रो केमिति गोटे इंपोर्टेंट रोल रहूची in driving the inclusiveness in the society in both digitally and physically if we consider. Now if we say this data collected recently in January 2023 जोथि कि across globe what is the statistics of the websites in different languages. जदि हमें सही देखिबा English approximately 60% 60% कंटेंट वेबसाइट रहउची इंग्लिश रे और बाकी इफ अपन जे तळ को देखि जिवे इंडियन लैंग्वेजेस रो गोटिए भी कंटेंट सेठी रहउनी एंड ओडिया जेहेतु गोटे हमें कंसीडर करो लो रिसोर्स लैंग्वेज तार स्थान बहुत तळे रहिबो. तो एटा गोटे बड़ चैलेंज रहउची टू क्रिएट इंक्लूसिविटी इन इंटरनेट. सो या द्वारा कोन होची कि सब लैंग्वेज मानो को इक्वली अपॉर्चुनिटी के रिप्रेजेंटेशन मिलुनी इंटरनेट रे जहा द्वारा कि दैट इज ए फास्ट लेवल बैरियर व्हाट इज क्रिएटिंग इन द एक्सेसिंग द इंटरनेट और कंज्यूमिंग द इंटरनेट. आमे जदि नेक्स्ट स्लाइड को जिबा या नाउ आमे वर्तमान आमे कथाता कले डिजिटल वर्ल्ड ऊपर. लेट्स से we'll come to the other side of the world, that is the physical world. So ei jo picture depict karuchi ki physical world रे केमिति हमर representation रोच, what is the spoken language proportion in the world or across the globe. Now सेठी जदि हमें देखिबा हिंदी बेंगली जदि ओडिया रा स्थान नाही टॉप ए जो डेटा सेट अछि किंतु सेथिरे हिंदी बेंगली एंड चाइनीज स्पेनिश देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेस व्हिच टेक टॉप 5 पोजीशंस. तो इंग्लिश रो स्थान तृतीय रहउची किंतु आमे जदि इंटरनेट रे डेटा विषय रे देखिबा सेठी इंग्लिश रो स्थान पूरा 1 रे रहउची एवं 60% डेटा ऑलमोस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश. नाउ जदि तळ पोर्शन ने आमे देखिबा लैंग्वेज डोमिनेटिंग द इंटरनेट जोथि के ऑलमोस्ट आमे डिसाइड करथिलो 58% और 60% अराउंड रहउची कि इंग्लिश रे. सो एई जो गैप रहउची आ द्वारा कोन होउची कि इक्वली एक्सेस टू डिफरेंट रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि करूची एंड सेही चैलेंज को नैरो डाउन बा सेही डिवाइड को नैरो डाउन करिया को हेले हमकु डिजिटल से जो डिवाइड को नैरो करिया को हेले हमकु इंटरनेट रे लैंग्वेज रो रिप्रेजेंटेशन और बढ़ेबा को पड़ियो. नेक्स्ट स्लाइड को रख दिबा. नाउ सिंस हम माने कथार्ता होचो कि एआई एमएल ऊपर एंड हाउ लैंग्वेज इज प्लेइंग एन इंपोर्टेंट रोल इन एआई एमएल. सो हमें समस्त भलो भाबे जानिचो कि for any AI ML system, data is the first and most important component. And without data, there is no way AI ML systems can be, developed or performed to one in an optimal manner. Now, सही विषय जदि कथा बा आमे देखिले इंटरनेट रे लैंग्वेज रो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन केमिति रहउची एंड वर्तमान पई जदि आमे इंग्लिश को एक्सक्लूड करिबा किंबा अन्य दुई तीन लैंग्वेज को एक्सक्लूड करिबा मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस significantly due to the lack of quality as well as quantity data in internet. तो ता द्वारा कोन हबो तारो कंटीन्यूअस इफेक्ट आमे देखिबा जेते बेले आमे किछि भी एआई एमएल बेस्ड एल्गोरिथम किंबा मॉडल डिजाइन की डेवलप करिबा ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी डेटा आमे संपूर्ण भाबरे बा गोटे ऑप्टिमल सॉल्यूशन डेवलप करिया को बहुत challenges सृष्टि हबो. नाउ हमरो फोकस कोन रहिबा दरकार हमरो आवर फोकस शुड बी मोर ऑन द लैंग्वेज स्पेसिफिक डेटा क्रिएशन data consumption as well as what we create and consume. We also need to contribute back so that others can also get access to that and use in different ways. Similarly आम पाखरे जो एल्गोरिथम बनौचंती किंबा मॉडल्स भी डेवलप करूचंती इन डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बी इट टेक्स्ट और स्पीच, they need to have a certain specific approach
to a specific language. So our algorithms and models should not be designed in an English first approach when we consider any other language. So prati language ro characteristics and behavior different. So those nuances हमको contribute करिया पड़ियो design जेते बेला हमें किछि भी algorithm model design करू. So next slide जिबा हमरा. Yeah. So with this I will move more talk to conclude करिबी. So आमे जदि inclusiveness किंबा digital inclusiveness उपरे कथार्ता करिबा कि सही डायरेक्शन ने काम करिया चाहउचंती तेनु हमकु इंटरनेट रे लैंग्वेज इक्वालिटी को आनिया को प्रॉपर फोकस करिया को पड़िबो एवं ता पई एफर्ट भी दबाउ पड़िबो. सो विथ दिस मोर टॉक को शेष करूती. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई ने. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट जोशित मोहंती से हमको टाउन प्लानिंग स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट से क्षेत्र रे केमिति एआई रो इन्वॉल्वमेंट होची एवं ताकू हमें केमिति गोटे इंक्लूसिव मैनर रे करि परिबा ताकू नै कि से हमको अवगत करिबे. जोशित प्लीज. जोशित आपण म्यूट रे छ. अनम्यूट योरसेल्फ. जोशित आपण म्यूट रे छ. जोशित अनम्यूट करंतु. Hello. Yeah. Subhaji. Yeah. Thank you, Anurag. Thank you, everyone. ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି on the topic digital twins for inclusive smart societies. ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର जो ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ जो डिफरेंस ରହୁଛି ଆମର ସଫ୍ଟୱେयर वर्ल्ड ଆଉ ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱେयर वर्ल्ड ଦ ଫିଜିକାଲ वर्ल्ड ଭିତରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଜଏନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, especially in the given days जोठी आज AI has taken over the world as its stone. The software world has exceeded the established societal norms in terms of capability and potential in the future. So it's high time कि एबे हमें सही software और hardware world को join करिबा using digital twins for a better inclusive society, so that nobody feel like they're left out or their needs and necessities are left out without being considered. So आज हमें कथा आबा का विषय रे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स कौन चलछि and why we need digital twin. Digital twin कौन, define it, why digital twins now, एबे हमें कोठे अछु, and how does that impact India and Odisha right now. Going ahead, Gartner got a border consulting firm which has devised these emerging technologies starting from 2018 and onwards. जेमती ग्राफ रे देखि परियो तो important technological revolution रे ସେମାନେ present करजन intelligent systems, digital systems, autonomous systems, privacy and security. These are some critical things जोटा कि Gartner present करि जानती. Similarly, companies like BCG and McKinsey also has presented the similar graphs. So ethiru these are all fragmented models and there are startups जो मैंने ये ऊपर particularly product launch करा. Digital twin enables us to actually tie the threads across all these technologies. गोटे comprehensive platform बनी परिबो using digital twin. So digital twin कौन? आज हमें हम 4 वर्ष द फिजिकल वर्ल्ड देखुछु, द सोसाइटी देखुछु. भुवनेश्वर आज स्मार्ट सिटी हिची, काफी रिनॉन स्मार्ट सिटी हिच पारची इन द ग्लोब. तो बहुत सारे सेंसर्स डेटा 5G टावर्स भुवनेश्वर रे लागि छै. सेही सोर्स डेटा सो कंज्यूम आसु छै गोटे थ्रेड रे गोटे प्लेटफॉर्म रे स्टिच हे परन. जेतले स्टिच हबो तो गोटे डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल सोसाइटी हमें बनै परिबो. And once सेटा ही सला हम पाखरे बहुत सारा डेटा आसीओ टू एनालाइज इट इन द रियल टाइम. बट एथिरे हमें किछि जिंस छाडी दउछु जेमति कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस, चेंजिंग लॉस एंड स्पेशली चेंजिंग पीपल माइंडसेट. डेली नुआ लोक आसन भुवनेश्वर को पुराना लोक सिखु जंती नुआ हिसाब रे रहिबा पे. तो एई सो सोसाइटल चेंजेस हमें जनरली कंसीडर करूनु
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ବା ସଫ୍ଟୱେର ଡିଜାଇନ କରୁଛୁ, but digital twin will enable this by understanding how people behave in the real world. So ଗୋଟେ difference କଣ ଆଜିର ଗୋଟେ software design digital world ଆଉ ଗୋଟେ digital twin ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ small example on the ISO standards. जो देखिए आपण जो sensors ଲାଗିଛି ଆମର around our ଘର society, that is the software world, digital world, data procurement ହଉଛି. But ଯେତେବେଳେ ସେ analysis and feedback loop ଟା complete ହଉଛି, that becomes the digital twin. Software world real time feedback टा miss ଥାଏ. ଯେମିତି କହିଲି ତ digital twin ର life cycle କଣ, starting from conceptualization, ଗୋଟେ smart city କେମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେଥିରୁ CAD modeling ରୁ data procurement ରୁ its operation and retirement ହେଲା ପରେ safe disposal କେମିତି କରାହେବ ସେ system, so ତାକି ଆମେ ନୂଆ system କୁ upgrade କରିପାରିବୁ. এই entire ଜିନିଷକୁ visualize କରିକିରି and actual implementation ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିନିଷର lifetime କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ the cost estimate କରିବାର possibility ଦଉଛି ଆମକୁ digital twin. So current approach जो देखिले, एठी हमें दीटा approach विषय कथा हबो. One is data driven approach, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି knowledge approach. तो एथरे आपण जेमति देखि परिबे, limited failure mechanism रहउची, understanding रहउची, large data set run करिवा को importance अछि हमर digital twin रे. सेमति किछि अन्य किछि जिंस म एठी प्रेजेंट करिछि, जोडा कि important to understand. But what I'm suggesting is between knowledge and data driven approach हम गोटे hybrid approach नबा को पड़िबो. Knowledge where हमको understand करिया को पड़िबो society केमति change होची, policies regulation केमति change होची. Data set where जो कि IoT sensors लगी छै, से sensors data collect करिके केमति processing होची. So these together will complete the feedback loop. So what are the advantages of digital twins today? First, so left side अपन देखि परिबे, digital twin अछि केमति, कोठी अछि. Actually कोठी भी नहीं, it is a combination of everything, the sensors, digital data and the hardware world. So adara kon habo, increased monitoring, reduce time to the market, keeping optimal operation, reducing energy efficiency, reducing the maintenance cost, and the most important thing, keep up with the society, keep up with technology, and keep up with the changes, because life is all about changes and society is all about changes. हमें value केमती create करू छे. So as all we know कि हमें AI world को जाऊ छे बे, the industry 4.0 automation रो beyond एबे आसु छे. वर्तमान software पाखरे decision making capability आसु छे, like similar to little bit of humans capability. सेथिरे digital twin will not take its own decision, but it will reduce the cognitive load on the humans in order to understand कि complexity आसु छे कोठे, data processing करा है परिबो कोठे. Reduce it again. It reduce lot of things, especially increase efficiency and reduce the cost before actually implementing a change. And I think that saves life, people, resources, everything, and we need that. Where it can impact India right now. So, our society बहुत change होची, India जो population अच्छा ने सामान्य rapidly grow कोचंदी, and honorable Prime Minister Narendra Modi जो vision रखिचंदी India रा for make in India, to grow in India, the semiconductor industry करूची, the software industry grow करूची. Keeping that in mind, I think it can impact India in three major areas. One is the smart city and urban planning, the transportation and infrastructure development, and the small medium businesses. Entrepreneurship, both India and Odisha has gone leaps ahead of the generation today, and I think digital twin is giving a platform to step up their innovation. Why Odisha needs digital twin now? It is necessary because of, as I said, the startups growing up. Odisha will become the top 3 startup ecosystems by 2025. So these are important to unlock sectors like aerospace and space within Odisha. Possible applications both are actually aerospace to start kari, health tech. I just focused on one of the things, that is urban planning, and these applications are a possibility without any restriction. Thank you all, and I'm open to question. Another, thank you for this platform. Thank you, Joshit. Anish, please bring forth your views. Thank you so much. Namaskar. Thank you, Anurag. You are able to share the screen?
Yes, I'm able to share my screen. Yeah. Thanks for confirmation. Damodar sir, Sahu sir, thank you so much for the opportunity. Today, I'd like to present ethics in AI for inclusive bias mitigation. It sounds very fancy, but essentially, as AI has gone from theory and has been brought up into the real world as something that is affecting us every day, how can we be more inclusive to remove the bias that is there, not just in our decisions made from before, but also the data that we have? The quick agenda I'm going to cover today is a little bit of introduction to explain what is bias in machine learning models. Having made multiple machine learning models and currently working on multiple LLMs for Fortune 200 companies, I do have exposure where I am able to see the bias and how it's playing a part in the answers that are coming out of AI. We'll go over what is bias in AI. We'll go over the source and the impact of bias, and we'll look at a few case studies. And of course, finally, we'll also see how can we mitigate bias. As we build out these complex systems to which we have no understanding that are going to drive our world, how are we trying to mitigate the mistakes that we've made from before? What are the sections of people it's affecting? And in the end, how can AI be used for inclusiveness? This is the main agenda that we're going to work with today. So to start off with, what is bias in AI and what is the design in the way it works? So it's a four-pronged process where initially whatever happens is in the world, what is happening right now, which in turn is reflected in the data, which in turn shows how we design systems and how it works. And from there, when we go to usage, it's a feedback loop where based on the decisions that we've made before, whether for minorities, whether for people who have been left out, how does that play into the larger picture? This can cover different parts, which go into the bias in terms of employment, bias in terms of discrimination, which have been done against the lower strata of society, minority communities, and also in terms of applications. Now, to understand this, we need to understand what are the types of biases that we have and what are the sources that we have. So this can come in terms of unequal access to resource and applications, which come in the world. There's discrimination, which is a huge part, not just in imaging, not just in audio, not just in healthcare, but in every single strata of society that exists. So within this, we also want to take care of how is governance being done? Who is making these decisions? How does AI decide that this is a decision to be made? Is it made by an expert, someone who is biased already towards a certain sector, or a subject matter experts, whether from minority communities or people of different color, people of different races? How do we come to the right answer, which is a difficult question to answer? So to understand what are the sources and impact of the different kind of bias that we have. Societal bias. What are we doing in society right now that's changing? What are the algorithms that already exist? Why are certain roads in Google Maps always crowded? Why is that the only road to be taken? Right. Similarly, in terms of aggregation, we also have cognitive bias. As human beings, the way that we've grown up decides and drives the way that we make decisions. So what is the right decision? Who is the right person to be able to give us these directions? So that is the basic source, and that's how we want to take care of it. Now, all of this is in theory. How do you understand what is happening in the real world? For this, I've cited 4 research papers, some from the University of Columbia, some have been verified by Springer, but I'm going to go through 4 examples quickly. Number 1, the criminal justice system in the US has a setup where a company called Northpoint has set up an entire implementation where it decides who is going to be a bad person once they leave the system. And based on this, the number of years that they're going to be in jail or the perks that they're going to get is decided. This has been biased towards people of color. Second, we can look at Amazon's recruiting software, which historically is based on the data that Amazon has. And the data suggests that Amazon is biased against women. So, which means the model that we build is obviously going to be biased towards women or other categories which have been seen historically. Similarly, if you look at credit scoring systems, which is very interesting, which is what our lives are based on in other countries across the world, even your rent, even the place you get to stay, your livelihood is based on your credit score. Even this system is biased where it has a strong bias towards minority groups and women. And finally, we have facial recognition software. The people of different color are biased against the system. Even with Digiyatra being implemented, is the rate of identification and the way that we understand expressions the same? Because now, similar to how China has implemented multiple systems, in India, we see face recognition get a lot of
drive, even when you're driving a car and such. So how are we building systems, keeping the bias that AI has in mind? Finally, I'd like to talk about how are we going to mitigate bias, where number one, fairness metrics. When we build out a system, we want to ensure that we have fairness metrics. We want to make sure the algorithm has fairness. One very, very important thing is called XAI, which is explainable AI. That is the way we understand what is not just the input and output, what is actually happening in the system. And this is what we keep working on. And finally, we need to make sure that we have diverse and inclusive teams. And finally, these are some of the tools as to how we can do it. A lot of them are open source. I would implore you to go and explore them. Thank you so much for the opportunity. Thank you, Anurag. That's my time. It was great to have you guys on this platform, and it was also awesome that we all could have such different aspects discussed with regards to inclusivity for AI. So really thanks to all, and hope we can take questions later on in the session, because of lack of time, currently we'll proceed next. So next, I would like to invite Balaram to start off with his presentation and enlighten us. So just I'll try to give a short intro about Balaram Bhaina. So Bhaina is operating from Auckland, and he is an experienced AI professional who has been working in the industry since a decade now and has worked across all the layers of AI. So rest, Bhaina is himself the guy to go for all of this. So Bhaina, please carry on. Thank you, Anurag, for such a nice introduction. Namaskar, Jai Jagannath Samastanku. It's a great honor to be part of this whole community, and it's my privilege to talk about my experience. When I came with this request, to share something, and I thought, okay, what's the thing I can share from my experience, which can overlap what I'm thinking next, also with my work. So that is how it got started. I have the topic for managing AI-driven change, and the concept of today's theme, the overall theme of this is basically, how we can, where we are thinking ourselves in AI in terms of into 2020, 2030, right? So like inclusive growth through AI, that's what the whole topic is. And I thought, when I think about growth, basically there are, sorry, I'm unable to share my screen. I'm just trying to think what's the best way. Okay, sorry. Share screen. It's there, yeah. Yeah, it's coming. Thank you. Yeah. So when I think about the growth, so the growth are basically, there are two kinds of growth. One is inclusive growth and another one is exclusive growth. And do I grow by myself or grow together? So those are the few things come in our mind when we are thinking about growth. But in terms of the AI, the way things have been happening in this generation, in this era, there are a lot of potential that we can grow as an individual. We don't have to care about the community or the society or the employees. So that's where the challenge begins, and that's quite a significant factor, in terms of in any growing organization. But as a growing organization, we also need to think about how we can grow, because if we look at in terms of the change, if we don't adopt the change, we will be fall ahead of, behind the trend or, whatever happening. Example, if we look at the Fortune 500 since last 30 years, the industry who have utilized the technology well, they have quite advanced in their stage. Like say Google and Microsoft, they were in in 2000, they are not in the Fortune 500 list, whereas General Motors were leading, extremely at a top level. But whereas, in terms of the lack in adaptability of the technology, which put, most of the old Fortune 500 company behind, those companies who have used technology like Tesla better, they are moving fast. So change, we cannot ignore the change.
बट चेंज सहित आमको एटा देखिया पड़ियो आमे एका संगरे केमती ग्रो करछे सब लोकन सहित मिसी केमती ग्रो करछे मु जदी निजे बड़ हेबी मु आउ कहा कथा भाबिबिनी सेटा पॉसिबल हबनी सो वी नीड टू बी कोलैबोरेट एंड ग्रो टुगेदर but change okay why change is a critical factor to discuss as a machine learning expert or as a AI solution expert in any organization. When we start any project, so the project category are divided basically into these three areas: product, process and service. So आमो पाखरे गोटे प्रोजेक्ट जदि आसुची तो एई तीनटा एरिया रे फॉल हबो जदि देयर इज ए AI implementation project. What AI actually does, if there is an existing process, or for the new organization it can be a new process. If there is a process exist which is managed by human plus computer, so AI role is to improve or bring improvement in that particular process. When we talk about improvement, actually process efficiency or time efficiency, all this comes under the picture. But when this improvement comes, as a human psychology, it creates some level of insecurity on their job profile or some sort of things. They got insecure. Okay, what sort of changes are coming? What is going to happen to their job? So okay, why it will come? I mean, in terms of the AI space, so there are two concepts we call as is process and to be process, right? If we are implementing artificial intelligence system, we want to understand the complete as is process, then we can translate that into a to be process. To take from as is process to be process, which is a good process or improved process, we need to understand the as is process. As is process understanding begins when you try to understand from the existing employee or the existing department, okay, how the as is process looks like. But when this change or the AI comes, that departments or the group of employees try to be insecure in their space. So it is a very sensitive area. So we need to be really strategic about change management. Why? The first thing is that as a business leader, I think many MNCs try to think, okay, how we can utilize the knowledge of their current employee and preserve that knowledge and build better AI system by including human in loop. So including human in loop is the key thing to be considered in the change management phase. And what I call it as a sustainable change management, if we follow these four principles, whenever we are doing any product, process or service development, including any industry. It's not specific to IT industry or or manufacturing industry. It can be applicable to any industry. So there are four things we can find out to manage the change efficiently. One is why we are using that AI project or why we are starting that AI project. The second one is what we are going to do with that project and what is the expectation from that project, and who are the person going to be impacted, whether their hours are going to be impacted, that who will give us answer how we can reutilize their talent to improve our AI system better rather than taking them out of the loop. And then how part is most of the technical part as well as the change management part. How we can include those the business talent who has been who likely to be impacted in this AI implementation, how we can include them in the process and make them comfortable and let them drive the AI system. By we as an engineer, we can develop the AI system, but as a driver, I think the business people or the industry expert who have been working in that domain, they can be the better driver than an engineer. So in this four metrics, like why, what, who, and how, I think these four metrics can be helpful for a sustainable change management in the AI-driven organization. That's it from my end. Thank you so much for giving me the opportunity to speak in this great forum. And thank you, everyone. Thank you so much, Balaram. Next, I would like to request
Savitra Panda, Abhishek Sahu, Professor Harekrishna Mishra, and BC Swain to start their panel discussion. Professor Mishra can start. नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना अभिषेक साहू मो आईआईटी कानपुर रु ग्रेजुएट हेची मो आईआईटी रे थिलारु गोटे ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम रे काम करथली बेसिकली एला गोटे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट थिला दैट इज कॉल्ड एज सीपी ग्राम्स हेले कोन ए टोटल हबार सपोज कार पेंशन आसुनी कार फाइल आगु बढ़ुनी कोडे करप्शन अछि कार रोड ठीक होनी सेति भाई आमे गवर्नमेंट कोन डिसाइड करतला गोटे पोर्टल बनेला दैट इज कॉल्ड सीपी ग्राम्स से पोर्टल रे आमे माने हमर कंप्लेंट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को लेखि पारू आ गवर्नमेंट कोन करछि सब प्रति मिनिस्ट्री रे गोटे पॉलिटिकल सेल बनेछि जो माने एक कंप्लेंट माने को रिड्रेस करिवे हेले सिंस एबे कोन प्रॉब्लम हैला सिंस कंप्लेंट्स बहुत बेसी आसिला हेले ईच सेल रे बहुत कम लोक अछंदी हेले कंप्लेंट को रिड्रेस करिया पई तार जो टाइम था टर्न अराउंड टाइम सेटा बहुत अधिक होइला हेले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई हमर आईआईटी कानपुर गोटे इंटीग्रेटेड एआई सिस्टम बनेला जो थे कि ए प्रॉब्लम डाकू हमें बहुत अमाउंट सॉल्व करू हेले जो कंप्लेंट्स आसुची हमें ताको आइडेंटिफाई करछु कि इवन दिस कंप्लेंट इज urgent nature or not for example जदि की कंप्लेंट ब्लड रिलेटेड आसिला कि सपोज कोडी कोन प्रॉब्लम हे गला माने बहुत सीरियस प्रॉब्लम हे गला से केस रे हम सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करबो कि से कंप्लेंट जा कि करेंटली रिड्रेस करियार अछि कि नै तापरे एमिति भी बहुत सारे केसेस अछि जो केसेस रे बहुत सारे कंप्लेंट्स रिपीट होउछन ले बारंबार से कंप्लेंट्स को सॉल्व करियार किछि मीनिंग नै हेले हम सिस्टम सेटा भी आइडेंटिफाई करछि कि केते सारा कंप्लेंट रिपीट हे कि ताको एटलीस्ट गोटे कंप्लेंट सॉल्व हेले मेजॉरिटी कंप्लेंट सॉल्व हे परियो तापरे हमें गोटे एमिति टेक्नोलॉजी डेवलप करू दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक सर्च इंजन जो थिरे कोन हे पारे कि सपोज हमें जदी गोटे कंप्लेंट को लिखलु फॉर एग्जांपल पीएम लिखले शो मी केसेस रिलेटेड टू डाइवोर्स हेले हमर सिस्टम कोन दबो ऑल दोस कंप्लेंट्स दैट जो थिरे जार इश्यूज about divorce थियो से cases जारे even it is any Indian languages currently our system train हेतला हिंदी इंग्लिश different languages आउ बाकी languages since तांका data कम थिला बोली से language ट्रेन हमें करिथिलु ले से complaints दा भी redress आछन सेतिर कोन हबो the depth of information the depth of retrieval will be more हेले हमको गोटे broader perspective मिल जो कि ए types of complaints माननगर ए issue again हमर सिस्टम एडा भी कैटेगराइज कर दबर कि गोटे मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ कंप्लेंट्स को हमें को कैटेगरी रखियो फॉर एग्जांपल गोटे सपोज फॉर गोटे एरिया रे वाटर प्रॉब्लम अछि और सेडी सिटीजन माने सब सिटीजन माने वाटर प्रॉब्लम विषय कंप्लेन लिखुछंती जदी हमें तार गोटे रूट को धर दबा फॉर एग्जांपल रूट हैला कि तार वाटर इशूडा हमर सिस्टम हमु दे दबो कि एती रो कंप्लेंट्स रो इशू होला वाटर हम जदी सेडा सॉल्व करता एती कंप्लेंट रिड्रेस हे दिबो ले से टाइप रो टेक्निक जाको यूज कर हमें एआई एमएल यूज करी कि ए जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा छी बहुत सारा डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडियन लैंग्वेजेस रे गवर्नमेंट पाखरे ताको हमें एआई एमएल टेक्निक यूज करी कि तार टोटल टर्नअराउंड टाइम फॉर रिड्रेसल हमें ताको कम करी सो सेति पई हमको 2022 रे नेशनल अवार्ड मिलतिला फ्रॉम डीआरपीजी तो I'm open for questions now. As I don't see any questions popping up, so we can just move on to the next participant. Yeah, great work. Please move on to the next author. Great. Excellent. So, Harekrishna sir, would you like to continue?
सर पर ऑडियो आसुनी Wait a minute. We can't hear you, Professor Mishra. You can speak something now. You are unmuted. Okay now? Yeah. Okay. Yes. Namaskar. I think ये महालय आज महालय आमर समस्त को मोर अभिनंदन मु प्रथमे डॉक्टर आदित्य परिडा को धन्यवाद देवी मते एठी इनवाइट कले कारण मैं लास्ट गोटे वर्ष हेलाणी से या भीतर मते कहूतले मु बहुत कथा शुणी सोसाइटी विषय रे कम्युनिटी विषय रे से धन्यवाद दूसरी आ पंडा को भी धन्यवाद देवी से परिडा सर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कले आज श्राद्ध पर मुझे ऑन कली आपण जॉइन कल योगदान देली जो बहुत डायमेंशन नहीं कि आम आग को बढ़ुचे आम गर्वित जे आमर जे ओडिशार कम्युनिटी एआई को एते ध्यान दे आग को बढ़ी चलती मोर जो टॉक आज अच्छी एथे मु निजर जो पर्सपेक्टिव आनीबी तार होची डिजिटल इनक्लूजन एंड एआई ये भीतर बहुत सारे काम चलती आम इंस्टीट्यूट रे आमर जो इंस्टीट्यूट से रूरल मैनेजमेंट रे बेसी काम करे जोड़ी आम डिजिटल डिवाइड ऊपर बेसी आम ध्यान दो तारी ऊपर मु टिके कहबी इनक्लूजन ऊपर से भी एक प्रकार सब चली केमती आम डिजिटल इनक्लूजन को इंडेक्स माध्यम रे प्रति लोकल लेवल रे सर्विस को नहीं आम आग को बढ़िया कोटे स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट देखा जो मत टॉपिक दिगला से डिजिटल इनक्लूजन कहतु प्रथम आरंभ करी डिजिटल एक्सक्लूजन ये मुझे डिजिटल इनक्लूजन और एक्सक्लूजन कॉम्प्लीमेंटिंग सेट्स जिते इनक्लूजन पे जीवा इनोवेशन आसीबो और एंट्री बैरियर बढ़िबो ही बढ़िबो और एक्सक्लूजन हमको शिखेबो जे हम आगु केमती बढ़िबा तेणु आम सब भयभीत हबार नहीं जे एक्सक्लूडेड हो गले तेणु प्रोब्लेमटा हो बेसी और से आमको सॉल्यूशन बाहर करिया पड़ो सीट हूँ इनोवेटर बेसी काम प्रोफेशनल मानकर बेसी काम यदि एआई को देखा जाए एआई इज ए लिटिल बिट ऑफ इंटेलिजेंट डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ जदि आम सिस्टम्स को जाए इनपुट सिस्टम्स को जाए यार मूल जो आगु बढ़िया भाव स्पीकर मैंने पैसा नहीं डेटा ना आम कि ना तेणु आम डेटा सेट आने कौटू ये विषय आमर इंस्टीट्यूट रे बहुत प्रकार प्रयत्न चली डेटा आसो कौटू आम जो मिनिस्ट्री ऑफ आरडी सब स्कीम को आम इभालुएसन करने चाहिए आम पर केवल एसीसीसी डेटा से किसी नाला जोटा कि एसीसीटी डेटा जो कहती सोशल इकोनॉमिक टेस्ट सेंसस से आमको किसी काम देला ना तो आमको निजर गोटे डेटा सेट तैयारी करने पड़ा मेटा डेटा तैयारी करने पड़ा टू सी भरी द डेटा तो आमको एआई की जदि आम जदि जीवा ताको हम जदि बहुत जन लोक गले ग्रोथ को देखा पड़ो आमको बट फॉर अस आट इरमा वी से द ग्रोथ टा रिवर्स हो पारे किंतु डेवलपमेंट रिवर्स हबार ना तेणु आमको देखा पड़ो एआई नॉट फॉर ग्रोथ बट फॉर डेवलपमेंट से आमको सिस्टम थिंकिंग उपर काम करने को पड़ो एआई को जदि आम सिस्टम थिंकिंग से जोड़ा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जे आमे वी आर थिंकिंग फास्ट और थिंकिंग स्लो आ दीटा कंपैरिजन कर देखिए कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा ऑप्टिमाइज हो पारुनी तेणु एआई टा सब बेले आमको गोटे दब सुविधा दब जे जरिया भी दब जे आम केमती आइदर थिंक फास्ट और थिंक स्लो द डिसीजन मेकिंग शुड बी इन फेवर ऑफ द रिसिपिएंट तो से आमको डिस्कवरी दरकार हम
So we have to discover the knowledge first to become intelligent. So knowledge pattern को आनिया को हेले data set रा बहुत दरकार. इतमी हमारो मते गोटे सुविधा मिली थिला जे नीति आयोग रे हमको इनवाइट कराई थिला मो से पार्ट रे थिली तापर ता फॉलोड बाय मिनिस्टर कोऑपरेशन जो नुआ तयारी छि तार एडवाइजरी कमिटी रे मो अछि ताको नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी तयारी करिया पे सेतरी डेटा सेट रे भी बहुत गुडिया काम अछि बोली उपलब्धि हैला पाखापाखि 0.85 million cooperatives अछंती 290 million members अछंती अछि आउ 0.8 million member अछंती ए गुडी को हैला सोशल एंटरप्राइज से माने नॉट ओनली जो देखछंती लोकल बेस्ड सर्विसेज but also they are looking beyond entrepreneurship to become local business entrepreneurs, not social entrepreneurs. They have to go beyond that. जेहेतु सोशल नेटवर्क अच्छी हम लोकल एरिया रे ताको हमके आगु केनी बढ़िया पड़िबो तापरे हम एतरे चालला ब्रेनस्टॉर्मिंग मिनिस्ट्री चाहेला जे गोटे काम करा जाऊ प्रथमे समस्तकर बैलेंस शीट उडा को हमें नै जो डाटा सोर्स हिसाब रे नै कि ताको हमें केमिति प्लानिंग करिवा तांको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करिवा आ ताको आगु को बढ़ाइबा एठी गोटे मु डिस्कशन करिया को चाहू छी ते बैलेंस शीट कोन डाटा सोर्स बैलेंस शीट आसला कोठ तार ओनर किए ताको कंट्रीब्यूट कला किए एगुडा कदी हम सेकेंडरी सोर्स कनी हमें कहबा दिस इज माय बेस्ट डेटा हमें आगु को बढ़ी परिबा नै तो मिनिस्ट्री जदरे हम आर्गुमेंट कलु जेटा आगु को बढ़िया कले हमको तळु को जिगाउ पड़िबो आ सेटा हम देखैली जे लोकल ऑनलाइन सर्विस जो सो दिया इस पता इवन कहूची डिजिटल डिवाइड इंडेक्स को जाई की डिजिटल अपॉर्चुनिटी इंडेक्स को जाई की तापरे आपनकर आगु को बढ़िया को हेला मैं किंतु लोकल ऑनलाइन सर्विस दबा तापरे कि डेटा जनरेटर ताको किंतु एनालिसिस करिबा ताको जदी हमें एआई से जोड़ीबा हम पे बहुत अपॉर्चुनिटी अछि हम गर्वित जे हम ओडिया भाई माने एते आगु को बढ़ी की एते बढ़िया काम सब करूछंती तो मोर माने एति की माने कहिवार अछि जे ओडिसा को जदी आगु को एआई एनेबल्ड करिवार अछि हमको गोटे स्कीम तयारी करा जाऊ गोटे कमिटी तयारी करा जाऊ टू सी और टू इवन बी ए पॉलिसी प्रेस्क्रिप्शन टू द गवर्नमेंट दैट हम डेटाबेस ता करिवा केमती ताको हमें आगु को बढ़ेबा केमती हमें गोटे सो मोटो हमरो निजर गोटे मॉडलिंग करी ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाहर करी हम केमती हम निजर जो पोटेंशियल अछि जो लैटेंट स्किल अछि लैटेंट अपॉर्चुनिटी अछि और लैटेंट मार्केट अछि यदि सेडा को हम न देखि परिबा हमें आगु को बढ़ी परिबा नाही तेनु हमकु मु कहूची मोर जति कन्विक्शन अछि जे ग्रोथ को न देखि डेवलपमेंट को देखा जाओ और हमरो गोटे स्कीम तयारी हो एआई फॉर डेवलपमेंट इन ओडिशा perhaps that could be a major contribution to the community in our state बहुत धन्यवाद मते गोटे अपॉर्चुनिटी देले से बहुत धन्यवाद थैंक यू सर नेक्स्ट मु बीसी स्वाइन सर को रिक्वेस्ट करिबी से तांको मंतव्य प्रदान करिवे नमस्कार जय जगन्नाथ मते ये फोरम रे कहवा को 5 मिनट में सुजोग देइथिबा पाए मो स्पेशली धन्यवाद देबी अंजन बाबू को जे कंटिन्यूअसली 15 दिन हला मो से इंटरेक्शन अछंती प्लस मते बहुत खुशी लागुची आज ओडिया जे टेक्निकल कैपेबिलिटी भी ओडिया मानकर वर्ल्ड लेवल रे केते सुंदर भाबे रहिची जोटा कि यही फोरम रे जोड़ला परे हमको जाना पड़ुची देयर आर डिफरेंट फोरम्स ओडिया मानकर अछि इंडिया रे इंडिया बाहर उनरे कि बहुत सारे फोरम रे मध्य मु मेंबर अछि बट ये फोरम टा बेसी भल लागुची बिकॉज वी आर टेक्निकल पीपल एंड टेक्निकली आमे कोन करि परिबा ओडिया मानक पई जदी किछि कंट्रीब्यूट करि पाले त बहुत भल कथा आ ये फोरम रो मुख्य लक्ष्य होची सेटा मु जनरल मैनेजर हिसाब रे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रे काम करूची मोर बैकग्राउंड है बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन जी कि मु प्राय 20 वर्ष सैटेलाइट कम्युनिकेशन करिची आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम डूइंग सर्वेलेंस एंड अदर थिंग्स केतरा प्रोजेक्ट लेवल रे हमें एआई काम करूचु तापरे मोर बेसिकली कम्युनिकेशन लाइन रे मु कहिबा कथा जे एआई केमिति काम करूची
जदि कम्युनिकेशन रे दीटा अच्छी गोटे मेरा मो बैकग्राउंड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन द्वितीयटा है टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन रे ऑलमोस्ट ऑल 65% आमे वर्तमान माने एआई यूज करूछु फॉर डिफरेंट पर्पसेस तापरे सैटेलाइट कम्युनिकेशन रे मध्य बहुत माने ऑलमोस्ट ऑल 40-45% आमे एआई यूज करूछु आ 2023-24 रे आमे बहुत किछि एक्सपेक्ट करूछु माने इनोवेशन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो गुड़ाक आमे नॉर्मली टेलीकॉम सेक्टर रे आमे माने यूज करूछु एआई particularly नेटवर्क ऑपरेशन और ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव करबा पे हम एआई यूज करू टेलीकॉम रे नेक्स्ट हला आपनकर केमती चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट हिसाब रे हम यूज करूछु तापर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पाई मध्य हमें टेलीकॉम सेक्टर रे एआई यूज करूछु आ तार मध्य बहुत फलप्रद होउची प्लस ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन करबा पाई मध्य हमें एआई यूज करूछु तापर कस्टमर एक्सपीरियंस आउ सैटिस्फैक्शन एतरे एआई रो गोटे बहुत बड़ भूमिका वर्तमान रोल प्ले करूची आउ एतरे बहुत सारी बहुत माने अछंती जेमती गोटे माने एटीएनटी अछि अमेरिका रो ये कि बहुत मात्रा रे गोटे टेलको हिसाब रे बहुत मात्रा रे से माने एआई यूज करूचंती तापरे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पाई हम एआई यूज करूछु केमती नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन और कस्टमर सैटिस्फैक्शन बढ़ेबा पाई तापर आसिला हमर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो आरपीए अछि सेटा मध्य हमें माने यूज करूछु टेलीकॉम सेक्टर रे प्रेडिक्टिव एनालिसिस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करबा पाई मध्य हम एआई यूज करूछु टेलीकॉम सेक्टर रे आ सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन मोबाइल मनी किंवा एसएमएस इत्यादि जो अच्छी सब विभिन्न प्रकार फ्रॉड जो कि आजिकल सब एवरीडे लाइफ रे घटुची से गुड़ाक पाई मध्य एआई यूज करा जाउची टेलीकॉम सेक्टर रिकमेंडेशन यूज हिसाब रे हमें एआई यूज करूछु प्लस रियल टाइम एनालिटिक्स पाई मध्य हमें एआई यूज करूछु टेलीकॉम सेक्टर रे तापर कमिंग बैक टू सैटकॉम सेक्टर जदियो इंडिया रे सबुठु बड़ रोड ब्लॉक हैला हमरो एक्चुअली रेगुलेशन रेगुलेटरी प्रॉब्लम बट स्टिल आमे सेटा को एआई रे केमती मिनिमाइज एआई और टेक्नोलॉजी माध्यम रे केमती सेटा को मिनिमाइज करी आमे केमती माने कंपनी यूजर मान को सर्विस देई परिबु से जिनसटा मध्ये आमे एआई माध्यम रे करूछु आउ जो गोटा को आगरू बहुत केते जण वक्ता मो पूर्व कही जे डिजिटल डिवाइड प्रकृत कथा होची जे आमे इंक्लूसिव ग्रोथ सेती बेले करि परिबा जत्ता बेले डिजिटल डिवाइड टा ब्रिज करा जिवो गैप टा कम करा जिवो एमती प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा फोकस अछि डिजिटल डिवाइड को मिनिमाइज करिया पाए आमे टेलीकॉम सेक्टर रे जाउठी टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन पॉसिबल नाही बा आमे पहुंची पारु नाहू सेठी आमे सैटकॉम माध्यम रे विभिन्न प्रकार माने ब्रॉडर नेटवर्क नहीं आमे फार फ्लंग एरिया जो गुटा को बहुत रिमोट एरिया रही देशर प्रधानमंत्री को विजन अनुसार आमे प्राय almost all we have covered 95% of the panchayats in this country as on date. Sir, 1 minute left. तापरे पर्टिकुलरली ओडिशा कथा ओडिशा रे डिजिटल सर एआई रे बहुत इनिशिएटिव निया जाउची पर्टिकुलरली द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इज वेरी मच फोकसिंग ऑन दैट आओ आमर गोटे गर्वर कथा जे ओडिशा पाई इनिशिएटिव जा निया जाउची आम ए फोरम माध्यम रे किछि नवा कथा प्लस
आमर जानी खुशी है जे ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन जे कि देश रे फास्ट माने प्रथम ऑर्गेनाइजेशन जे कि देश रे एआई एनेबल्ड बिल्डिंग रो क्रेडिट नउची माने एआई एनेबल्ड बिल्डिंग से माने बनै चंती मु एति कही मोर वक्तव्य शेष करी धन्यवाद मते ये चांस देथिवार ये फोरम रे 5 मिनिट कहबा नमस्कार मु रिक्वेस्ट करबा चाहिबी सवित्रा पंडा को से आसिकी निज वक्तव्य देबे सवित्रा से सवित्रा नाहंती हमें आज्ञा ठीक अछि तेबे आपण समस्त संगे ठरे कथा ही बहुत भल लागिला एवं किछिटा परिचालना करिया पई सुयोग देथिबार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एबे नेक्स्ट मु एई परिचालनार दायित्वटा आदित्य सर को हैंड ओवर करिया को चाहिबी आदित्य सर प्लीज स्टेज एबे आपनकर धन्यवाद सो स्टार्ट करिवे एथरो श्री मधुसूदन दासर लाइन रो उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर निज मातृभाषा उच्च हेबा पई कर जेबे आशा उच्च कर आगे निज मातृभाषा here मातृभाषा does not only mean that our mother tongue Odia but also it represents Odisha. Namaskar, Jai Jagannath. I am Aditya. Here a quick intro on myself is I am helping coaches and consultants to get more big book meetings. It's been a pleasure to introduce the upcoming speaker. He has not only held its roots very strongly and tightly, but also nurtured it to grow a company in Odisha for various brands. So he has been slowly becoming a face of Odisha in the world's arena, listed in Fortune India 40 under 40. And okay, he has come. Okay, Fortune under 40. And one thing which is I like it very much, and let me share it with you. You know, Odias are seen as viewed as lazy people, you know, to just to mention about his line, lazy people eating pokhalo, sleeping in the afternoon. But he has mentioned we sleep, we dream, but when we dream big. Apart from starting his company Olive Ridley Media, and he has been in touch with various cultural programs in Odisha, having his podcast relating all to the Odisha. And yeah, he will be talking about Lisa, news anchor, multilingual news anchor by OTB. Handing over to you, Samar Pratap. Yeah. Thank you, Aditya bhai. Apne ate nuanced aur ate well researched introduction dele mate bahut bhal lagila. Before beginning, I just want to take Lord Sri Jagannath's name and I just want to say कि मतलब बहुत भल लगे ये भले हमें गुटे फोरम ये भले प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करूचु जो थरे ये भले आइडियाज एक्सचेंज होची which are going to shape the Odisha of tomorrow, the India of tomorrow, essentially the all of world. केबे केबे मु इंग्लिश रे स्विच करिवि ओडिया रे मु ट्राई करिवि जति कहवार मोर इंटेंशन होची कि मु जति की क्लैरिटी रे मु मो आइडियाज कहि परिवि ओडिया I have absolute respect for Odia, but केबे केबे किछिटा thoughts are more appropriately put in English. With that respect in mind, please जदि किछि भूल होबो मते क्षमा कर देबे. I'm inherently a storyteller. मु branding और marketing रू मु start करथली, advertising रू मु start करथली. So बहुत जण एठी अछंती बड़ बड़ दिग्गज मैवरिक्स अछंती एठी जो माने टेक्निकली आपन को कहि परिवे AI, what is the beast that AI is. But mu story कहिया को आछि एठी, and this story is going to talk about Lisa's story. And in tandem with that, we'll talk about Odisha and the kind of potential that we can unlock in Odisha, sitting in Odisha and not necessarily going out of here. मुझे जतल मो कंपनी स्टार्ट करथली मो एठी ब्रांड प्लगइन दोनी, but there is a context to it. मुझे जतल मो कंपनी स्टार्ट करथली मु बेंगलोर रे स्टार्ट करथली. मते बहुत जण कहिले के तमे बेंगलोर रे काहे की अछो तमे मुंबई काहे की जाओ. मु कहली मुंबई जिबा आगुरु मु ओडिसा जिबा को चाहूची. My second office I put it up in Odisha and I closed down my Bangalore office.
subsequently. କାହିଁକି ନା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ କାମ କଲି କି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାମ କଲି ବହୁତ ଜଣ କପି ରାଇଟର୍ସ ଥିଲେ, ଗ୍ରାଫିକ ଡିଜାଇନର ଥିଲେ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର୍ସ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଓଡିଆ ଛୁଆମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଡିଶାରେ କାମ କରୁନଥିଲେ। ତ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫଷ୍ଟର ଦ କ୍ରିଏଟିଭ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଓଡିଆ କିଡ୍ସ। ସେଇ ଇଣ୍ଟେନସନରେ ମୁଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲି ମିଡିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲି ମିଡିଆ ନାଁଟା ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଅଲିଭ୍ ରିଡଲି ମିଡିଆ ବିକଜ ଦ ଟର୍ଟଲ ଯୋଉଟା ଓଡିଶାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଜଗତ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଓଡିଶାକୁ ଆସେ। And similar to that, I consider myself a turtle in that regard. More, I was born and brought up outside of Odisha, predominantly for 20 plus years of my life. I spent outside of Odisha, but jetale mate time asla ke I want to create a setup. I looked eastward. Seithime mu Odisha ko asili. With that context in mind, let's talk about Lisa, right? Before I start, I'll talk a little bit about businesses. By the end of this decade, thanks to AI, there will be two kinds of businesses that will exist. Those that are going to harness the might and power of AI, and those that will go out of business. So it's do or die. And what I mean by that is, apan sunithibe gote term inflection point ame kohu. Inflection point is that point in the history of time jetale gote emerging industry te uthe au puruna industry bhangi pade. Mu apan kichita example douchi. 1765 रे कोल आपको आमे हार्नेस कलु, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उठिला। तारो एक्जेक्टली 100 वर्ष परे गैस और इलेक्ट्रिसिटी को आमे हार्नेस करलु। इट वाज द टाइम फॉर द सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट 1870. द टाइमलाइन हियर इज 100 odd years. एटा मने रखिबे, देयर इज अ पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तापरे 1870 गैस और इलेक्ट्रिसिटी रो आमे मूव ऑन करलु 1970 जतळे कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड। अगेन 100 years, then another inflection point was in 100 years. But funnily, आपनु मु पचारिबी नेक्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट केतळे आसला जानचंदी? It came in 2000s. इंटरनेट जतळे इन्वेंट हला 30 years. तो 100 years, 100 years, and then 30 years, right? So industrial revolution जो कंपनी माने मल्टी बिलियनर कंपनीज जोड़ा बढ़िले समाने shrink करले towards the time of internet because a new industry was being created. Our internet, our AI revolution bhitare, there's only 20 years gap. So you will notice 100 ru amar inflection point ta ghati ki 20 वर्ष माने कम ही जाउची. There is a good reason for that. Scientific term रे याकु कोनती singularity. Singularity is a point of time in history where the जतळे के experiments आउ तांकर innovation रो pace एते fast ही जिवो कि human brain comprehend करि परिबनी. That happens because of technology, right? So internet जतळे आसिला, we got connected, the entire world got connected. So the evolution आउ ए जो invention रो pace आउरी fast ही गला. With AI सेटा exactly होची, आउ सेटा overdrive रे जाउची. जति कि जिंसो आमे internet through आमे invent करूथुलु, सेटा एबे 100-fold बेसी ही जिवो. आउ आपण भाबंतु कि how will humans stay relevant in a world where the computer is inventing things and making and breaking things at a pace that we cannot comprehend? So the first question everybody asks is that will humans be obsolete? I will try to answer this question by the end of it. Okay. So what I have established now is that inflection point ta choto choto he jayegi hochi au ame gote singularity point ko almost pakhi asuchu. And would you be surprised कि आमे जतळे ओडिसा रे बसी कि OTV न्यूज नेटवर्क बिसर आमे भाबुतुले and media is going through a point of time जतळे आमे ब्रॉडकास्ट एग्नोस्टिक हे जाइछु. No longer गुटे लोको को स्टार होवा पे गुटे एक्टर होवा पे तमुकु मूवी हॉल रे माने you don't have to go to a movie hall or look at your TV screens. We have internet, YouTube, Instagram. So तमु जदी स्टार होबार अछि तमु गुटे इंटरनेट कनेक्शन दरकार आ गुटे फोन दरकार. Tale, media is going through disruption phase. So we thought that we have to harness AI to also be part of this disruption if we don't want to get disrupted. So that was the intent behind even working on Lisa, right? Tale Lisa Ajiro date is considered India's first regional AI news anchor. बहुत जन confuse करते के अरे Times of India तो first anchor आनिची, correct, but also incorrect. It's the first anchor in India, but we are the first regional news anchor, and there is a hell and heaven difference between the both of them. That is of language.
गूगल रे आपण जाई के देखंतु हिंदी रो डेटाबेस अछि ताले आपण जदी गुटे हिंदी न्यूज एंकर क्रिएट करिया को चाहिबे इट इज टेक्निकली फार मोर इजियर टू डू एज अपोज टू ओडिया न्यूज एंकर काहेकि ना यार डेटा सेट नाही ताले यार डेटा सेट हमको क्रिएट करिया को पड़िला व्हिच इज अ हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ मु एटा बारंबार को है जतरा हमें लीजा को क्रिएट करूथलु तारो विजुअल एस्पेक्ट्स वाज द लीस्ट ऑफ आवर वरीज काइंड व्हिच इज कंसीडर्ड मान जतरा अलगा अलगा ब्रांड्स क्रिएट करले से माने कांस्टेंटली कहउथले के हमरो विजुअल एस्पेक्ट केते भलो अछि केते इंटुइटिवली से कथा कहउची केते भलो से चला बुला करूची किंतु आपण जतरा लीजा को देखिबे तारो विजुअल एस्पेक्ट ता सबुठु ट्रिकी पार्ट नो तारो कथा कहइबा ओडिया रे कथा कहइबा इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट visually mu jodi kahibi it is modeled after Litisha Mangat Panda who is heading the digital aspects of OTV so we kind of modeled the AI on her face tale tanku ame camera in front of the camera ame tanku basailu tanku kahilu eteta words kuhantu eteta sentences kuhantu and finally we kind of captured all of that and put it together so we had our face then we went a step forward we said no एटी मजा आसनी आमे आंकु चलेबा बुलेबा हातर हैंड जेस्चर्स करिबा हेड नॉड्स एंड ऑल ऑफ दैट तापर भी आमे भाबिलु नाही एबे भी मजा आसनी वी विल टेक इट अ नॉच फर्दर से इंग्लिश रे आमे तांकु ट्रेन करथलु बट वी वांट टू डू इट इन ओडिया एंड ओडिया वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग काइना एटा गूगल भी आजि जान सॉल्व करि पारिनी आपण गूगल ट्रांसलेटर को जाई के देखंतु ओडिया रे आपण को वोकल से माने देई पारिबे ताले आमे मैन्युअली बसी की पूरा डेटा सेट क्रिएट करछु 1000टा ट्रायल एंड एरर करिकी सेडा क्रिएट करछु ताले जो माने कहउचंदी आज रे डेट रे के तमे तो खाली गुटे रीजनल न्यूज एंकर क्रिएट करलो you do not understand the nuances and the intricacies of what has gone behind the scene to create this. I'm not bragging. I know that everybody is putting in a lot of hard work, but I'm just trying to clear some air. के केति के hard work actually या पछरे लागि थिला. Visual aspect विषय में कहि देली nodding, walking, तार sound विषय कहि देली. एबे मु तार hype पछरे आछी. आमे जतरे लीजा को लॉन्च करलो आमे भाबिलु के ओडिसा रे टिके बहुत बढ़िया पीआर होबो. मे बी पैन इंडिया रे भी पीआर यार भलो होबो मु एटा इमेजिन करदथली के जापानीज मीडिया चाइनीज मीडिया ग्रीक मीडिया पीपल फ्रॉम इटाली पीपल फ्रॉम यूएस एंड यूके टाइम्स ऑफ यूके रु नै की सीएनएन रो ग्लोबल रे प्राइम टाइम रे डिस्कशन यू आर हियरिंग अमेरिकन्स टॉक अबाउट लीजा एन अमेरिकन एंकर is talking to another American anchor about Lisa. That is when we realized we had hit the critical mass. The minute, and we did not anticipate this at all. Trust me, ame bhabitulu eta Odisha jae ki India jae simito rahibo, but it hit a critical mass jatala American media, prime time American media jatala cover yako kariya start kala. But that was not the end of it. When we did our social hearing campaign, we realized 10,000 plus publications and platforms have covered Lisa. Every nook and corner of the world knows about Lisa in some aspect. So that was a huge validation कि हमें ओडिशा रे रही कि हमें उटे ओडिया प्रोडक्ट क्रिएट करलु which resonated with the rest of the world. And this is not a high point. यार आउ गुटे high point अछि जोटा के मु end रे share करिवि. Before that, now everything can't be hunky and dory and glorious, right? There are going to be setbacks and challenges. मोर गोटे फेवरेट कोट अछि जोटा के ओपेनहाइमर रे भी आपण देखिथिबे स्टार्टिंग ऑफ द मूवी रे से कोहे के प्रोमीथियस is a Greek god. Prometheus stole fire from the gods and gave it to man. For this he was chained to a rock and tortured for eternity. The implication of that is Oppenheimer is a yaro implication thila with regards to nuclear energy. मते एटा बहुत रेलेवेंट लागे एआई रो माध्यम रे आ ओडिसा रे कोन हैला जते बेले आमे एते पीआर करलु एते भलो हैला समस्ते एटा गुटे सक्सेस स्टोरी हिसाब रे याकू रजिस्टर करले बहुत लोक आसीले फ्रॉम द वुड वर्क्स आ कहले अरे एआई आसला जॉब खाइ जिवो एआई पई बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होबो मु सेगुडा को टिके एड्रेस करिया चाहूची आपण जानछन्ती को जॉब्स फर्स्ट जिवो जदी एआई फुल स्विंग रे आसीबो एट द एंड ऑफ दिस डिकेड इट विल नॉट बी ब्लू कॉलर जॉब्स इट विल बी द व्हाइट कॉलर जॉब्स managerial jobs like mine. The CEOs and the CXOs of the world will be the first one to be impacted by the AI revolution. The guy who is on the field, who is doing organic farming, जे खेत चासी करूची तारो जॉब लास्ट रे जीवो ताले आपण भाबंतु कि आपण जतल कहउचंदी जॉब्स पळेबो कहारो जॉब्स पळेबो व्हाइट कॉलर लोक मानकर जॉब पळेबो द प्रिविलेज्ड काइंड
ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣ moral ଆଉ ethical dilemma କୁ ଯଦି ପସେଇବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି IIM ରେ ମୋର ଜଣେ professor ଥିଲେ Mr. Pradem ସେ ମତେ କହିଲେ Samar business world ରେ ନା there are no right or wrong answers, there are only appropriate answers. ଯେତେବେଳେ company consolidate କରେ ଯେତେବେଳେ losses ହୁଏ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ fire କରୁ. Is this the right or wrong? And no, it's not. You don't ask yourself, okay, is it right or wrong to fire people? You want to avoid it, but it is the appropriate thing to fire people. Definitely a lot of people are impacted by it. The implication, though, what I'm trying to say is that AI is a cyclone and Odisha is used to being battered by cyclones. So when a cyclone comes your way, you don't say that cyclone don't come, so many jobs are going to be impacted, so many buildings are going to collapse. You're going to brace and you're going to do the best you can to survive it. And AI is that. It's a cyclone of its own making. Mu besi time nebini. I'm almost reaching the end of my talk. Tahle last jinso joda mu kohuchi jobs ro understanding amaro kon. Jobs, the kind of understanding we have of jobs is hardly 200-300 years old. The idea that 9 to 5 mu office ku jibi a gharu ku asibi bhata pakhala khaiki sui padibi ei concept ta 1800 ରେ emerge kala ta aguru ame jobs ei bhale ame karu nathulu. So it is very much possible that the understanding of job will be redefined because a new world is coming. Maybe I don't want to work 9 to 5. ame sadabale ko mate work life balance darkar, but at the same time ame kohu amku 9 to 5 bhi darkar. Apun work life balance darkar kinu 9 to 5 bhi darkar. How contradictory is that statement? So maybe the AI is here so that you can have that work life balance. Why don't you look at it from that standpoint? So yes, the jobs are going to be redefined. Yes, a lot of jobs are going to go away, which happens, and these are the hard realities and facts. And my issue is not to give you paranoia, it is to mu jetale eta kohuchi bahut jana mo upar ragi padanti, but I am only a messenger and don't shoot the messenger. Mu tomara enemy nuho. I am trying to give you awareness. I am trying to tell you that, boss, this is going to happen and you better brace. And if you don't brace, that's again, that's your doing. Final thing jota mu kahithili, the high point for me Lisa jetala ame banelu jateki taku publication au taku etiki hype milla mo pai personally more favorite moment kon thila mu apnu kahibi. Olive Ridley Media Turtle, the way they start from Odisha and they go throughout the entire world. Mate gote email ro gote screenshot te milila 2 weeks later jane US re kamo korchoni mu tango na kahi paribini. See, Nvidia boli gote company re kamo korchonti. Nvidia apan jani thibe दुनिया रो arguably the most powerful company in the world. आपनकर कंप्यूटर फोन आउ पीसी रे जो ग्राफिक कार्ड ता लगे Nvidia बनाए. Arguably the most powerful company in the world. तारो CEO अछंती Jensen H Huang, right? गुटे ईमेल ते जाइथिला Jensen H Huang को in a C-suite email by the head of ethics and AI of Nvidia, and they had a screenshot of Lisa in that email, and she was telling that a regional news anchor has been deployed in a city called Odisha. Jensen may not ever come to Odisha, but he knows about Lisa sitting in an ivory tower in US. And that is the impact of internet. And that is the potential that Odisha has to offer to the world. I mean, Odisha re bosi ki gute Nvidia ro CEO, mane ette boda company ro CEO jae ame pahunchi gelu. So mate jo mane kuhandi ki Odisha ro baharu ku jai ki tame kichi ukhadi paribo, I tell no, you come back to Odisha. Odisha ro rahi ki ukhadi ki dekhao, because Odisha deserves this growth and Odisha deserves to be in the growth story, to be a part of the growth story of India. And on that note, thank you for having me here. Mu jodi kichi bhul koithbi mate kshama kar debe. I prefer wearing my heart on the sleeve. I'm a storyteller. Mu story kahya ko astili. Hopefully the story was worth your time. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Excellent, Samar. Great. Good. We are proud of you. Thank you. Thank you so much, Samar. Thank you. It's like a patriotism in yourself and doing for Odisha and within Odisha. That's a point which I liked it very much. Regarding Lisa, and it has been roaming around the world without actually moving, and the hard work which has gone behind it, so amazing. I also got to know today the intricacies behind it. The language models, data sets was not there, and you had to create it manually. So all these things are Herculean task,
Definitely, hats off to you. All the best, doing great job. So I will have my own questions because I didn't receive any questions right now till now. Anyone, I'm welcoming all to send your questions. Meanwhile, I will ask my own. Yeah. So right now, Lisa is the news anchor. So how is this going to means in the next 5 years? What do you imagine about her? Only just a news report? No. There we have grand plans. तांको नहीं कि हमरो बहुत plans अच्छी. मु जति की share करी परिबी टिके मु आपन सहित share करिवि. लीजा को हमें first digitally deploy करलु. तापर हमें realize करलु के यांको हमको टीवी को नबार अच्छी. एबे जाय से टीवी रे पूरा deploy हेई नांती. किंतु आपण बिलीव करिबेनी हमको केतेटा national brands approach करिसंती कहि कि आमे चाहूचु के लीजा integrations करू, brand integrations करू, starting from a few smartphone companies to sari companies to atta companies to a lot of FMCG company mu na guda nei paruni samane samaste chahuchanti ki Lisa tanko endorse karu because Lisa has become a household name now, and the beauty of Lisa is she's going to be ageless. She's not going to grow old. You and I will die out and we'll go away, but she's going to endure the test of time for the next 500 years. Imagine what it means for brands. From a brand POV, good endorsement through a person or the likeness of a person that is immortal. I think that is what is making brands gravitate towards her, and she is beautiful. A lot of people have, tanku mane apne vishwas karibeni Tamil Nadu ru gote meme page achi Chennai Uptakers with around 3 million followers. ସେମାନେ meme बनाउथले लीसा को नहीं कि लीसा एते ब्यूटीफुल अछंती कि सब सिंगल छुआ माने जो माने अछंती ସେମାନେ बाहा हेबेली आउ काहाकू. And yeah, so Lisa has captured the imagination of youngsters, brands, corporates. The potential is limitless. Mu khali apanku guta jhalakte douchi, but we have grand plans for her, and she'll not be limited just as a news reporter. Trust me. Yeah. Great. Thank you, Samar. Thank you for it. Thank you. Any more question, or should I go off? Aditya, I mean, this is. I'll just take on a little more. I mean, it's a comment somehow. Yes. Actually, yes. You have given strength to my conviction. That's what I also say. Why not? I mean, we have so much strength. We have to go back and we have to do it for Odisha, for the Utkal journey, for the Odias. We can do it, but together we can do it. So that I will talk about later. Yeah. आपण एटा जो कहउचंदी एटा गुटे बडो वैलिडेशन मोपे मत बहुत लोग कहिथिले ओडिसा जाई कि आपनकर बिजनेस सफर करिवो ओडिसा रे बिजनेस हबनी हला पैसा तमर बुडी जीवो लोक माने पैसा देखि नांदी सने खाइ जीवो एगुडा कमेंट मते मिलिथिला एंड समवेयर ऑफ द अदर बहुत डिमोरलाइज्ड हेथिली जो कोहंतनी गां झियो सिंघाणी नाकी सो मते बहुत जणा एटा भी कहिथिले तमे बेंगलोर रे जतल थिलो भलो काम करथलो ओडिसा आइ कि खराब काम करछो. I think there is a lot of inferiority complex. Mu jodi ebe jaiki Mumbai re basibi, I think a lot of people will come flocking to me again. But well, this is the reality. You said it. AI is changing the total mindset, and we have to move with that change of mindset, and we have to go with all inclusiveness and for the development. And of course, together only we can do it. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the Samar, I got a question अछि हमर अंजन बाबू पचारथि एठी chat रे. How do we leverage the momentum and how can the globally placed Odias help in this momentum? Okay, how can we leverage the momentum and how? And I think गुटे सत कथा कहबी आपण माइंड करिवेनी निश्चय आज्ञा मु जतले ओडिसा को आसिली मते बहुत जण कहिले अबाउट मोर एक्सपोजर ओडिसा को नेकी 6 वर्षर मु ता आगुरु नाही मु ओडिसा रे रहिथिली. इनफैक्ट मु जतले आसिली मोर लैंग्वेज को नेकी बहुत जण मते क्वेश्चन करले तम लैंग्वेज ठीक नै ताले मु केसरी खट्टी रे बसी की बहुत लोकलाइट मानन सहित बसी की मु मोर ओडिया को भी मु पॉलिश करछि. किंतु मते बहुत जण कहले मु एज अ ब्रांडिंग पर्सन मु सदा बेले पचारे कि आमे हमर कल्चरल हिस्ट्री एते अछि ओडिसा रो रसगुल्ला हमर श्री जगन्नाथ धाम आमर मु जतले सेल्स लोक मानक सहित बसे आमर दिल्ली और बॉम्बे रे जो माने सेल्स आमर प्रोडक्ट सेल करंती तांकु भी जणा नै कि द ग्रैंडनेस ऑफ द श्री जगन्नाथ कल्चर एठी के आसिला परे सेमान रियलाइज करंती समर द प्रोडक्ट इज हियर एंड नोबडी इन द इंडिया नोज अबाउट द हाइप ऑफ लॉर्ड श्री जगन्नाथ आ एटा को हमें कम्युनिकेट करि पारु. ताले द क्वेश्चन आई कीप आस्किंग पीपल फ्रॉम योर
एज ग्रुप इसके सर आमे आम कल्चर विषय कथा कहीं होनु आमे ब्रैग कहीं करू आमे निजको मार्केट और ब्रांड कहीं करूनु हमर एतिकी हिस्ट्री अछि आमे आउ मते सदा बेले किछि जण कहंती कि समर आमे स्वाभिमानी ओडिया आमे निज विषय कथा कहले ना ठीक होबनी लोक मानु को रिकॉग्नाइज करिया को दियंतु आउ मोर पॉइंट मु द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक अक्रॉस if you do not talk about your success stories then other communities will steal your success stories and your sweets along with that okay so please talk about your success stories and it will happen with HNIs and globalized leaders like yourself आपणकर success story विषय कथा कहिबनी जदी आ किए भी कहिबनी सर it's all about storytelling अपना story अपना storytelling yes good one गोटे खाली जस्ट खाली गोटे कमेंट देबी प्रोफेसर मिश्रा कोन समर you are rocking you have truly reflected our management education having said that कॉम्प्लीमेंट तो हबो निश्चय बहुत खुशी लागिला सुनी की जे बळिया एफर्ट चली छी एंड आउटकम भी देखौची एफर्ट सब बळे थाए कि आउटकम आनिया बड़ मुश्किल तेणु जदि मेजरमेंट क्राइटेरिया को चली जाए आमे देखिए आउटकम टा बहुत भलो रही छी that's about our showing culture tradition and then our language ताकू जदि आगु टिके बढ़ाई दिया जाए त मु जाननी कोन तम त निजे कहले टिप ऑफ द आइसबर्ग एबे भी देखौची खाली मु भितरे कोन छै मैं जानि नै भाबुची जदि आमे एबे जो मु कहउतली डेवलपमेंट स्टोरी देखिया पई ताकू जदि मैं एआई थ्रू डेवलपमेंट स्टोरी देखाय जिया जाए इंस्टेड ऑफ ग्रोथ स्टोरी ओडिसा रे बहुत कल्चर अछि हमें जानू छे हमरो पाइको हमें केमती लास्ट टेम्पररी की रहिथिले हमें ब्रिटिशर्स हमर जो रेजिलियंस ता अछि जदि ताको हमें नै कि एआई थ्रू रे ताको हमें बढ़ाए सेटा गोटे तापर हमें बारवाटी रे हमें जो कहे बोईत यात्रा रे हमें कहे वाणिज्य ऊपर बहुत प्रकार हमरो थिला आगर जावा वाली सुमात्रा में सब जाए ओडिया पाइको भी देखे ओडिया व्यवसाय भी करा जाए तो सेही उडा को हमरो एबे लुप्त प्राय हम से बिजनेस मॉडल को हमें आगु को नहीं पारी ना भाबुजी समर यू आर द राइट एट द राइट प्लेस नाउ perhaps we can delve into that and showcase our best practices our best history best past god bless you बहुत भल लागला सुनी hopefully मु आपन केबे भी डिसअपॉइंट न करू मोर एफर्ट ए डायरेक्शन रे ही रहइबो मु गुटे पॉडकास्ट करूची सेतर नीलमाधव पंडा को आमे आनिथलु घंटाटे रो पॉडकास्ट अछि आपन सहित शेयर करबी तापर सब्यसाची एंड वी हैव प्लान्स विथ रियली गुड गेस्ट्स द पॉइंट ऑफ दैट पॉडकास्ट द ना हला मैवरिक माइंडसेट मु समस्ते जति की मैवरिक अछंती ओडिसा रो बी इट गुड डायरेक्टर्स गुड बिजनेसमैन विथ ग्रेट एक्यूमेन मु तांकू मो फोरम रे आनी के कथा भी तांकर लाइफ एक्सपीरियंस विषय सो दैट हमरो जो ए यंग एज अछि जो माने छुआ माने 20 रु 30 वर्ष रे अछंती से माने ए पॉडकास्ट रे सुनिबे बिजनेस लीडर विषय रे जो माने उखाडी चंदी लाइफ रे किछि ओडिया माने आउ होपफुली दैट विल गिव देम द एनर्जी के इफ नीलमाधव पंडा कैन डू इट if Mr. Tathagat Satpathy can do it, if Jangi Bhagat Panda can do it, if Bhajan Panda can do it, then so can I. Growth stories, storytelling. We need to tell more stories and Odia stories. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Samar. Thank you. Jai Jagannath. Jai Jagannath. I'm still waiting for you to accept my LinkedIn request before this. I will accept it today itself. I did not know. Today, sir. Yeah, take care. So let me introduce the next speaker. Can I? Yeah. Okay. So the upcoming speaker is actually unlocking the mysteries of the Japanese company outsourcing. He has been pivotal in revolutionizing ERP specific global rollouts. With over 2 decades of experience in strategic leadership and global transformation, holding a degree from IIT Kharagpur, completed Global Emerging Leaders Program at Harvard. Allow me to introduce the CEO and President of In-House Digital Solutions, Shri Devendra Mohanty. He will be talking about the AI in Japan's perspective. Handing over to you, Shri Devendra Mohanty. Thank you. Jai Jagannath. Mo slide ta dekha jauchi? देखा So a lot of slides are there, but I'll cover 2-3 slides only. ठीक अच्छी तो
Quickly about me, mu Japan last 19 years ala achi, and primarily duita company mu seti mane nuwa business start karikri, then I develop the team in India. So HCL from scratch ru almost 2000 team mu develop karthili who can speak Japanese in different place of India, and subsequently in L&T re around 800 both around 7 years mu Japan re thili. Tapos last 4 years of IDS in-house digital solution we have started, and eithre ame Bhubaneswar mane Odisha saito we have started one of the development center primarily around ERP, and then jetebele ERP recruitment hala different colleges and different institute primarily IGIT OUTR jota CET thila agru Burla, then we realize a lot of gaps are there in terms of their knowledge market whatever is required for the industry. Then of course our focus was around ERP to start with. Initial around 2.5 years we started in Bhubaneswar. We have Chennai and Coimbatore development center, but Bhubaneswar also we started around 2 years back. Okay. And then I realized so basic things, there are a lot of things, they know the technology but they do not know the business. So I'm first invest different 1.5 year, and then last 1 year another company we started which is called Nihan Utkal. Okay, and Nihan Utkal is nothing but Nihan means Japan and Utkal Odisha, so focusing around Japan and Odisha. So why there is a need? Because Japan is the country where there is a continuous decline of population year to year. Okay, so around 12.5 crore of a population achi, so it is going to be by 2050 around 8 crore. Okay, and IT people, there is a huge need. Okay, and specifically Japanese speaking, leave apart AI, normal IT people also there is a huge need, but only few companies that focus and there was success. Okay, so ame seta gote jinso last 2 years start karichu. We have descended around now around 50 people are there in one of the company this in our digital, and there is another initiative in the skill development along with the government of India and Odisha. We are doing in few colleges for Japanese as well as SAP training, and in the AI robotics area also there is a huge need in Japan, and for that there is some initiative we have started in a small scale. So I think next few weeks you will come to know about that. In few colleges we have started some collaborations, developing center of excellence with Japanese company. After the chief minister with the delegation in April, speed of course last 1 year to start. So last 6 months there is a good pace in AI robotics. Apart from the SAP and Salesforce, I think that area we are focusing. And already our student around 200 people are there in different levels. And interestingly, recently I was talking about so se कहले कि Bhubaneswar Japanese speaking people are there. I like, yes. So he got surprised basically. So कई जान नथले, but slowly I think next few years that is my focus. Every other month I am traveling to Odisha, Bhubaneswar. Currently my call टा भी इथु नउछि Bhubaneswar day before yesterday, and there are a few other things we are discussing with some school as well as universities for AI robotics and SAP training. So coming to Japan, मते जो टॉपिक दिया है जापान कॉन्टेक्स्ट रे, तो जापान बहुत लोग जान नथे बेसिकली समझते यूएस किंबा यूरोप. तो जापान if you see माने it is like islands. There are 4 islands, so Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku. Okay, and already mu कहली basically they have like India type तांको पाखरे there are four seasons, and population is a declining population and aging population. That is the most important thing. And majority of populations are around 3-4 cities, which are Tokyo. Tokyo is Greater Tokyo, which includes Yokohama, then Osaka, and Nagoya is the automotive hub. So the 3-4 city majority of populations, and Fortune 500 companies of I'll skip this and move before going to the ML or AI area. So just wanted to tell what is the IT service, IT market basically. Okay. So it is third biggest if you see from the IT services opportunities, but except TCS
hardly any, of course, global company like IBM and Accenture, they're successful there. But Indian company, yeah, very few are that much successful. Okay. And so there are a lot of things are there. So so apart from the ERP areas, whatever last 18 years I'm doing, last देखा जाउछि कि basic AI रो skill गुडा भी सेठी जापान ने, there are only very few people are there, माने बहुत कम कॉलेज अछि जोथरे कि गुडा सिखा होछि. And तेणुकरी there is a need for those resources. Basic Python सिखिथिबो किंतु Japanese basic जानिथो, not necessarily कि high level. So around that, the different we are trying to collaborate. माने केमती कोन करा जाय परिबो. Japanese company already last 6 months रे मु 3टा Japanese delegation एटी धरि करी आस्तिली. से भितरु गोटे प्राइमरी AI robotics रो collaboration पे आस्तिला, आउ अन्य माने सब अन्य काम पे आस्तिले. So a lot of things we are doing with Odisha. So might be the result will come after 1 year. And Japanese company normally slow thanti, so all taking decisions and things like that. And एथरे भी गुडा जिंस जैसे कि एबे निसिन फूड हला जेमति कि क्रोसाकी हला, a lot of manufacturing company they have invested in Odisha. निसिन फूड्स जोटा कि माने their primary investment in Odisha only. से बड़ा Nippon Steel हला. So एमति lot of companies are there, big companies are ready to invest in Odisha. The key thing is that agru Odisha bisar ke jani nathile, and recently last 6 months to 1 year at least there is a traction in Japan market ki Odisha boli gote state achi. So let's see basically how it is going. So coming to ML market currently, mane compare karbe jodi US apeksha Japan it is still on the lower side. Okay. And the key thing is that it will grow in next 5 to 6 years, almost close to around $22 billion. And yeah, so at least India paying board opportunity achi. So all the states like a lot of putting effort, specifically Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and now we are starting to discuss with different government of Odisha also how we can increase माने ट्रैक्शन टा केमती बढ़ा जाई परिबो. तो सेडे चलछि डिस्कशन. तो जते बडे भी जापानीज डेलीगेशन आसंती मु समस्तन को माने की आईटी मिनिस्ट्री रे तांको इंट्रोड्यूस कराय, तांको कोन करा जाई परिबो एडिशनली. सो ऑल दोस थिंग्स मु ड्राइव करूछि एबे एट माय इंडिविजुअल कैपेसिटी. तापर एठी भी टीम अछंती जो माने की हेल्प करूछंती से कोलैबोरेशंस पे. And so as you know basically, so all linked with the population. So tankor jemti ki ebe basic care pai there is a huge need basically. So old age people are there. For example, if you see almost 65% population will be above 65 years old. 70-75 tak kaam karanti. Kintu those who are 75 plus tanku there is shortage of resource jo mane ki care kari paribe, mane caregiver. So Seguda भी already there is a discussions going on with different ministry, IT India as well as Odisha, so how we can supply that. But apart from that, so semane seita को केमती कौन AI robotics through रे सेटा माने करी परबे already Toyota and few other companies semane collaborate होई किरी सेटा discussion चलछि basically. And I think next already it is 2 years back. And similarly Japan रे social life टिके of course टिके कमिलानी. There was a like on the higher side there was a suicide risk basically. Okay, especially Monday वगैरह देखिए आगरू there will be always news. Train आगे किया जो suicide कर डाला and all those things will be there. Train कहीं delay हला ना, there is somebody did suicide basically. So say type तांको social life टिके pressure आगरू थिला basically. But now it is better of last 5 to 8 years government माने proactive नहीं करी. But तापाई भी से different how to find out risk. So say गुड़ा सामने practical जिनसे गुड़ा केमती use करा जाई परियो जो गुड़ा beyond industry. Industry is definitely there using it for माने last 10 years माने जानी थी माने Asimo हला Honda रो जो robots and total tar Hitachi जो use करे था factory, all those things are there. And right side data you can see basically. So केमती माने जो population people will be depending on the like a lot of old people will be depending on the young people for their pension, and there will be huge imbalance, and that's why all those
AI robotics, definitely that will be of greater help in their society. I'll skip this slide. Any questions? Any questions? It's like you explained well, bhai. Thank you, Honorable. Hello. Devendrao, namaskar. नमस्कार नमस्कार आपण बहुत बढ़िया कथा कहले जापान विषय रे मोर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रे मु जापान रिलेटेड गोटे मानो टॉपिक मु देखेबी दैट इज सोसाइटी 5.0 आपण जदी अछंती जापान रे तो आपण ताको रिलेट कर परिबे आउ आपण जो टॉपिक कहले एआई एंड रोबोटिक्स इट्स वेरी मच रिलेट टू दैट I think आप और more presentation अच्छी, so if anyone got any question. Sitansungra question আছে, Sitansu पचारंतु. Okay, unmute yourself. Sitansu unmute करंतु. Yeah. Unmute करंतु. If you want to ask. पचारंतु. Hello. Am I audible now? You are audible. पचारंतु. ना बुझ कटेले आपण चैट विंडो रे क्वेश्चन आपनकर पचार दियंतु. Over to you, Aditya. Okay. I think Abhishek. Hello. Let me take over the. Sorry, go ahead. Let me. I think the question is over. Question does sorry next. So what's the summon place like you? So introduction they from overcoming a layoff to spreading an alternative investment fund. Our speaker is on mission to create 10 net zero cities in Asian Plus, focusing on affordable urban living with notable accolades such as technical eligibility for HKX listing and recognition as top 10 business leader in Malaysia. They have transformed setbacks into turns. This tech entrepreneur, recognized for sustained efforts, holds a diverse educational background, mentors in the oil and energy domain, and champions transformative entrepreneurship. Let's meet the visionary, drive the positive change and innovation, Dr. Swavrata Samantai. Namaskar. Thank you, Rupak. I expect करनଥିଲି मते एते भलो भाबरे मैंने तो प्रेजेंट करियो, but thank you very much. Let me share. Am I my slide is visible? Is it? Yes. Yes. Okay. धन्यवाद AI forum Odias in AI forum and machine learning. Thank you to Dr. Damodar for setting up for last 4 years. I think se बढ़िया भाବରେ conference arrange कर चलचंती. This is really a great opportunity for me to present this idea. Everybody, what I heard till now, they were talking about the technical aspects of artificial intelligence, how we are we can implement them in an environment that can benefit the businesses as well as can create a bit of a sustainable part. But what I am going to share with you today that my
my journey in form of pen on storytelling, because as Rupak told, I was a geoscientist, by profession, but I got laid off, and then I started my, my journey as an entrepreneur. And today we have reached to a level where I believe I can see that there is a roadmap with us where we can champion the net zero just transition with self-sustaining super intelligent cities. This is what I have come up as a note, agenda or as a topic to discuss. So before that, I'll just give you a brief introduction. Already, I was very fortunate. Lord Jagannath Aashirwad, I have become the first Asian to invent world's first artificial intelligent enabled ESG assisted farming system. जोटा को कि हमें next ChatGPT for sustainability बोली हमें term करूछु. For this particular innovation, I was recognized at A20 Asian Summit this month only, and also we have architected the world's first responsible AI powered net zero fund that will finance self-sustaining super intelligent cities. So basically my vision is like how we can use AI as a force for good. So my field of research covers a diverse background, starting from geoengineering to ensemble sustainability, society 5.0, and my field of research and activities marries between SDG and net zero, and ultimately creating a benefit for the society. And what I view sustainability as a responsible action taken today for the betterment of our future generation. So this is something a goal that is worth chasing. And sethipai mo start karli gote small scale level, and I had an idea that how I can use artificial intelligence for championing sustainability. So 2018 I started my company, and gradually dhire I survived. I persisted, and what to say that value of death. And dhire mu level re pahunchi where my voices are being heard, and I have been in touch with some of the global CEOs, and I feel myself as an advocate of sustainability at the moment, and I'm also been very fortunate to work with Odia and communities in promoting sustainability. And this is I would like to I heard Samar telling that telling about your success is also very important. So I would just give you links that we could manage to be have a technical eligibility for listing in Hong Kong Stock Exchange, and we have also partnered with IIT ISM Dhanbad to build executive programs on clean energy transition. We have been selected among top 20 Asian startups at CMB Sustainability Summit for our responsible technology solution. We got an official entry with at World Economic Forum's San Francisco Challenge. We are having a couple of patent application, and finally, my company Enheroes is a leading R&D tech startup in the Asian region, and we are in the path of becoming an impact unicorn. But through this self-sustaining city project. And we have already developed innovations and products. For example, digital twin ready urban sustainability ERPs, prototypes, cognitive smart city operating systems, and some of the integrated digital and hardware integrated ICT convergence devices, prototypes, all are ongoing and commercialization in process. So today we will discuss this big idea, like how we can champion urban happiness by making world-class urban living inclusive and affordable with self-sustaining, super intelligent cities. So I will share my vision and mission.
I will tell you that why this is real, that we can win, and this is also worth taking a part of this, and give a short overview of the project. So by 2030, we want to become a principal actor in the democratization of the financing, because as you know, the sustainable development goal and achieving net zero requires a lot of financing, but mostly corporations and institutional investors are involved. So till now, there is no option to include the community in the financing of that and getting the reward, sharing that reward. So we are, in the path of, become a trend setter in that area, and we have got a clear roadmap, like how by 2050 we can become world's biggest single source contributor for climate finance. And that now we have a very clear-cut mission that we will commission and commercialize self-sustaining net zero plus cities in 400 global smart cities, and so that we can make world-class urban living inclusive, affordable to a local community or common people. So let's see what the problem space we are dealing with. So as you know, the cities are currently facing a lot of problems, and as World Economic Forum, by 2050, cities will hold 80% of global GDP. They will contribute to 70% of global carbon emission, and they will host 2.5 billion of urban residences. So the city mayors, corporates, and community, they together have a common advanced sustainability challenge towards urban happiness. So we have mapped out that if there is a clean energy transition, we can combat climate change, we can provide social security, we can lower the rising cost of living and make urban living inclusive. These are the some of the things that constitute urban happiness. So how our future cities can become a global model for inclusive, sustainable urban living using technology innovations like responsible AI. So let's check like how AI is improving our life. We all know that AI is now being used for better quality of life, better working, better customer experience, and better healthcare. So perspective A is that AI is now is an engine, but at the same time, AI might cause social instability, and this is from World Economic Forum that very soon there will be job cuts, and in next 5 years AI may eliminate up to 14 million jobs. So the second perspective is if AI is an evil. So I would like to show one of my research work where you see that there is a sustainability level and there is a time, and without responsible policy, AI will cause a lot of job losses. And if that happens, parents will lose job, children will also lose job. This will cause to geopolitical instability. And when there is a geopolitical instability, corporate sustainability will be implicated. So those corporates who think that this job losses due to AI or any kind of social unrest is not related to our business, they are wrong, because ultimately it is going to cause a lot of business opportunities in terms of investment opportunities also going to lose. So adoption of responsible AI can help corporations become sustainable, and positively it can shape the future of humankind. And how we do that? So the secret sauce is adopting the sustainable thinking approach. So from profit centric, become a co-benefit centric, adopt responsible and ethical corporate policy making, and come from willful ignorance. If we come thoughtful intervention, then we can win the sustainability with AI. As the BCG says that AI can improve emission measurements. It can take care of the reductions across the industries, including for the biggest emitters, and it can also help in climate adaptation, resolution by forecasting the hazards, all these things. So from industry point of view, we can champion sustainability with AI. But I would like to show what if we can also use AI to champion net zero just transition
that means there must be justice. When we are thinking of a clear or a carbon-free planet, at the same time, if there is an hungry society which is deprived of all the social privileges, it's not good. So what if we can use AI so that that can have the bank balance of our local community automatically, just like in a very clear, easier note. And if that happens, that time, if they can spend on collective design thinking and help, building new ideas, that can actually turn, sustainability and reality in at a faster pace. So if we can build a sustainable thinking AI operating system that can autonomously design and develop ESG assets, that can actually fulfill the three aspects of net zero, that is zero emission, zero social inequality, and zero adverse sustainability. So this is what we are aiming up, that we must have zero emission, zero cost of living, and zero financial distress as part of ESG. So we have engineered self-sustaining net zero plus super intelligent cities that can guarantee urban happiness. So I'm not saying that it will speculate. So in terms of conceptual phase, we have done our math that we are will be able to achieve it. So this project, what we are calling EmTeK, and it aims at making world-class urban living inclusive and sustainable in 10 Asian markets by 2030 using responsible AI. So how it will happen? So we are clubbing responsible AI with an innovative financial scheme that can guarantee extra incomes and guaranteed incentives so that urban happiness can be achieved. So this has got an highlight in terms of business perspective, financial perspective, investment perspective. So main thing is that we are going to set up 10 cities, and it will cover 25 ESG centric EPCN supply ecosystem. EPCN means real assets that generate more energy than they consume and offset more carbon footprints than they emit. So for this purpose, we are raising 25 million USD. Yes. So sorry to interrupt. If you can wind up. Oh, okay. So I will skip some of my slides and reach. Okay. So we have championed the self-sustaining cities with a sustainable thinking AI, and with this fund, we wish to invest in impact AI ML startup projects. And we have, if we decode the InCity project, we have goals for turning executive education into equitable, building decentralized net zero centers, net zero supercomputing labs, and also financing bridge the financing of startups. And we have also designed an ultra smart green super kit for this purpose. And we have also 25 EPCN supply chain ecosystems, which will be powered by artificial intelligence and technologies, and they will be linked with SDGs. And we will be able to create a very large scale collective ESG impact with this project. And as I said, Society 5.0, it was a concept from Japan, and which aims for a high degree of sustainable conversions between cyberspace and physical space. This EmTeK project will champion that. So making world-class urban living accessible to common people, yes, this is a very real case. And we are using futuristic responsible AI business model for making our city self-sustaining, so we can win. And ultimately, cities become a sustainability enabler, so that they can offer superior urban happiness both in digital and physical mode. So it's worth of doing it. So this is how we are terming our system is known as cognitive ensemble sustainability management system, and we are in the first in the world to have such. So the core thing is that we have goal oriented sustainable thinking AI systems that can champion the urban happiness. And we are raising, as I told, at the moment 25 million USD seed capital, and with that we will set up an AI alternative investment fund of 625 million and invest in these projects. So this is the final slide.
So ultimately, this is what we envisioning. Future of InCity will become the future of inclusive urban living, and it will become a cognitive self-sustaining city that can champion urban happiness. And currently, we are introducing Geo Angel Global Residence programs. Those who want to join with us, and also looking for AI ML resource partners who will who will help us in championing our project. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I'd just like to tell you that my thoughts regarding this. Richness and happiness both don't go well together. Somehow, thinking to be achhi both kamele happiness we won't be sukhar rahi paribane. So, but somehow in our ancient days, we used our ancestors they used to live in a richness was not compromised. That's why Soni ki Chidiya or India was told. Yet we were happy. And nowadays it's somehow it has been changed. But sir, you are working towards it for the urban happiness. This very good initiative from you through AI and ML. You are working on it. So yes, thank you very much, sir, for coming and sharing. Thank you, Aditya. Thanks for your compliment. Yeah. So for the next speaker, I'd like to tell him. He is a distinguished programmer and a specialist in application architecture, and with a portfolio of spanning across Fortune 500 clients in banking, aviation, finance, to name a few. He has designed and delivered numerous mainframe and distributed technology projects. Allow me to introduce Sri Nikunja Dash. Today he will be talking about the hybrid neural modeling for groundwater level prediction. Handing over to you, Nikunja Dash. Please. Okay, thank you very much. So, मोर ओडिया भाई भौणी मानू नमस्कार एवं जय जगन्नाथ। अंजन भाई एवं कम्युनिटी गोटे भल कॉन्फ्रेंस वर्ष वर्ष धरी करी आछुंती एवं एटा विषय आम ए वर्ष जानिलु आउ सेतिपैका भाई को एवं कम्युनिटी मेंबर मानू को बहुत धन्यवाद। अंजन भाई किस दिन तले कहले गोटे कहया पेंका कॉन्फ्रेंस रे तो मु भाबिली कोन कहबी तो एआई नै कि हमर गोटे एमती मिस्ट्री रहिची अननोन फैक्टर कोन दिनसटा हमें ठीक से बुझी पारेनी। तो सेति पई भाबिली गोटे पुराना रिसर्च पेपर टाको टिके गडैवा पई तो सेति पईका आजि से विषय टिके कहबी आ स्क्रीन शेयर करबी एबे। मो स्क्रीन देखा जाउची कि देखा जाउची आगे गोटे आमे एआई रो रिसर्च करिथलु दि दशंधि तळे पाखाबेकी 20 वर्ष तळे आमे आईआईटी रे ए प्रोजेक्ट तयारी करथलु एआई रे सेतबेले एआई ता एते एडवांस नथिला आ आमे मैटलैब रे प्रोग्रामिंग करथलु एबे पाइथन रे आमे करूछु किंतु मैटलैब रे सेतबेले सब बेसी काम होउथिला आ रिसर्च पेपर रो लिंक टा भी अछि। ए रिसर्च ता थिला कि आमे केमिति ग्राउंड वाटर लेवल टा प्रेडिक्ट करबा आ ये रिसर्च टा हेइथिला एएनएन हाइब्रिड जेनेटिक एल्गोरिथम को यूज करी तो से विषय रे टिके आमे टेक्निकल पेपर टा रहिबो आ एटा हमकु कोन हेल्प करिवो ना आमे जो अंडरस्टैंडिंग अछि कि एआई टा गोटे ब्लैक बॉक्स भलिया भाबुची एई दिनसरा जानि सरला परे एई पेपर टा टिके देखि सरला परे हम भितरे गोटे अवेयरनेस आसीबो जे एआई रे एक्चुअली हुए कोन माने गोटे लागे जेमति गोटे हमकु अननोन बा मिस्ट्री भलिया सेटा रहिबोनी बोली मु अनुमान करूची। तो ये प्रोजेक्ट आमे काई करूथलु ना आमे ग्राउंड वाटर लेवल टाको प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट करिया पेंका आमे एटा प्रोजेक्ट टा करूथलु 2 वर्ष लागितला प्रोजेक्ट टा करियाकू आउ आर बेनिफिशियर थिले एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग आ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट सरला परे आमे ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी यूके सहित बेनिफिट कोऑपरेशन करिथलु किंतु फंडिंग प्रपोजल अभाव सेटा हमको आगे करि पार नथलु
ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ରେ ପରିଣତ ହେଇ ଯାଇଛି ଗ୍ରାउंड वाटर लेवल प्रेडिक्शन करबा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करिया पेका तो एई रिसर्च पेपर टा हमकु एइटा हेल्प करथिला आ अन्य मानकु हमर प्रोडक्ट लॉन्च होला परे हेल्प करियो एआई रे हमर जनरली कोन हुए ना मैथमेटिकल एआई रो प्रेडिसेसर होछि कि मैथमेटिकल मॉडलिंग रे मैथमेटिकल मॉडलिंग आसिया पूर्व आम यही स्लाइड टी देखी दबा जे एआई रे कौन हुए ना मशीन लर्निंग नहीं बहुत लोग जानी मशीन लर्निंग रे कौन हुए सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थाए सुपरवाइज्ड रे हमको डाटा दिया जीवो लेबल्ड डाटा आम तादर प्रेडिक्शन करू अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रे हमको लेबल्ड ना नथिबा डाटा दिया जाए आ डीप लर्निंग टा आर्टिफिशियल लर्निंग न्यूरल नेटवर्क ऊपर केमितिका पर्यवसित सेटा हमें आगामी स्लाइड रे देखिबा तो एमतिका कहया गले एएनएन बाय आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होची हमें टुडे किछि मिनिट कथा हबा तार सुपरसेट होची डीप लर्निंग तार सुपरसेट होची मशीन लर्निंग तार सुपरसेट होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमरो जनरली मैथमेटिकल मॉडलिंग रे हमें रिसर्च स्कॉलर माने ए भलिया जिंस सब यूज करंती आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जेनेटिक एल्गोरिथम फूजी लॉजिक और हाइब्रिड मेथड्स आज हम जो टॉपिक टा डिस्कशन करिया ए जो दीटा जिंस को यूज करती फास्ट दीटा जिंस को यूज करछि तो आमे जतोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय कहूचे सेटा किछि नो सेटा हमें नेचुरल जिंस को इमिटेट बा मिमिक्री करूचे बा मने रखि करी करिया जाउचे जेंति हमरो मुंड भितर रही 100 बिलियन पाखापाखि सेल्स रही आम जेमती का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टा मैथमेटिकल मॉडलिंग करूचे आम मुंड भितर थिबा 100 बिलियन से न्यूरॉन्स बेसिकली परस्पर सह कोऑर्डिनेट करी सब किछि सुनिबा आमे देखिबा सब किछि एई न्यूरॉन माने ही कंट्रोल करंदी तो एटा कुआ जाय बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क तो 70 वर्ष तळे साइंटिस्ट माने एआई जेतेबेले आरंभ होला सेमान एई जिनिसटा को अनुकरण करी करिया पेंका चेष्टा कले बायोलॉजिकली हम मुंड भितर जा होउची सेटा को सेमान कंप्यूटर भितर को आनिया को चेष्टा कले सेउठु एआई टा जन्म होला आ सेउठु ही हमरो एएनएन भी जन्म होला तो एटा थला बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क आ न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जोटा हम पूर्व स्लाइड रे देखिले कि सब जिनिसर मूल रे एई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अछि सेटा होउची एटा गोटे मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन बेसिकली आकु टिके सिंपलीफाई करले कोन हबो एठी जो तीनटा देखुछंती एक्स एक्स लिखा है सेटा होउची तार इनपुट लेयर गोटे डाटाटा हमर दिया जाय मॉडल को आ एठी जो A1 A2 A3 देखुछंती सेटा ला तार आउटपुट लेयर आ मिडिल लेयर टा होउची हिडन लेयर रे वेट आ बायस दिया जाय ताको ट्रेनिंग करा जाय जाको हम सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग करा जाय एठी बहुत प्रकार रो 20-30 प्रकार रो एल्गोरिथम होइची जोटी डिफरेंट वैज्ञानिक माने जोटा को निज पसंद और आवश्यकता अनुसार यूज करथांती तो एगुटा होउची बेसिकली एआई रो सोर्स एतिक जिनिस बेसिकली रहिची जदी एई हिडन लेयर टा जोटा इनपुट रो प्रॉपर्टी टा को काढी कि आउटपुट रे देखाए एटा जदी नंबर ऑफ लेयर्स जदी गोटे रो अधिक हे जबो आमे सेटा को डीप लर्निंग कहबा आपण माने सुनुथिबे मार्केट रे डीप लर्निंग बोली गोटे शब्द बहुत व्यवहार होउची सेटा किछि नो सेटा होउची कि एई जो मिडिल लेयर टा आपनकर देखुचंती एटा मल्टीपल मिडिल लेयर हे जबो सेटा डीप लर्निंग रे चेंज हे जबो एल्गोरिथम भी चेंज होबो आ किछि एल्गोरिथम भी सेम रहइबो ट्रेनिंग आ मॉडलिंग पेंगा किंतु डीप लर्निंग टा बेसिकली ए सिंगल लेयर टा चेंज हेकरी मल्टीपल लेयर हबो तो एटा हला बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रो हमरो मूल दिनसटा तो सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग टा बेसिकली हमकु डाटा सेट दिया जिवो एवं ताहार इनपुट और आउटपुट विषय रे हमरो मैथमेटिकल मॉडलिंग माध्यम रे हमें चेष्टा करबा जे तांको भितर कोन रिलेशन रहिछि जेमति E equal to MC square की फास्ट जेकोन छोटे मैथमेटिकल इक्वेशन रे हमरो सिंपल थाए एटा सेमति का सिंपल नाही आर बहुत डिग्री पर्यंत डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अप्लाई हे करी दीटा इनपुट भितर गोटे आउटपुट तो हमर एई रिसर्च रे कोन थला ना पानीटा माटी तळे केते डिस्टेंस रे मिलिबो आ एटा थिला हमर महानदी रिवर बेसिन रे 860 किलोमीटर स्क्वायर रो डाटा ऊपर जो दीटा इनपुट हम देखि परते गोटे थिला वर्षा रो पानीटा केते वर्षा होउची आ केते मीटर तळे पानी अछि ए दीटा थिला इनपुट आ आउटपुट थिला आ गोटे समय रे पानीटा केते डिस्टेंस रे मिलुथिबो तो एटा को हम एटी करिया पेंका सिंपलीफाइड सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग रे चेष्टा करिथलु
एवं कौन कौन एल्गोरिथम आम सिलेक्ट करथिलु बैक प्रोपोगेशन जेडीएक्स एल्गोरिथम यूज करथिलु जेटा पॉपुलर थिला और आज मध्ये पॉपुलर अछि रिसर्च लेवल रे आउ এই जो जिनसटा देखुछंती एटा होची तार हिडन लेयर टा काढिया हिडन लेयर रो जो रिलेशन टा अछि से इनपुट आउटपुट भीतर काढे तो बैक प्रोपोगेशन ए इक्वेशन टा यूज करे बेसिकली आम आउट एल्गोरिथम यूज करछु एलएम एल्गोरिथम बाइसन बीआर एल्गोरिथम आल्सो आ मु टेक्निकल भीतर को बेसी जाउनी तो आमे देखि दबा आ कोन कोन अछि इनपुट पे आमे जेमति कथा ले रेनफॉल डाटा आमे 860 स्क्वायर किलोमीटर रो नेइथिलु आ ग्राउंड वाटर लेवल डाटा भी आमे नेइथिलु सेम मंथ रे प्रीवियस ईयर आ करंट ईयर रो प्रीवियस मंथ रो डाटा नेइथिलु आउटपुट हमकु प्रेडिक्शन करिया को थिला सेम टाइम स्टैम्प ऑफ करंट ईयर रे कोठी केते पानी माटी तळे मिलुची सेटा प्रेडिक्शन करिया थिला आमे तापरे मैथमेटिकल मॉडलिंग रे जेमति करा जाय रिसर्च स्कॉलर माने करंती आजि दिन माने मध्ये करूछंती सेते बेले आमे ट्रांसफर फंक्शंस यूज करथलु एवं एएनएन पैरामीटर सेट करथलु ट्रायल एंड एरर मेथड रे तापरे एएनएन मॉडलिंग कलु आमे जेतिकी डाटा कलेक्शन करिथलु आ ताकू 70 भाग आमे ट्रेनिंग रे यूज करथलु जो थ्रू हमर दीटा इनपुट आउटपुट भीतर जो गुप्त रहस्यटा अछि ताकू आमे खोजिकिरी काढिया पैका मॉडलिंग रे 70% डाटा यूज करथलु एवं जो गुप्त रहस्यटा बाहरिला जो रिलेशन टा बाहरला मल्टी डायमेंशनल रिलेशन टा बाहरला नेक्स्ट रिमेनिंग 30% डाटा ऊपर आमे ताकू अप्लाई करिकि प्रेडिक्ट कलु ए जो कांसेप्ट टा एटी मॉडलिंग रे यूज होउची आजि पर्यंत भी सेही सेम दिनस रहउची 20 वर्ष तळे जहा होउथिला 2025 23 रे भी सेया चालीची आउ केवल एडवांस एल्गोरिथम चलची एल्गोरिथम रे एफिशिएंसी बढ़ी जाईची आ प्रेडिक्शन रो हमर जो एरर थिला ताकू केमिति मिनिमाइज करा जिवो लोकलाइज करा जिवो से सब टेक्निक गुडा 10 20 भीतर बाहरी जाईची आ ए वर्ष रे बेसी डिसरप्शन दो होईची जेनेटिक एल्गोरिथम सेटा आ गोटे लेवल को पळैची नुवा डाटा जनरेशन को पळैची सेही विषयटा हम आज कथा हबानी एटा गोटे पूरा नुवा टॉपिक को पळै जाईची किंतु डाटा थिले कोन हबो एया हबो ट्रेनिंग हबो टेस्टिंग हबो ट्रेनिंग रे कोन हबो ताको भीतर जो गुप्त रहस्यटा अछि ताको मैथमेटिकली कढा हबो टेस्टिंग बळे अप्लाई हबो जे प्रेडिक्शन करि पारुची कि नाही टेक्स्ट रो वॉइस रो सिंगिंग रो आज का दिन रे हमें एया करूचे सर गोटे मिनिट रहिला आगे आगे तो हमें वर्तमान ए जो एएनएन मॉडलिंग रे एटा हमरो अप्रोच थिला केमिति हमें कलु तापरे करि सरला परे हमें आउट नुवा टेक्निक यूज कलु जेनेटिक एल्गोरिथम इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम एएनएन बट बेस्ड ऑन द सेम इमिटिंग द नेचुरल प्रोसेसेस जेनेटिक एल्गोरिथम रे हमें जेमति गोटे प्रेडिक्शन करिया पेंका पॉसिबल सॉल्यूशन नबु एवं पॉसिबल सॉल्यूशन नेला परे ता देरे सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई करिवु क्रॉस ओवर म्यूटेशन अप्लाई करिवु फाइनली ऑप्टिमल सॉल्यूशन काढिवु तो एटा को हमें साइंस को भाषा रे हाइब्रिड जेनेटिक मॉडलिंग कहलु बा कोहा जाय एवं यार रिजल्ट को मध्ये हमें कंपेयर करिबा देखिबा जे कंपेयर कला पर हमें ई स्टैटिस्टिक्स पांचटा यूज कलु जे डिफरेंट मॉडल्स गुडा को कंपैरिजन पैका ये पांचटा स्टैटिस्टिक्स यूज कला परे ट्रेनिंग रेट हमर एफिशिएंसी आउ टेस्टिंग एफिशिएंसी क्लोज टू 87 रहितला जोटा भलो थिला माने एआई स्टैंडर्ड रे भलो थिला तापर हम कंपेयर करी देखिलु जो को मॉडल ता बेसिकली भलो प्रेडिक्शन कला एएनएन मॉडल भितरे बाइसन रेगुलाराइजेशन मॉडल सबुठार भलो प्रेडिक्शन करथिला एवं तार पांचटा जंक पैरामीटर इवैल्यूएशन पैरामीटर अन्य मानथुर भलो थिला किंतु ता थारु आहुरी भलो करथिला आमी जते बळे एएनएन संगरे माने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क संगरे एआई संगरे जेनेटिक एल्गोरिथम को ऐड कर देथिलु तार एफिशिएंसी आहुरी टिके भलो रहितला तो सेथुरु हमकु कंक्लूजन मिलिला जे एआई संगरे हम जेनेटिक एल्गोरिथम ता ऐड करला परे हमर टिके प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी ता भलो रहूची बोली हमें जानिलु एवं हमरो सीटा को हमें रिसर्च भी पब्लिश करलु तो एठुरु हमें फाइनली देखलु जे हमर मॉडल ता महानदी रिवर बेसिन रे नेक्स्ट ईयर पैका भलो प्रेडिक्शन करि पारला जे ग्राउंड वाटर लेवल ता कोठी केते तळे पानी ता रहिची सेटा हमें प्रेडिक्शन करि पारलु या द्वारा ए सक्सेस द्वारा हमें टिके उत्साहित होई कि आकु गोटे टूल रे पकेया पैका चेष्टा करलु एवं सेटा हम डेवलप करिया पैका चेष्टा करलु ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी रो फंडिंग्स माध्यम रे किंतु सेटा संपूर्ण हेई पारलानी बट जा हौ सेठु हमर गोटे एआई प्रति आग्रह बढ़िला एवं
ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଆଇ ରେ କାମ ନ କଲେ ବି ଯେମିତି କହିଲେ କି ମୁଁ ମେନଫ୍ରେମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଆମେ ଏଆଇ ରେ କିଛି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ଏବଂ କରୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ। ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଆମର ଟପିକ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯୋଉ ଆମେ ଜିନିଷଟା କଥା ହେଲେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ ଯେ ଏଆଇ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷ କଣ ହଉଛି ଭିତରେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଭାବୁଛୁ କି AI is like something is mystery, but yes ଆପଣଙ୍କ ଟକ୍ ରୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ କି AI ଏମିତି just brain को mimic करके brain को mimic କରୁଛି, and with explaining from the ANN models to तापरे adding करले आपण genetic algorithms जो द्वारा कि efficiency आपण बढ़ला आपण जो मॉडल करथिले। आई होप से मॉडल ला को अप्लाई करा जाओ इन ओडिशा महानदी ପାଇଁ जो ग्राउंड वाटर जो लेवल प्रोटेक्शन करिया पे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। I'd like to request Rupak to take over. Thanks Aditya. हमारा नेक्स्ट वक्ता होचंती श्री शिवाशिष पाढ़ी। तांका विषय रे मु टिके इंट्रोडक्शन दबाकु चाहिबी। At the helm of EPAM systems, Salesforce business, our distinguished speaker boasts over 2 decades of expertise in CRM, ERP, cloud, and analytics. Leading a global team, they specialize in delivering innovative solutions and driving business strategy, transformation, and innovation. With a mission to cultivate robust C-level relationships, oversee financial performance, and shape the GTM strategy, they bring a proven track record of revenue capture, account growth, and relentless passion for continuous learning. Join us in exploring the dynamic leadership and AI delivering business growth. Shri Sibapadi. Hey everyone. So Sunil, can you hear me? So yeah. Can hear you. Okay. I don't know. I can't turn on my video for some reason. Do you want me to, or is this fine? Yeah, Siva, if you can come on video, that's fine. Yeah. No, I can't. It says Oh, host that's has fine. Yeah, go ahead. You can't start your video because host has stopped it. I don't know what that means. I don't use hold on. Okay. Abhijit Samendra, can you allow video? Yeah, you are a host now. Yeah. Can you switch on your video? Yes, you are. Thank you, Siva. Yes, it's bright and early in East Coast. I am not a early guy. It's like saying to an NBA player, you have to wake up at 8 a.m. to practice. They hate that. For me, 6 a.m. every day I wake up at like 7. In the weekend, I don't leave my bed until 9 or 10. But I was so excited to join this. I was actually up since the last hour or so. First of all, the previous speakers, Dr. Nikunja Dash and Samar Pratap sir, amazing stories. Congratulations on what you're doing. I just feel lucky to be in the presence of such esteemed guest speakers and successful entrepreneurs. Just to give a little bit of intro, first of all, Rupak, what you said, I don't believe I do all that, but thank you for exaggerating whatever I'm trying to do. So I Odisha Barampur born, studied in Burla, IIM Kozhikode, been in US for in excess of 20 years now. And most of my career has been in the enterprise world. But I also, got my hands dirty, ventured into some startups. We actually built the Uber Eats version 5 years ahead of Uber Eats. The same model, driver delivery, remote GPS printers we used to provide in addition to, whatever, like the standard logistics management of Uber Eats. Actually, that was a pretty successful business. We had more than 10,000 businesses on the platform.
got to a point where I had to choose between paying mortgage or running that business. So I chose paying mortgage. Yeah, so, and thanks for giving the opportunity. I hardly have like 4 or 5 minutes to speak, so I'll keep it brisk. I'm here to talk about AI for business growth. And I can talk a lot of things that are in theory, but I chose to align on aspects that I actually am part of, or my company is participating in. Most of the AI applications we see today are in the consumer space, right? And I say that with the highest amount of respect. Enterprises, they haven't embraced AI. I mean, if you actually, there is statistics behind this. Less than 4% revenue of the overall North American enterprises are driven or impacted or influenced by AI. So that is a small percentage, and that too, it's not sourced. It's all influence, right? Like think of Cyber Monday, Black Friday, but if the overall prediction of global revenue generation as a result of that will be around $2.2 trillion, out of which less than $150 billion will be impacted by AI. And this is a segment where AI has been adopted at the highest level. So connect the dots there, right? If you think of Google, Meta, Amazon, these are the places, or people who run advertisements, these are the places, very consumer facing businesses, they are the ones that actually are applying AI. And even in those cases, it's at a very low level. So the journey to realize value out of AI is out there. It's going to be any number of years before you actually say AI is impacting each and every aspect of my life. And earlier, one of the speakers mentioned the money is in the win-win situation. So winning for enterprises, winning for businesses, and winning for customers, consumers is the end game here. We all need to understand that none of this should be done without the ethical and responsible elements being taken into account. So put all of that in the mix, and let's talk about a few use cases by specific industries. I'll start with retail. It's something we're actually working on. These are all the cases that either I'm involved in directly or indirectly, or my company with some customer, right? The first one is inventory management. Actually, I'll take a step back. First one is identifying suspicious behavior of customers in a retail store. So we have seen how Nirupara used to steal food for her kids, right? But there is elemental behavior associated with that, how she walks in and all of that, to today's San Francisco age, when people just fill their bags with all the stuff, not even worry about for a second what's going to happen, right? Because there are whatever protections in place. But those ones can actually be predicted if you look at the person that's walking in and walking the aisles. There is actually a company in Boston which does that in major events like big stadiums. They can predict where the next brawl is going to happen. So they send security guard to that place before the brawl happens. So similar technology is being put into retail stores now, and we just observe behavior and we predict. So there are multiple solutions that are being explored: send a security guard, send a robot, other aspects. But reducing theft by identifying suspicious behavior is one of them. Now connect that with if you are able to observe people. A person X is looking at a specific item for 30 seconds. If you know that person is highly likely to buy that product compared to a person who just walked past it. So next thing we're working on is electronic price display and inventory management that are connected with each other. System that tracks the inventory on the shelf, and there is electronic pricing that changes for each customer. If you are able to identify the customer, which happens in Amazon Go, or there are, Capper AI, you might have heard of that.
They can identify the customer, and as the customer is walking by that specific product, you can change the price. So that is the next level of pricing management. And of course, you correlate that with inventory management, something that's low on the shelf, you can keep the price higher and whatnot. Planogram analysis, all these standard elements are already in place for the last 10, 12 years. Amazon does, planogram analysis at the best possible level in their warehouses. People are learning and using that in retail stores as well. I always have believed the money is selling the shovel and not running after the gold. So why I said that, the next industry I'm going to talk about is travel, transportation, and hospitality. If you look at Expedia, Booking.com, Travelocity, Make My Trip, all of that, their money is coming from using the data that belongs to someone, right? And when AI happens, there are only there are many substrates between, call it the top application layer and the lowest infrastructure layer, or call it, the chip makers. There are many substrates, right? But most of these substrates will go away. The person who holds the infrastructure, meaning feeding, selling the shovels, and the person who is actually finding the gold, a few of them will be the ones that are standing at the end, right? So if you just to tell that story, this Travelocity, Expedia, other companies are making money by using data from companies like Sabre, which is an aggregator, and there is no imminent replacement for that. But Sabre ultimately uses data from American Airlines, Air India, all of that, right? So companies like Sabre, they are going to stand there when, I believe, Expedia, Booking, Travelocity, all these will go away in the next few years, because I don't see the value of them, adding value to the consumer, right? That's the end game. So simple AI comes tomorrow, uses Sabre, gives the best possible choice. Today, you struggle to plan your year's vacation, but if Sabre data can be used to say, this is the most efficient way, most economical way to plan your vacation for the entire year, imagine the power of that, right? So next industry, AI for healthcare and life sciences. I'll just say this, and I can keep going on all these use cases. I live this day in, day out, but I'll just tell one other use case and then leave time for questions if there is. Otherwise, we'll go forward. Sorry, 1 minute left. Okay, perfect. So AI, one of the things that's close to my heart is autoimmune disease. I mean, it's not a big thing, but I have thyroid, my wife has thyroid. It's a form of autoimmune disease, right? And for ages, autoimmune diseases have been suppressed by something called autoimmune suppressants, which basically means you have your cells that generate the right proteins. You have your T cells that are supposed to help them generate the right proteins, and Treg cells act as the suppressant of the immunity system. So when you take these autoimmune suppressants, they essentially act very myopically on that specific area of cells that was causing the right protein not to be generated, right? So that has been the case, which is not a good solution. You're just suppressing the symptom, not actually fixing the root cause. But with the help of AI recently, they have figured out, and again, this is very initial stages, but they have figured out that there are aspects of cell management that you can induce in the liver, which actually understands that this is a cell that I shouldn't destroy, and I should actually keep it. So things like this, which are truly, truly life-changing. I'm sure if you read about autoimmune, it spans the whole gamut of, starting with thyroid to Hashimoto to IBS to all kinds of, autoimmune diseases. Things like this are really impactful to not only this, the advancement in molecule identification, definition and identification in genomics.
a gentleman before me, I think Nikunj, was talking about genetic application, but using genetic data, the way they have advanced development of molecules, which is why you see every oncology company being acquired every other day for billions of dollars because of these advancements. Yeah, overall, I do believe there is going to be a time in the next 10, 15 years where the concept of population health management, where doctors are getting paid by patients' wellness, not by the number of patients they see. It's a government initiative which is getting started. A couple of cities in Europe have experimented. In US, they are looking at a couple cities to experiment with this, smaller cities. But I do believe population health management will become a reality. Yeah, I have many more use cases, but I'll end by saying right now we are still in the statistical inferential model driving everything. People do believe computational models more than inferential models. That's just the nature of, we are by definition rule-based creatures. Wolfram, if you follow, I respect him a lot. He's Stephen Wolfram. According to him, the money, the unlocking of value will happen when inferential models get close to computational models. Yeah, that's what I wanted to say. Yep. Anything questions I can take, or thank you so much for inviting me. Absolutely a pleasure. Thank you, Sibashis bhai. Gote short प्रश्न समस्त में पचार माने समस्त को नेगी पचारिबी कि आपण जेते कि आइडियाज और माने कॉन्सेप्ट्स देले सेटा बिजनेस रे केमती कन्वर्ट हे परिबो हम ओडिसा रे. Yeah, no, think of simple things like disease management, right? I will just stick to that for brevity purpose. But if you're able to, because see, infrastructure is available everywhere. What you need to do is you need to bring more and more data into that infrastructure so you can make sense of it. Now, whether it's happening in Odisha or whether it's happening here, of course, doesn't matter, right? So Odisha, the advantage is we can do the same things. Actually, let me expand that. One of the segments of healthcare, life sciences business is CROs, clinical research organization, the people that actually do the clinical trials. So for clinical trials, you need the people that are the right candidate to be part of the clinical trials, who are, of course, willing, but in addition to that, they should be the appropriate candidate to test the drug. Today, more than 26% of people identified through manual procedures are actually incorrectly identified. Now, apply that in Odisha, we all hear like some of the mishaps in the medical systems, not by intention, but by lack of data, lack of infrastructure and whatnot. So and those solutions are available. If you take that solution, Odisha apply karanto, because manpower is comparatively cheap, you can apply, and you can take people who are probably at a later stage of their disease, or maybe people who have to compromise in their daily lives, and start to experiment. It's not only for Odisha, I would say that's applicable for all states in India. But that's something actually I was talking with, I can't say the name, it's a startup company. They're working on a drug trial. It's run by an Indian person. But he is actually looking at his state to do this experiment to get that to the next step. So multiple use cases. Another thing, there are a lot of startups here. One of the things we're working on is connecting investors to startups through AI, right? It's a very opaque field. I mean, investors, you understand, between retail to HNI to UHNI to institutional investors, the spectrum ranges from anywhere, call it $500,000 worth to hundreds of millions of dollars, right? So we are working on an AI application where we're connecting these investors with startups with high affinity models, right? Some investor who is likely to invest in a startup like this.
We were working on this for a big asset management company, but point being, we can also do, like I saw so many brilliant minds before me. What if we can connect that with some of the investors within the Odia community? So, yeah. Thank you very much for the time. ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟଟା। Thank you for inviting me. Absolutely a pleasure. Thank you. Thank you everyone. Jai Jagannath. Santipriya sir. Yeah, Santipriya bhai action. Hope I am audible. Yes, you are visible. Yeah. Okay, so welcome to all. Let me share my screen. Before sharing my screen, actually, I'll moderate this session. So I'll quickly, I'll quickly introduce who are the speakers of this session and what is their timing, so that they can prepare accordingly, so that we will be in time limit. So first one will be by about Odia Generative AI overview, and then a technical workshop. So altogether it will be 30 minutes. So we'll take 30 minutes. So maybe Kirti can remind us if we cross 30 minutes. And after that, next session is from Vivekananda Babu and Deepak Panigrai. On topic will be HRMS scope, building an AI cost management feature of 5 minutes. Next is from Mr. Viswajit Nayak on MLAI typical application for 5 minutes. Next will be from Professor Panchanan Mohanty of 15 minutes. And last is from Mr. Vivekananda Pani. So that will be 10 minutes. So hope I have reminded all. So first I'll start from my session. So it will be a session of 30 minutes of overview with some hands-on. So let me share my screen. So can someone confirm is my screen is visible? Yes. Santipriya dekha jauchi. Okay. धन्यवाद. ठीक अछि हमें ओडिया रे कथा हवा जदी कोटी दरकार हैला हम टिके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करबा नले ओडिया रे किछि प्रॉब्लम नै मो पई मे बी इंग्लिश रे मो एते भलो कहि परिबेनी ओडिया रे किछि प्रॉब्लम नै ओडिया जनरेटिव एआई कोछन ओडिया कोन मु कोन से एक्सक्यूज भी देबिनी जे मु ओडिया कहि परिबेनी बोली okay let's start so ame actually Odia Generative AI so इतरे हम एक्चुअली देखिए हमें कौन पे करूछु सो दिस विल बी माने गोटे ओवरव्यू देबी मु ओडिया जेनेटिव ए रो हमरो इनिशिएटिव एंड इट विल बी हमें सपोर्ट करिया पे संबित शेखर मो सहित अछंदी आ एसके सॉय देवाशीष दळ से माने हमरो इंटर्न्स एंड से माने हमको हैंड्स ऑन रे साजे करिवे तो फर्स्ट स्टार्ट करिया जेनेटिव एआई आ हमें कौन पे ओडिया जेनेटिव एआई स्टार्ट करलु कौन तारो reason behind it so eta hochi agenda ame overview तापरे हमें डेमो देखिबा so डेमो रे मेनली हमें जेमति कहूछु जे आगुरु भी सब ऑथर माने प्रेजेंटर माने कहिले जे हमरो सबटु मेजर प्रॉब्लम होची डेटा एना डेटा जदी नथिबो तले हमें किछ भी मॉडल कर परिबानी आ सबटु बड़ प्रॉब्लम होची जेमति कहिले कि इंग्लिश इज ए डोमिनेट करछि चारियाडे तो ओडिया रो हमरो डेटा नाही तो हमें जहां भी एप्लीकेशन करिया पे चाहिबा त हम पाखरे डेटा नाही तो डाटाटा हम करबा कोन डेटा नाही कोइ कि तो बसिले होबनी तो हमें केमिति डाटाटा प्रिपेयर करूछु मॉडल पई आ से विषय रे हमें टिके कहिबा जे हमरो ओलिव स्क्रैपर कि ओलिव फार्म सो जो गुडा को हमरो ऐप गुडा को हमें डेवलप करिछु तो हाउ इट वर्क्स केमिति से गुडा सब काम करचंती आ केमिति हमें मॉडल को फाइन ट्यून करछु एलएलएम मॉडल आ तार केमिति इन्फ्लुएंस करछु तो जहाँ भी हमें थ्योरी करिवा ताकू प्रैक्टिकली हमें डेमो रे भी देखिवा तो मते लागु चेटा टिके इंटरेस्टिंग हेई पारे आउ
जेतु आमे पूरा जनरल रे जीवा बेसी टेक्निकल को आमे जीवानी तो किछटा जिंस जेमती कहली जीवा पूर्वरु किछटा टर्मिनोलॉजी आमे यूज करिवु स्लाइड रे तो आगुरु टिके मु सेडा क्लियर कर दउची जेमती आमे कहबा एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो कि एएसआर फॉर ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन जेन एआई फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोरा फॉर लो रैंक एडॉप्टेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सो ए टर्मिनोलॉजी गुडा को आमे परवर्ती स्लाइड रे यूज करिवा तो सेति मु टिके एटा क्लियर कहि दउची फर्स्ट क्वेश्चन है आमे हमर माने कोन पय एटा स्टार्ट करलु माने व्हाट इज द मोटिवेशन आपण देखिथिबे आजिकली तो माने हॉट टॉपिक चैट जीपीटी जे भी कले आसीबो चैट जीपीटी रे तो फर्स्ट जेतेबे चैट जीपीटी असला समस्त को बोले आमे भी यूज करिया स्टार्ट करलु काहे आमे तो सेतरे काम करछु तो चैट जीपीटी रे गोटे मेजर प्रॉब्लम आमे देखिर माने व्हाट आई ऑब्जर्व माने मु देखिली कोन ना चैट जीपीटी बहुत भलो काम करछि ठीक अछि इंग्लिश पय किंतु ओडिया रो तो आपनकर किछि कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड आपन इंफॉर्मेशन ताको पचारिबे चैट जीपीटी कहि परियो नेगुडा को सब एग्जांपल मु जेंति आपनकर देली आपन ताको पचारंतु बरहमपुर रो सबुटारु प्रसिद्ध खाद्य कोन बरहमपुर लोक माने कहि परिबे तो बहुत अछंती किंतु से चैट जीपीटी मते कहला मोर केते आईडिया नै मु से विषय रे किछि जाननी से याड साइड कहला धर मु ताको पचारली अच्छा मु केमति रसगोल्ला तयारी करिवा से चैट जीपीटी रो तारो एमती बुले कि माने these are हम जोटा कहू कि माने इन माने कॉन्टेक्स्ट नाही कॉन्टेक्स्ट थोड़ा से ताको मते एमती आंसर देला तो फर्स्ट तीनटा रीजन हम मोटिवेशन करछला ए जिनसटा करिया पई तो फर्स्ट मोटिवेशन होची जो जदियो एलएलएम अछि लैंग्वेज मॉडल अछि आ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज मॉडल अछि जेगुडा को सपोर्ट करूची डिफरेंट लैंग्वेज को स्टिल सेटा एक्चुअली सेटा मोस्टली डोमिनेटेड बाय द हाई रिसोर्स लैंग्वेज जो लैंग्वेज रो बहुत डाटा अछि सेत पय सेटा भलो काम करछि मेजरली इंग्लिश अछि काम करछि कि आपनकर जो डाटा रे धर आपनकर फ्रेंच हला कि जर्मन हला इवन सेथरे भी एते भलो काम करनी आजिकली जानिथिबे सब यूरोपियन कंट्री तांको निज निजरो चैट जीपीटी कहउचंती जेमति हमें फिनलैंड रे फिन जीपीटी करचंती स्वीडन रे जो माने थिबे जानिथिबे तांकर जीपीटी एसडब्ल्यू सोई गोटे करचंती तो सब कंट्री तांको निज निजरो करूचंती से माने काहे कि ना द मेजर प्रॉब्लम हला से लोकल कॉन्टेक्स्ट को से बुझी पारनी काहे से डाटा नाही आ जेतु सेटा बिजनेस पर्पस पई हेछि तो मोस्टली इट विल बी से माने इंग्लिश टा को ही फोकस करचंदी ऑल्दो धीरे धीरे सेटा इंप्रूव होछि माने आई नो म कहबिनी जे एटा गोटे मेजर डिमेरिट तो फर्स्ट मोटिवेशन सेकंड मोटिवेशन हला आमो लैंग्वेज को जदी भी से सपोर्ट करूछि सेटा कॉन्टेक्स्ट बुझी पारनी जेंति आपन को देली बहुत एग्जांपल दे पारि आपन निजे भी ऑब्जर्व करिथिबे जे भी यूज करथिबे तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट को बुझी परिबनी कहीं तार से भाया इनफॉरमेशन की तार नॉलेज नहीं मे बी सेटा धीरे धीरे इंप्रूव हो आई डोंट माने मो डिस्करेज करिवेनी थर्ड थिंग है जदि आपण ए मॉडल गुडा यूज करिया पय चाहिबे ताले आपन को पैसा देबा को पड़ियो फर्स्ट माने सेटा सब्सक्रिप्शन फी अछि आपन को फ्री रे किछि देबेनी आपण मे बी $10 की आपन को फ्री रे मिलियो तापर आपन को पैसा देबा को पड़ियो तो आमे फ्री रे केमति करियो तो समस्त यूज कर परिबेनी आपण हो किछि कले कंपनी माने कले तांकर अकाउंट नेले आउ गोटे जिनस हूँ आपंकर प्राइवेसी आपड़ जो डाटा दौरान चैट जीपीटी की हो कि जो भाया कमर्शियल मॉडल को डाटा दौरान आम जाने से डाटा को लेकिन से कौन यूज कर ऑल्दो से कहते नहीं आम डाटा को लेकिन आम कि मॉडल ट्रेन करनु कि यूज करनु बट दैट इज ए क्वेश्चन आम जानू से डाटा आम कौन यूज होची तो से गवर्नमेंट हो कि आपंकर कौन मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन हो कि डिफेंस हो तो क्रिटिकल जो कि सेंसिटिव इनफॉरमेशन गुड़ाक सेयार लोक करना भी लोक डरुंट आप गोटे ओडिया रे आप गोटे स्टोरी लिखुंट कि सॉन्ग लिखुंट कि आपंकर निजर किसी ओरिजिनल जिनस गुड़ाक अच्छी तो आप डरवे सेयार करने मुझे जानी से कौन यूज कर तो दैट इज अनदर सो दीज आर माने एगुड़ाक किछिटा जिनस को आम मोटिवेट कला जे ठीक अच्छी तो आम एमती करें कि ना गोटे आम लैंग्वेज सो actually it doesn't allow me to switch my screen okay हाँ ओके तो नेक्स्ट होची हमरो ओडिया जनरेटिव एआई रे हम एक्चुअली करूछु कोन आमे मोस्टली जेमति कहले आमे स्टार्ट करतलु इनिशिएटिव नेकरी जे आमे ओडिया लैंग्वेज ऊपर काम करिया ओडिया रो मेनली आमे एलएलएम तयारी करिवा आ जनरेटिव एआई रो
ऊपर रिसर्च करिया तो हमरो थिला कोन उद्देश्य थिला मिशन टा होची हमरो जहाँ भी है टेक्नोलोजी हो कि सॉल्यूशन हो आमे हम ओडिया लैंग्वेज पे करवा आ जोटा कि बेनिफिट हो हम कम्युनिटी पे सो दैट वाज द सोल पर्पस माने हमरो मेन ऑब्जेक्टिव थिला सेत पे आ एथिरा हमरो किछटा जेमती इनिशिएटिव आमे नेइथलु जे आमे कोन करिया फर्स्ट आमे स्टार्ट करथलु जे ठीक अछि आमे किछटा मॉडल फाइन ट्यून करिवा किछटा प्री ट्रेन मॉडल करिवा आ किछटा हमरो वेब ऐप बनेवा तो टिके मु खाली देबी जे मॉडल फाइन ट्यून आ प्री ट्रेन भितर जदी कि माने मे बी समस्त टेक्निकल नथिबे तो हमरो मॉडल प्री ट्रेन रे आपनकर पूरा स्क्रैच रु आपन डाटा नेले नेकरी डाटा आपन गोटे मॉडल टा बनेले बिल्ड कले गोटे लैंग्वेज मॉडल आ फाइन ट्यून रे आपनकर ऑलरेडी गोटे किछि मॉडल अछि एक्जिस्टिंग मॉडल अछि ताकू नेकरी आपन किछि डोमेन स्पेसिफिक हो कि आपनकर निजो डाटा ऊपर नै ताकू फाइन ट्यून करिवो तो आमे फर्स्ट स्टार्ट करतलु फाइन ट्यून रो आमे स्टार्ट करलु तापर आमे कहलु देखिबा आमे धीरे धीरे प्रोग्रेस करिवा सो ए गुडा को इनिशिएटिव थिला हमरो आ टीम जेमति मु कहउतली तो आमे किछि जण आपण तो मोस्टली हमरो ओडिसा एमएल कम्युनिटी रो मेंबर माने अछंती इतरे जो माने आमे नेकरी आमे स्टार्ट करतलु एंड तापरे आमे किछि जण इंटर्न्स को भी नेइथिलु से माने दे आर वर्किंग स्टिल से माने करूचंती आ आज भी माने सपोर्ट करिवे डेमो रे सो किछि आमे इंटर्न नेइथिलु तापरे धीरे धीरे किछि जण वॉलंटियर भी दे हैव से माने इंटरेस्ट देखेले आमे जॉइन करिया पई अदर देन ऑल्दो आई थिंक सम ऑफ देम आर आल्सो माने लिसनिंग टू दिस माने भी एटा देखुतबे सो से माने भी हम सहित जॉइन कले एंड सेटा को से माने अन्य इंडिक लैंग्वेज पई भी करिया पई दे आर मोटिवेटेड सो it's just started as a team. Our major support, I think, from Odia ML, Odias in artificial intelligence. So I'd like to thanks to Anjan and all the members from this community. So they have our major support. So I'm actually start कला पर हमें कौन कलु धीरे धीरे जमती कहली हमें किछटा स्टार्ट कलु जमती हमें डाटा सेट बिल्ड कलु मॉडल तैयारी कलु तो हमर गोटे एम थिला एबे भी अछि जे हमें जहां भी करूछु जिंस गुडा हमें ओपन सोर्स करछु तो हमर कोड हैला से गुडा सब गिटहब रे अछि जेतिको मॉडल अछि सब हगिंग फेस रे अछि सो ऑल विल बी अवेलेबल तो जे भी चाहे ताको रिसर्च पई यूज करि परिबे तो ता भीतर हमें बहुत मॉडल रिलीज कर दिलुनी इवन काली भी गोटे मॉडल हमें रिलीज करथलु तारो डेमो हमें देखिबा अछि तो so these are the models our activity mostly hame jaha koruchu se major activity hoche amaro research koruchu enti scientific publication koruchu mentorship koruchu app development koru workshop ki hackathon re participate koru so eguda ko so major activity am koruchi so more details am website re bi ame deichu au main ए विषय नेक्स्ट आम टे डेमो देखा मत भी कहुई आम रनिंग आउट ऑफ टाइम जाऊँ तो टे जल्दी करने फिनिश करने तो मुझे ट्राए करी बेसी टाइम नबनी तो आमर जमी आमर मोस्टली आम गोटे एलएलएम मॉडल जो बिल्ड करवा तो फर्स्ट आई गो थ्रू द पाइपलाइन तो मॉडल पाइपलाइन टा कौन तो फर्स्ट हूँ डाटा प्रिपेरेसन करने पड़ो डाटा माने हम जोटा को कहूँ कि इंस्ट्रक्शन सेट लेट्स प्रिपेयर सम इंस्ट्रक्शन सेट गुडा हम तैयारी करवा तापर हमें मॉडल फाइन ट्यून करि परिबा कि डाटा प्री ट्रेन करि परिबा दैट इज अप टू अस तापर हमें मॉडल इन्फ्रेंस करवा इवैल्यूएशन करवा तापर हमें इन्फ्रेंस करवा तो एटा पाइपलाइन टा तो एई पाइपलाइन टा एक्चुअली हमें डेमो रे आज देखिबा जे हमरो एई जिंस गुडा को केमती होउची हमें डाटा टा केमती प्रिपेयर करचू तापर मॉडल फाइन ट्यून केमती होउची आ इन्फ्रेंस केमती होउची तो एई थ्रू एक्चुअली नेक्स्ट आमे किछटा डेमो देखिबा तो मु मॉडरेटर को टिके रिक्वेस्ट करिवि हमरो एसके सहित आ देवाशीष दल तांको भी टिके ग्रांट देबे से माने तांको स्क्रीन भी शेयर करिवे तो किछटा डेमो आमे देखिबा आ इन बिटवीन जोटी दरकार ले डिस्क्रिप्शन आई विल स्टार्ट सो नाउ आई रिक्वेस्ट सहित टू टेक ओवर तो आई विल स्टॉप माय स्क्रीन तो आमे ठीक Yeah, thank you very much, Santu. So am I audible? Yes. Yeah, good afternoon. Yeah, my screen visible actually. You confirm the Yeah. Okay. So like जंते हम सब relate कर पाता है जैसे कि researcher over here अचंती जंते शांति प्रिया सर को लाओ most of the researchers समस्त को उतरे के लाइक okay तो जैसे most of the researchers समस्त को उतरे के like data is the real need now और जैसे कि large language model neural networks हो भी जहाँ भी हो हमको सब data hungry
So researchers can relate to like how data is the real need to train any kind of model or anything right now. So ଆମେ ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ like warehouse ଗୋଟେ create କଲୁ କି like କେମିତି ଆମେ data collect କରିପାରିବା. In fact, not even collect କରିପାରିବା in our own languages like Indic languages, Hindi ରେ ହଉ or Odia ରେ ହଉ, such that ଆମେ ଆମ large language model को train କରିପାରିବା. तो ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ build କଲେ Olive Chapter. ତାକୁ demo ଆପଣଙ୍କୁ show କରିବି ଏବେ. एगुड़ा सब मॉड्यूल्स फ्री सोर्स अवेलेबल अछि हगिंग फेस रे तो समस्त एक्सेस करि परिबे इवन इफ जो मन चाहन सकते चेक करे ପାଇଁ so this is the app like how at different modalities I include कलो like someone if someone wants like URL दवा ପାଇଁ चाहछि तो से URLs दे परिबो or like if someone wants document तो document भी दे परिबो input document and even documents PDF में text document format or even docs format रे हमें documents दे परिबो आ ता थ्रू हमें data extract कर परिबो so mostly एटा हमरो Olive Chapter काम थिला कि like आम टारगेट थिला pre-train ओडिया मॉडल तो डाटा बल्क रे दरकार हमको ओडिया किछि भी pre-train स्क्रैच बिल्ड करे ପାଇଁ हमको बल्क रे ओडिया डाटा दरकार मोनोलिंगुअल डाटा तो सही पे हमें Chapter तक build करू such that from different variety of sources we can extract Odia data. So ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ demo ଦେଖେଇବି like how does it work. ଏଟା access link ଅଛି और let's suppose someone gives an URL. ଏଟା ଆମେ URL ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖଉଛି URL ରେ contents ତାର ଏଟା Odia contents ଅଛି तो URL ର ଅଛି कि ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯାଏ तो ସେଇଟା like ତା ଉପରେ ସବୁ ଓଡିଆ ଡାଟା ସବୁ ଅଛି like ଓଡିଆ ଟର୍ମସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆଣି କେମିତି ଆଣିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଲିଙ୍କଟା ମେବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେଟ୍ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରାପର କୁ ଯିବା Olive Scrapper କୁ ତାକୁ ଆମେ URL ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା URL ସେକ୍ସନ ରେ URL section में different categories रखले if someone wants like he can give a news articles poems magazines others तो से जहाँ भी modality select कोई भी category हो फिर data extract करता है even then we will provide the link हमें link पे paste करना है then enter press कर ले okay so enter press कर लो एठी हमारे text वाला extracted आसु सब text जहाँ भीଥିଲା सेठी ओडिया text ना हमको return करूची से then ଆମେ ୟାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା as an text or JSON format ଯାହା ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବା Olive Scrapper କାମ କରୁଛି let's suppose ଆମେ ଯଦି someone ଚାହୁଁଛି କି document ଦେବା ପାଇଁ then ଆମେ ତାକୁ documents ରେ provide କରିପାରିବା document ଅଛି I saw it like document report here. Wait a second. So, मैं document वितरे ओडिया text copy करके आने की रखती ओडिया Wikipedia रो तो ये text रो ओडिया text रो रखा ही थी तो then again हमें सही text को provide कर ले सकते हैं now हमें आपको दे चाहिए ओडिया text PDF था then enter मारले तो से हमको text extract करके आने लगा it's super fast and super easy like okay तापर हमें तब चाहिए save भी करी परिया यदि ये चाहिए save भी करी परिया मतलब text format में Thomas Scrapper is a huge success like we can create monolingual data as much as we want like one click रे हमको जितने हमें data चाहिए हम generate करके दे परिया even documents से like 200 MBs of documents से handle कर परिया multiple pages document handle कर परिया and URL पे हमें facilitate करते हैं different scrap करके आने परिया okay then I'll just go to these are the facilities we give providing our Olive Scrapper okay Olive Scrapper पर हमें decide कर ले कि like okay हमको जहाँ भी pre-train ये हमको वाला pre-train section पे then again हमें fine tune करिए fine tune करिए हम समस्त में जहाँ चीज़ like दरकार instruction set किसी भी fine tune करिए model हमको mainly required है data set तो हमें data set create करिए Odia language mostly Indic languages में हमें create कर ले Olive farm तो सेटा हम large language model पे instruction set in Indic language support करिए हम लोग सेटा में create कर ले web app टा मुझे बता लिंक कुछ बा
LLM instruction where time the interface time एटा सब hosted अछि Hugging Face spaces रे तो जे के जदि चाहउछंती एको यूज करिया ପାଇଁ तो आफिकी यूज करि पारन सेटा को बट देन अगेन याको यूज करिया ପାଇଁ तांको ओपन एआई की दरकार पड़िबो मु कहू जे स्टार्ट करे कोन तो एटा करेंटली मल्टी इंडिक लैंग्वेजेस रे हिंदी सीमलेसली से कन्वर्ट करछि किछि इश्यूज नै हिंदी रे बट ओडिया को a bit little difficulty because एटा हम बैकएंड रे ये चैट जीपीटी ओपन एआई रे चैट जीपीटी मॉडल यूज करछु and then again chat gpt is we all know like fails to infer in odia languages so that's why is the issue right now तो हम ताको भी सॉल्व करे पे हमें जो टाइम चैट मॉडल भी हम निजर चैट मॉडल रेडी कर सारछु तो हम ट्राई करबो कि लाइक सेटअप जल्दी इंटीग्रेट कर दवा ओडिया इंस्ट्रक्शन सेट में तो एटा काइंड ऑफ सेल्फ लूप हे जिवो लाइक हां एबे हमें याकू ये करि परियो बोली सेल्फ लूप थोड़ा ऐड करियो तो हमें फिर ट्राई करबो कि लाइक हां सेटा हम जहां भी चैट मॉडल हम डेवलप करछु तो इंटीग्रेट करियो तो एबे ए मॉडल जो हमें याकू क्रिएट करथिले only farm को से different modalities होची let's suppose some आप पाखरे ची URLs पाखरे डाटा अछि और context से URL थ्रू प्रोवाइड करे अपन चाहते और डॉक्यूमेंट्स थ्रू और प्लेन टेक्स्ट थ्रू तो हम तंगु तीनटा modalities और तीनटा फीचर्स अवेलेबल करोची कि अपन URL दियन तो अपन डाटा और PDF डॉक्यूमेंट दियन तो प्लेन टेक्स्ट अपन डॉक्यूमेंट तो अपन डाटा then से डाटा ऊपर हम मॉडल क्वेश्चंस जनरेट करबो and in fact answers जनरेट करबो which will act as a data set for training our large language model तो से हम बैकएंड रे चैट जीपीटी हम यूज करछे एटा डेमो देखै दै छन आपन एटा हम ओनली फॉर्म रो वेब एपटा तर इंटरफेस टाइम की आपन साइड रे आप डिस्क्रिप्शन पढि परिबे वेरी इंटरेस्टिंग ए तापरे हमर एठी तीन चारटा फीचर्स अछि हम आपन जल्दी कहि दउ छै अपन लैंग्वेजेस इफ समवन सिलेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेजेस तो तांको इंग्लिश रे जनरेट करिवो डाटा सेट लाइक हां इंस्ट्रक्शंस एंड इफ समवन सिलेक्ट्स हिंदी तो हिंदी रे ओडिया पे ओडिया रे मु एठी इंग्लिश और हिंदी पे टेस्ट करिवो बस देन अगेन हम ओडिया रे ताको ओडिया रे हम या प्लान करछि कि लाइक इनिशियल स्टेज रे हम प्लान करथले इंग्लिश जनरेट करि कि हमरो एनएलपी रो मॉड्यूल्स अछि ट्रांसलेशन मॉड्यूल ताको हम ओडिया रे ट्रांसलेट करबा बट देन अगेन एबे हम चैट मॉडल रेडी अछि तो हम ट्राई करबा कि लाइक निजे रो चैट मॉडल को इंटीग्रेट करबा सो दैट ओडिया रे हो तो एबे हमरो रेडी अछि इंग्लिश और हिंदी हमें लेट्स सपोज समवन सिलेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज आउ ताको हम एठी अवेलेबिलिटी दोछि कि लाइक से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट चूज करि परियो प्रॉम्प्ट इन द सेंस लाइक गिव कॉन्टेक्स्ट जो टाइप टू से कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए जदि से इनपुट टेक्स्ट चूज करूछि और जदि यूआरएल थ्रू कॉन्टेक्ट करबा चाहूछि लाइक तंको वेबसाइट रे मो डाटा अछि तो मु ताको देबा चाहूछि कि वेबसाइट थ्रू से डाटा को फेच करि आनी ताउ पे इंस्ट्रक्शन से जनरेट करू तो से यूआरएल चूज करियो और जदि का पाखे डॉक्यूमेंटेड डाटा अछि तो से डॉक्यूमेंट चूज करियो लेट्स सपोज मु इनपुट टेक्स्ट नु चाहिए फॉर ऑल जनरेशन यूज केस तापरे एठी अछि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक हम मॉडल केतरा क्वेश्चंस जनरेट करियो केतरा इंस्ट्रक्शंस जनरेट करियो हमें याको एटा भी स्केल अप करि परियो अप टू 20 बिकॉज़ देन अगेन चैट जीपीटी जो यूज करते के लाइक हां तार भी गोटे कॉन्टेक्स्ट लेंथ रो इश्यूज अछि तो हमें ताको मिनिमल रखे एबे 20 तो इन वन शॉट से 20 टा क्वेश्चंस जनरेट कर परियो लेट्स सपोज आई स्केल डाउन टू 10 हमें फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक जहां भी इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करतो के से क्रिएट करतो तार फॉर्मेट कोन रहतो आइदर इंपेरेटिव रही पारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस और आइदर क्वेश्चंस फॉर्मेट से डेवलप कर परिबा हमें डाटा माने जहां भी गिवन डाटा देतो से हम क्रिएट करके देबो आइदर क्वेश्चंस फॉर्मेट और इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर्मेट लेट्स सपोज क्वेश्चंस दीजिए उन पर then again ChatGPT models are not free which is like quite a shortcoming for every researcher over here तो जहाँ भी भलो मॉडल्स गुड़ा अच्छी से हमको फ्री में दोगे ना तो ओपन एआई की तो दरकार ही पड़ेगा या फिर बट अगेन हम जो मॉडल डेवलप करते हैं सेटा फ्री है तो सेटा को हमें इनफैक्ट करी पड़ेगा ओके पेस्ट करला पर हम नाउ रेडी अछि इंग्लिश लैंग्वेज इनपुट टेक्स्ट रे हमरो 10 टा क्वेश्चन जनरेट करियो क्वेश्चन फॉर्मेट रे नाउ आई सबमिटेड सबमिट ही साला पर एटी गोटे प्रॉम्प्ट बॉक्स हमर रेडी के आथिबो लाइक हां एटी प्रॉम्प्ट है हमर रेडी अछि प्लीज इनपुट द टेक्स्ट हियर हमें मॉडल को कौन टेक्स्ट देवा चाहूँ सेटा हमें इनपुट करबा तो बेसिकली मु बालेश्वर बिलोंग करूची तो मु बालेश्वर किसी लेट्स सपोज मु जियोग्राफी ऊपर दोची तो से बालेश्वर जियोग्राफी ऊपर इंस्ट्रक्शंस जनरेट करके देबा है क्या लेट्स सपोज मु एटा कॉपी कर ले डाटा
डाटा मैं कॉपी कर ली और डाटा को पेस्ट कर लिया। तो एबे मोर ए जहां भी डाटा हमें फीड कर जाए को इनपुट टेक्स्ट रे से ता ऊपर जनरेट करके दबो। तो लेट्स सपोज मैं सबमिट कर ली, देन इट्स नाउ ready to generate the instructions। generate instructions बटन पर जब आप क्लिक करिवे तो मॉडल एबे रन हो जी। तो बैकएंड रे ChatGPT GPT 3.5 से रन हो जी, लाइक 8 इनपुट टेक्स्ट ऊपर से क्रिएट कर जाए इंस्ट्रक्शंस। किसी टाइम लगे because then again because free CPU also, so after that, so these are the instructions generated on the given interest. What is the latitude and longitude range of Palliser district? What is the average altitude of Palliser district? What is the total area of Palliser district? So these are the different kinds of instructions generated over the data given in the input. So आमे बे select करी पारिबा, it will be checkbox में देख सकते हैं if someone wants तो से डिफरेंट। लेट्स सपोज एटा ठीक আছে मैं तो से आपको मिस करके अलग काम को चेक कर सकते। लेट्स सपोज मैं पांचटा क्वेश्चंस को सिलेक्ट करछि ता ऊपर एबे मैं मॉडल को देली कि या ऊपर हां ठीक अछि क्वेश्चंस को जनरेट कर देला मॉडल। बट अगेन हमें जब हमें ट्रेन करबा तो हम क्वेश्चंस ऊपर आउटपुट भी दरकार, तो हमें ता ऊपर जनरेट आंसर्स ऊपर प्रेस करबा। तो से एबे मॉडल रन करछि, गिवन इनपुट क्वेश्चंस से ट्राई करछि जनरेट करबा आंसर्स। time again because yeah, then again it's ready. What is the average altitude in Palliser district? So the average altitude returns in an answer. So this is the format in which we train any large language model. We will be training llama model. It's because it's open source. So instructions output and input. So these are the return instruction and its output. What geographical features can be found in the southwest of Palliser district? Yeah, this is, you can find the Bay of Bengal and Suvarnareka river as well. हमें एबे ताको हमरो फॉर्मेटिंग हे गला त हमें ताको जेसन रे सेव कर प्रेस कर ले वन क्लिक रे हमको सेव करके देबो छै। एंड इवन हम जदी शहीद 5 मिनिट आउ रहला। या श्योर मु इट इज जस्ट इन प्रोग्राम काम हे गला एटा रे। तो देन अगेन एटा इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट एटा रेडी हे गला एबे मॉडल को ट्रेन करिया था। आई थिंक then I'll just call Devasis. He will be taking over and he will be like giving demo for role play and all of the features we have created. Okay, thank you everyone. Thank you, Said. Yeah, Devasis, you can take over. Just yes, so hello, I'm Devashish. Thank you, Shahid. So I'll just discuss data extraction and so I'll discuss data extraction. Data extraction and the performance of our model. So the first, the prathame role play data set डिस्कस करिवि। तो रोल प्ले डेटा सेट हम कोन पय दरकार जेमति कि हमें मॉडल को सिखै पारिबु जे दीटा एक्चुअल लोक केमति कथा वार्ता कोंती, हमें किछटा स्पेशलाइज्ड रोल नै पारिबो तांका भीतर गोटे कन्वर्सेशन हमें सिमुलेट कर पाइ। तो एठी हमें कोन करूछु, एठी हमें चैट जीपीटी को यूज करिकि दीटा लोकन भीतर कन्वर्सेशन सिमुलेट करछु। तो प्रथम चैट जीपीटी होची गोटे यूजर, सेकंड चैट जीपीटी होची जने से यूजर रे असिस्टेंट। तो से यूजर गोटे क्वेश्चन पचारियो नले किछ गोटे इंस्ट्रक्शन दबो, असिस्टेंट ता अकॉर्डिंगली तार एक्शन हबो। जदि से इंस्ट्रक्शन पचारला सी तार ओबे करिवो, जदि से क्वेश्चन पचारला तार सी तार आंसर। तो एमते यूज करिकि हमें गोटे डेटा सेट जनरेट कलु। तो एटा होची गोटे सैंपल डेटा सेट। तो एठी हम देखौची हमें जो डेटा सेट जनरेट करछु, तो हमें जदि हमें जतले फंक्शन रे पकेइलु किछि भी गोटे रैंडम रोल, एठी यूजर होची फार्मर और असिस्टेंट होची साइंटिस्ट। आउ तांका भीतर टास्क होची जे साइंटिस्ट हेल्प करियो फार्मर को, फार्मर रा पोटैटो रा कल्टीवेशन जाउ जे ताकू मैक्सिमाइज केमति करबो। तो इवेंचुअली एठी हमर आसी गला जे फार्मर पचाउची जे हमकु गोटे फार्मर पचाउची साइंटिस्ट जे आपण गोटे ड्रोन सिलेक्ट करंतु जार भलो कैमरा अछि, से कैमरा यूज करिके मु मोर
क्रॉप्स ऊपर भल सर्वेलेंस रखि पारे तो साइंटिस्ट कहला जे ठीक अछि मु गोटे प्रॉपर पैरामीटर्स देखि कि भल गोटे ड्रोन सिलेक्ट तो सेकंड क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन जहा फार्मर देला होची make sure that the drones has the advanced sensors that those are needed that to monitor the crop health in real time tapare scientists accordingly action nela तो एटा फर्स्ट हे गला हमर रोल प्ले डेटा सेट रोल प्ले डेमोन्स्ट्रेशन सेकंड होची ऑलिव व्हिस्पर तो एटा बिल्ट हेची ओपन एआई द्वारा रिलीज करा हेतिया व्हिस्पर मॉडल सेप्टेम्बर 2022 रिलीज हेतला तो बेसिकली एटा होची ऑडियो रु टेक्स्ट कन्वर्शन ताकू किछि भी गोटे ऑडियो देले सीए ताकू टेक्स्ट रे कन्वर्ट कर दबो तो आमे हगिंग फेस रे थिबा किछिटा ओडिया रो डेटा ओडिया ऑडियो डेटा यूज करी कि आमे मॉडल टाकू फाइन ट्यून करछु तो फाइन ट्यून करले परफॉर्मेंस ठीक आछि हमरो तो एठी मु डेमोन्स्ट्रेट करिवि तो एटा होची हमर एक्चुअल ओडिया टेक्स्ट तो मॉडल हमरा प्रेडिक्शन करूची सेम एग्जैक्टली सेम तो आ गोटे एग्जांपल देखिबा तो एटा होची हमर एक्चुअल जोटा टेक्स्ट अछि आ मॉडल परफॉर्मेंस होची मॉडल आउटपुट होची एग्जैक्टली द सेम तो मॉडल ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक करूची तर हमें वेब ऐप भी बनै देछु जे कोनोसी किछि भी गोटे ओडिया ऑडियो आपण इनपुट देके देख परियो सीता को टेक्स्ट रे कन्वर्ट कर तो एठी हमें सपोज से ऑडियोटा हमें देखि देखिले तो हुए तो पाखापाखि 10 रु 20 सेकंड लागिवो किंतु परफॉर्मेंस तार ठीक आछी एटा होची ऑडियो जा हम इनपुट देइछु और एटा होची मॉडल आउट सेटारे गंगासना करी पळेले जोटा कि एग्जैक्टली जहा ऑडियो रे अछि तो हम पाखे इवेंचुअली डेटा आसिला परे हमें करूछु कोन तो डेटा रा हमें किछि तो यूज करी तो हमें सब जक डेटा यूज हमें डेटा नौछु आ गोटे बेस मॉडल अच्छा तीटा को यूज करी कि हमें मॉडल को ओडिया लैंग्वेज किबा किबा अन्य इंडिक लैंग्वेज पई हमें ताको फाइन ट्यून करतो जेमति कि हम जेंते शांति सर कहले जे चैट जीपीटी तार परफॉर्मेंस बेसी भलो नै लो रिसोर्स लैंग्वेज जेमति कि ओडिया पे तो सेति पई हमें बेस मॉडल्स को फाइन ट्यून करी कि हमें तार लो रिसोर्स लैंग्वेज पई तार परफॉर्मेंस को हमें इंप्रूव करतो तो हमें एटा ट्रेन करी कि हमें डिप्लॉय करि सारछु लामा 2 मॉडल को जादर कि 7 बिलियन पैरामीटर्स अछि तो इन सिंपल टर्म्स एटा चैट जीपीटी भलिया किंतु यार परफॉर्मेंस ओडिया लैंग्वेज पई बेटर अछि तो मु देवाशीष टाइम सरी जाउछि टिके जल्दी करिवा ओके हां हां देवाशीष आ गुड डेटा देखि दियो तापर आंसर दो तो एठी मु 5 मिनट तो एठी मु तक इंस्ट्रक्शन देली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस टू ओडिया दिस इज अ गुड हाउस आउटपुट होची ए हेयर का भलो सेकंड तको गोटे सिंपल क्वेश्चन पचाली चाइनीज कोटी कुआ जाए अवश्य गोटे स्ट्रेट आंसर देनी किंतु एक्सप्लेन कला जे चीन रा मुख्य भाषा होची चीन एटसेट्रा व्हिच इज द मोस्ट स्पोकन इंडियन लैंग्वेज हिंदी भाषा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग 16 by 4 16 रो 4 द्वारा फलाफल हेउची 4 जोटा कि ठीक उत्तर व्हाट इज 2 + 2 2 + 2 होची 4 जोटा कि ठीक उत्तर और एटा गोटे क्वेश्चन तक पचाली व्हाट इज जनरेटिव एआई अपन जदी पढिबे तार ठीक उत्तर दउची actually model is now hosted so anyone can try it एबे हम हगिंग फेस रे अछि भी सेटा जे भी चाहे सेटा को यूज कर परिबे so E2E network they have provided access to it so maybe yeah so I think yeah this is the Shanti sir might be okay yeah thank you Devashish and Sai so हमरो टिके विलंब रे चलिछि टिके हां हां मोर लास्ट स्लाइड और सरी गलाडी किछि नाही लास्ट हां लास्ट ता खाली मु कहि दोछि एटा डेमो तो हमें देखिलु माने जहां जहां हेछि तो कोड हमें करि परिबा आगु को तो जे माने इंटरेस्टेड अछन हमें किछि दा कोलैबोरेशन करि परिबा इ विषय जेंति हमें रिसर्च कर परिबा रिसर्च में कोलैबोरेशन कर परिबा कि ऐप डेवलपमेंट पे कोलैबोरेशन कर परिबा कि किछि AI की POC पे हमें कर परिबा
मेंटरिंग की कंसल्टिंग पाई कर परिबा आ जेमती इंटर्नशिप कथा कहउतली तो देवाशीष एंड भाई से इंटर्नशिप जेमती देखैली बहुत इंटर्न्स हम सहित काम करचंती आ जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती करिया पे से माने अप्लाई कर परिबे हम वेबसाइट रे जाई करी क्यूआर कोड रे हाँ डेफिनेटली द प्रोसेस विल बी सिंपल गोटे कोडिंग टेस्ट गोटे करबा आ गोटे इंटरव्यू करी करी आपण सिलेक्ट करिवु बट या मे बी समस्त अप्लाई कर परिबे किछ असुविधा नै तो from my side. So thank you all the interns मान को भी धन्यवाद देवी जो माने करूचंदी dedicatedly although I am presenting but all the hard work behind the scene is by them with and all the interns Gunit and other researchers who are working with us. So thank you. So take more screen sharing mo bond korchi. Next we'll move to our next session. So jemti kohutli amaro next we'll start inviting our next speaker, Mr. Vivekananda Babu and Deepak Panigrai. So Vivekananda Babu, I think already, although I didn't know much about V, but he is working as a senior technical lead as a sensor consulting along with Deepak Panigrai. He will provide a talk on HRMS scope building and AI cost management feature. So next, I'd invite Deepak Anand Babu and Deepak Panigrai to start their presentation. You can share your screen and feel free to introduce yourself if anything I missed. Definitely. Thank you, Shanti Bhai. Namaskar, Odia Bhai Boni Mane. Jai Jagannath, Jai Mai Samli. Odisha mu Sambalpur, about different parts of the world. Mukhammagarchi now based in Manchester, UK. Somehow last time, I attend Koripari Nathili due to some reason. I was traveling actually. This time I'm feeling really privileged. Got a chota slot milda and I have something to share. So I switch kari between Odia and English sometimes. Though I'm working as a senior technical delivery lead in Accenture, more good focus area achi and newly developed focus area I would say into HRMS field, right? So seda mu ebe share karibi. I know we are running a little late. So mu quickly share kariki. I'll start my presentation. Can somebody confirm if you're able to see my screen? Yes, Vivek. Okay, all right. So thank you, Shanti Bhai and team. A big technical session for we are jumping into a very generic, everybody probably knows what is HRMS, right? HRMS stands for Human Resource Management System. Starting from, just uploading your CV to a online job portal until, exiting a company and, doing all those aftermaths, right? So, we start kari first, HRMS kete bada field, tara scope kana, opportunities kana, global opportunities, how it a co-isabre position each in the market, right? So, hame jide ebe dekhiwa, recruitment and talent section only has a market of around 369 billion. And this is as per the latest report in 2023. Research actually I was amazed to see probably 50-60 billion, but 369 billion is a big chunk of amount, right? Learning and development sector providing different trainings, whether it is in-house, external, 377 billion. Got a important news share kariba ki chahiye because I work for Accenture since a long time. हमें जानी चाहिए phase this is the phase of corona, this is the phase of war and all that. So सब companies माने बे cost restructuring करके ये करछंदी.
But few of the companies, they are actually going above and beyond, setting aside few of the amount from their core business and investing into AI. Mujindi koi bhi Workday, Google karuchi, Meta karuchi, and different other big companies, OpenAI karuchi, and they're all investing into AI big time. Accenture has recently announced to set aside 3 billion for AI for across different industries, and they're working around this. Choto HR startup money, jo mane start karthile into the HRMS segments, they raised around 1 billion in 2022. Ketada example dochi in the higher view Glint, Phenom, and Eightfold. Emane samaste almost 200 million big way in different other areas. Ke video interview platform re, ke performance management automation re, real time analysis ke talent acquisition. Suppose koi good job portal kala and job portal let's say AI implement karike how it is actually screening all those candidates and leveraging those manual type of work. Say to kente ki simane tanga business strategy develop kale say jinso karike ebe they are planning to improve scale up. So now let's see what is actually the scope in HRMS in our AI and ML field, right? Ame koruchu recruitment and talent acquisition. Jyotiriki, I would say there is a big market for innovation, improvement, and investment in AI domain, right? So if we talk about, let's say, recruitment, right? Amapai ebbe porjanto bahut job portals bane achandi ki jo mane full-fledged 100% AI model ko asinandi. Though they are kind of starting up, though they are investing 100% AI model ko samane asinandi. They're still catching up. They're still building the business case where and how they will be able to streamline this process and automate through AI. Automation not just khali AI, just what a use case it may be. Ki suppose somebody is trying to create a login into a job portal, right? Tabe kitada use case no IST jyoti ki saman account kurchanti. You don't have to do anything to build your profile into any of the job portal. You just go upload your CV. It would create a new CV template and entirely a template for you. And then it will ask you that these all are the things you already have. And this is your ready-made CV, different NOA format, both beautify karike. And they're saying that, do you want to add anything else to make it a final one? So based on those CB analogy, so mane AI algorithm run karike, they are trying to find out what are the best job suited for their interested location and interested profiles. So say let's say recruiter companies start doing things, right? So say resume database to kadibo 50 CV, bahar karibo, and then say out of 50 CVs, they have to manually go through one by one to check, what are the skill areas, what are the experience level, what are the training and certifications which has been done. Say bithru bahar kariki top 5 या 10 से shortlist karibo. Then tapare say forward kariba kuje they will start scheduling the interviews. So is a bujin se ame tike time ti jaldi sariba amaro time limit asiala. Okay, kete minute gote minute achi gote minute bhitere sari diyantu already ame 2 minute cross kari galeni amata allotted time ru. Okay, all right, sure. The more kitna challenges karibi and opportunities the more actually voice learning, and I am really enthusiastic to talk about this in the limited time achi. The kitna model amara start already hichi, and I am also passionate in this field to work more into this. The performance management, diversity and inclusion jyotiri ki jadi konasi interview process ku jauchu am account kuchu we are selecting based on male and female candidate based on the roles, right? So ame jodi AI use kariba se diversity ko ame bias ko ame hati pariba.
data security and privacy, there are a lot of companies जो मैंने आसचंती जो मैंने automatic check करचंती data breaches and implement करचंती workforce planning, remote work support और complex HR process माने भी ये सब जिनसे हमें automate करी पारिबा and there is the time is right and we are really at the right age and right time to build this feature and scenarios in HRMS. So more quickly finish kariyogo chahibi, though I wanted to talk about a lot of things. Thank you for giving me the opportunity to talk about HRMS and its challenges and future scope. Dhanyawad. धन्यवाद विवेक बाबू आपनकर भल कहले इवन खाली गोटे लाइन मु ऐड करिवि इवन आम कंपनी रे भी करूछु टैलेंट मैचिंग पे एआई करूछु जोथि हम एनएलपी बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करूछु जॉब मार्केट रे कोन डिस्क्रिप्शन बारुती जॉब डिस्क्रिप्शन आ हमर जो टैलेंट अछंती तांकर सीवी रे जो स्किल लिखिचंती हाउ मच दे आर मैचिंग आ को गुडा को गैप रहउची सो दैट वी कैन इंप्रूव आवर सीवी so already we are using it. I think they have a lot of scope of technology in this field. Right. More background किछि research करछि विषय रे and hopefully in the next session I will be able to share more into this. Shanti bhai. हाँ sure, no problem. धन्यवाद अपन को next thank you. The next invite करिवि विश्वजीत नायक सर को. So टिके खाली कहबी already तांकर बहुत experience अछि business. He is the director of Grid Analytics India Private Limited, and he's a business leader of more than 20 years of experience. He has experience mostly in the ITs, advanced predictive analysis, software product and consulting sales. So next I'd like to invite him for his talk on ML AI typical applications. खाली रिक्वेस्ट करिवि जे हम टाइम टाको टिके कंसीडर करिकरी संक्षिप्त सर रे एना हमर अन्य बहुत स्पीकर माने वेट करछन आपण शेयर करंतु स्क्रीन नमस्कार जय जगन्नाथ जगन्नाथ let me share my screen. Anyway, my apology. I will not be the communication will be based on the English language, right? So we have a little disadvantage in the western part of Odisha. So my apology for that, right? So I feel more comfortable in English. So thank you in advance for bearing me. Can you view my screen? ठीक अछि अपन स्क्रीन देखा जाउछ स्टार्ट करू Wonderful, thank you. Thank you OIML for having me, right? And the theme will be the inclusive growth to AI. So I have aligned the title, typical what could be the ML AI application. And already the Dr. Parida gave me a nice introduction about me, right? And as you know, it's more into my role. Designation is a director, advanced analytics and data science, but I play more into a customer-centric role and the customer-facing role. I have been around in this domain of data science, machine learning, artificial intelligence over 20 years from now, right? So that has given me opportunity to meet a variety of the customers, right? The talk title will be typical ML AI application. Suppose we have the skill set. So what are the applications around which us we can approach and solve by application of the ML and AI? But for me, like this ML, AI, neurocomputing, database management, it's all are the subset of the data science. You can view my screen, right? So that is the biggest inclusion itself of the technology. Data science takes all along
right? You see the infographics. Here you can see data science includes your database and data processing, visualization, statistics. We talked about the inferential statistics, computational statistics, then pattern recognition, machine learning, data mining, AI, neurocomputing, all is a subset of data science. And what you can differentiate from the infographic itself, in the left-hand side, what you see, that is more into a data analytics, like databases, data processing, visualization, statistics, right? If I go to the right-hand side, that differentiates between a data analyst and a data scientist. The right-hand side, you see the pattern recognition, machine learning, data mining, AI, right? And the outer sphere, what you see, these are the soft skills you need to have, and you need to develop a combination, right? What we experience a very good talk in terms of the storytelling. So both this combination, right? The upper sphere and the inner sphere, that makes a deadly combination to become a rockstar data scientist, right? So what sort of activities we do, right? Either we do a machine learning activities, either we do a NLP activities, either we do a artificial intelligence activities, is called, all comes under the hood of advanced analytics, right? And suppose I go through like what we discussed about the inferential statistics, computational statistics, that comes under the descriptive statistics. What has happened, right? Then moving up, right? So under the descriptive statistics, we wanted to understand the nature and the characteristics of the data, the sampling, right? The hypothesis testing, all this comes under the descriptive statistics. Then moving up, we have something called diagnostic analytics, right? Diagnostic analytics, now popularly known as what are the parameters which contributes maximum to your response or the outcome parameters, right? The terminology, your feature engineering is very, very popular among the computer scientists or the computer science, but not limited to the name. The analogy may be changed, but the objective and the goal remains same under the diagnostic analytics. If I go to a core manufacturing industry, they apply heavily, not limited to the feature engineering. They apply something like Pareto chart, like Ishikawa diagram, root cause analysis, but the goal and objective remains same, right? What are the causes which affects maximum to my outcome, right? Then moving up, right? Then comes to the predictive analytics. What will happen? Whatsoever activities we have been doing under the hood of data science or the data mining, it's more into a predictive analytics, right? Then moving up, it's something called prescriptive analytics, right? What we have been talking about, the expert system, recommended system, all it comes under the hood of prescriptive analytics, right? And the type of analytics which are coming up, but not accepted very widely, known as the cognitive analytics, which talks more into the human intelligence, so and so forth, right? So whatsoever activities, like out of my experience I'm sharing, whatsoever activities we have been doing, machine learning, artificial intelligence, neurocomputing, right? All these you can classify under these 4 type of analytics. Sir, amar time ta tike sorry jaichi, au tike jaldi sariba. Okay, clearly. And just let me come to the point straight, right? So suppose we have that skill set, what are the typical applications you can approach in line with our team, right? So I have been impressed very heavily in one domain called pharmaceutical manufacturing analytics, right? You follow my pointer, you must have come across something, the stability and shelf life analysis.
right? The stability and self-life analysis is a typical application which approach and solve about the expiry date of the medicine, right? But out of my intellect curiosity or out of my research interest, suppose I deep dive, what are the algorithm, what are the technology behind for this calculation of or the prediction of this expiry date, I get starting from the inferential statistics to all these data science components being applied to solve the stability and self-life analysis, right? But if I have developed a skill for data science, this is not only one application I can approach and solve, right? Suppose I go to manufacturing, we have something called what we heard some of the terminology like predictive maintenance, right? It could be warranty analytics, right? So all like again I deep dive the approach, the algorithm, the technique that remains same, right? If I go to finance, I will see the typical application like churn analysis or the credit scoring, right? And I will deep dive what is the technology behind to approach and solve this type of the problem. Again, the algorithm remains same, right? Similarly, if I go to your marketing domain, right? Your customer churn and the retention, or which is popularly known as your customer churn analysis, which is widely popular in your telecom industry. But again, the algorithm remains same. So what is the message behind this slide you get? Suppose you have the skill set of your data science, right? You can approach and solve a variety of applications, right? Your opportunity for the innovation will be, if not infinite, it will be the limitless, right? And conclude time process. This is not an exhaustive one. This list is not an exhaustive one, but it will give you a sufficient direction in order to approach and solve a wide variety of applications through the power of data science. Thank you very much for having me and extending this opportunity, right? And for any kind of reaching out after this, suppose you wanted to have a deep dive, in the left-hand side, you can see my coordinates, okay, right? All the communication for the coordinates are there, right? So you can reach me out. Thank you very much. Jai Jagannath. Jai Wish you all the Jagannath. Thank you sir, धन्यवाद बहुत अपन को टाइम नहीं से आमे बेसी आ सुनी पारलुनी No problem. I understand. I always appreciate. I am actively respect the time allocation. No problem. Thank you very much. All the volunteers, we are doing a great job in best interest of our community. Thank you, sir. So next, I'd like to introduce, I think next we have Professor Panchanan Mohanty. I think he doesn't need any introduction. Mohanty is a linguistic professor and he has a solid background of linguistic, and he has published a lot of papers and books, around 28 books in English, 4 books in Odia, and he was the president of Linguistic Society of India. And I think in earlier session also he joined, and I think everybody in India in linguistic community, they have a great respect for him. And so let's listen to him. And I'm going to invite Koribi, Professor Panchanan Mohanty. Mohanty sir. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्तों को नमस्कार। आम्ही सर आपण स्क्रीन शेयर कर परिबे कैमरा टर्न नहीं मु खाली कहिबी मु बाहर अछि एवं मु नोट करिछि सब जिंस मोर स्क्रीन शेयर करिया पे नाही। आमे प्रायोरिटाइज करिबा उचित, कोन करिबा
एवं की प्रकार करिबा सेटा गोटे जिनस आमे करिबा काइना आमे जेतेबेले चर्चा करूचे आमे जदी 10टा विषय चर्चा करिबा सेटारे सेमिति रे आमे विशेष उन्नति करि परिबा नाही आगे परिबा नाही तेणु आमे स्थिर करू एबे आपण माने समस्त बसिकनी स्थिर करंतु जे प्रथमे कोन करिबा सेथरे किछि जेतेबेले आमे सफलता लाभ करिबा तापरे आउ गोटा को जिबा ई प्रकार किछि करले भलो हो नंबर 1 द्वितीय रे आपण मानक मु सुनी एने मु सुनिली जे आपण माने जो मॉडल तयारी करले से मॉडल गुडा को टेस्टिंग निहाती दरकार एवं टेस्टिंग पाई जो प्रकार चर्चा दरकार सेहि पई हमर कर बहु मॉडल ओडिसा रे काम माने ओडिया बहु मॉडल काम करने मु मोर भाग्य भलो जे मु पुष्पक भट्टाचार्य एवं राजीव संगल को बलिया बा डॉक्टर विनीत चैतन्य को बलिया लिंग्विस्ट कंप्यूटर साइंस शास्त्र बहुत दिन काम करछि अब ओडिया पाई कोनसी गोटे रोबस्ट मॉडल ए पर्यंत तयारी हे नै कोनसी जिंस माने एगुडा को होछि बड़ हमको आमे जेहेतु अनेक युव वैज्ञानिक अछंती बा उत्साही लोक अछंती आमे गोटे मॉडल तयारी करबा सेटा जिमती सफल होबो तापर आउ गोटे पुणी तयारी करबा एई प्रकार कले भलो होबो बोली मु भाबुची एवं आमे मझरे मझरे कथावार्ता समस्त करबा उचित गोटे रेगुलर व्यवधान भितरे काहेकि ना आमे जदी नियमित भाबरे टिके कथावार्ता करबा आम भितरे जो मन भितरे जो सब धारणा सब बा जो जिनिस गुड़ाक सब जो आसीबो भावना जो सब आसीबो ताको आमे परस्पर सतरे से गुड़ाक शेयर करबा समान साथरे कथावार्ता मध्य करबा अब आमे तो ओडिया भाषा संपर्क रे विशेष करी कहूछु ओडिया भाषार अवस्था भारी खराब एवं भारी खराब माने कोन ओडिया भाषा रे आपण माने जो व्याकरण व्यवहार करूचंती से गुड़ाक ओडिया भाषार व्याकरण नुहे सेहित पई ओडिया भाषार जो प्रकार हमर ही परिबा कथा एनएलपी बा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेटा ठीक भाबरे ही पारु नाही एवं ओडिया भाषा संपर्क जो भाषा शिक्षा पाई जो सब बही लेखा हैचे ओडिया भाषा रे सेउडा के जदी केतबेले टिके समय मते टिके जदी आगुतरा समय देबे मु गोडे जोडे बही भी देखै देबी किमती से माने कोन सब करिसंती तनु आमे जदी एगुडा कन करबा अन्य लोक आसी के हम पई करिवे नाही सेहि पई हमर एसबरे बहुत बड़ योगदान करबा उचित हम माने सब एवं ए जो मॉडल गुडाक करूचंती मॉडल गुडाक समस्ते आमे समस्ते जानिचु जे मॉडल गुडाक सब डिडक्टिव मॉडल्स किंतु हमर जो अप्रोच ता हबो सेतरे डिडक्टिव इंडक्टिव दिट जाक मिसिमासी इन काने टेस्टिंग ता न हले किछि काम हबो नाही एवं टेस्टिंग पई बहुत समय लागे तेणु आमे जो मॉडल गोटे तयारी कला विशेष करी मु भाषा संपर्क जहाँ मु अन्य संपर्क विशेष किछि कहि भी नहीं तार कारण मु जानी नहीं से विषय भाषा संपर्क जेहेतु मु ओडिया भाषा संपर्क किछि काम दाम करूची एवं से संपर्क किछि मोर धारणा अछि तेणु जदि आपण माने जेतेबेले ओडिया भाषा संपर्क किछि करूचंती सेतेबेले आमे मझरे मझरे बसिकनी चर्चा करिबा आपण गोटे मॉडल तयारी करंतु ठीक अछि तापर से मॉडल रो टेस्टिंग हबो कहना मॉडल माने तो भाषाटा केमती काम करिवो जे कोनोसी एस्पेक्ट हो से मॉर्फ हो पार्जर हो बा ट्रांसलेटर हो जहाँ भी हो एगुड़ा को विषय आमे टिके बसिकने आमे केमती कथावार्ता करिबा सेटा हले ता भारी भलो होता एवं आपण माने स्थिर करंतु ओडिया भाषा रे जो एनएलपी रे जो काम करिवे सेगुड़ा को सेठी भी प्रायोरिटाइज करंतु प्रथमे कोन करिवे तापरे कोन करिवे तापरे कोन करिवे ए सब करी कि जदी हमर एटा गोटे बड़ ग्रुप मु देखुचे भारी खुशीर कथा जे गोटे बड़ ग्रुप एथरे आमे माने समस्त रुचि रखुचु जे आमे माने किछि करबा ओडिया पई आठो बड़ी बड़ी बड़ कथा किछि हेई न पारे तार कारण ओडिसा रे बहु लोक आग्रही नहंती भारत रे जो माने भी करूचंती बहु लोक आग्रही नहंती ओडिया भाषा संपर्क रे तेणु जदि आपण माने करूचंती बहुत भलो कथा मत भारी खुशी लागुचे काहे मु जने वयस्क लोक बुढ़ा लोक एवं ए प्रकार जिनस देखि मु भारी खुशी होची एवं आम माने समस्त मिलमिशि किन जदि किछि कर परिबा आपण माने अनेक अछंती विभिन्न ग्रुप कर दियंतु बा टीम कर दियंतु गोट जो माने ओडिया भाषा संपर्क रे काम करिवे 4-5 जन बा 10 जन जो गोटे टीम करंतु बा जो माने
मशीन लर्निंग बा डीप लर्निंग बा बिग डेटा संपर्क जो माने काम करिवे आपण जहा करिवे जेमति करिवे ग्रुप कर दियंतु ग्रुप करला परे सुविधा हबो आपण माने जो डेटा नाही बोली मु प्रथम जो सुनिली डेटा काहे कि नाही हमर जो खबर कागज जो छपा होचे सेउडा के नै कि आमे ताकू व्यवहार काहे कि न करि परिबा खबर कागज जोड़ा आज समस्त तो अपलोड करछन्ते ठीक है ताकू टिके आपण कन्वर्ट केमति करिवे कोन करिवे सेउडा सब तो संभव पर काने मु एउडा सब 15 वर्ष तळे करिछि टिके समय लागितला से समय रे किंतु संवाद नै कि मु कन्वर्ट करिछि पूरा पूरी समय लागिला मते 7-8 मास समय लागिला तार कारण गोटे बनान पई ई पई से माने चारिटा देइथिले वैल्यू तेणु ए प्रकार असुविधा है तेणु आपण मैंने समस्ते बहुत जिनस एगुड़ा सब जानी तेणु आपण जदि से गुड़ाक करि पारंते ताले भारी भल होता आ मु जो कहली मोर विशेष किछ कहबा को नै मु सुनि के भारी खुशी हेली एवं मु प्रथम थर पई माने ए प्रकार चर्चा ए वर्ष मु प्रथम थर पई जोग दउची एवं भारी खुशी हेली आपण माने टीम करंतु एवं मते जो टीम रे रखिबे विशेष करी मते भाषा टीम रे रखंतु काना सेही थरे मु किछि माने मोर किछि जा के योगदान करि परिबे सहाय्य करि परिबे मते आपण जो एनएलपी टीम रे रखंतु एवं विभिन्न टीम काहेकिना धरंतु आपण जो मशीन लर्निंग बा ये जो आपण जो सब विषय कथा वार्ता करूचंती से समस्त सब विषय स्पेशलिस्ट नुहंती तेणु जो थे रुचि रखुचे बा स्पेशलिस्ट से प्रकार टीम कहले भारी सुविधा होता बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानक एवं नमस्कार नमस्कार सर मोर वीडियोटा काम करू नाही तेणु मु आ किछि करि परिबे नाही नहीं किसी असुविधा नहीं सर किसी असुविधा नहीं मु आपनकर सब पॉइंट को नोट करूची माने जति कि मु भाबुची मु पारिची जेमति आपण कहले कि आपण रेगुलर इंटरवल रे हमें किछटा डिस्कशन करिवा आ सबुटु भलो जिंसटा जोटा मते लागला आपण कहले जे मॉडल इवैल्यूएशन एटा एक्चुअली एबे एलएलएम रे सबुटु बडो प्रॉब्लम सबु कंपनी ठु आरंभ करी समस्तंकर मेजर प्रॉब्लम होची क्लाइंट को हाउ विल यू इवैल्यूएट योर मॉडल मॉडल रो परफॉर्मेंस टाको केमिति आमे इवैल्यूएट करबा आ पर्टिकुलरली इंडिक लैंग्वेज पे जोटा कि आमे भी बहुत चेष्टा करूछु गोटे केमिति बेंचमार्क सूट बनेबु जोतरे गोटे मॉडल को आमे इवैल्यूएट कर परिबा मॉडल रो फ्लुएंसी केमिति होची तारो आउ जेमति आपण कहले कि फोकस शुड बी ऑन द ग्रामर पार्ट सेटा गोटे बहुत भलो जिंस आ सेटा निहाती दरकार आउ जेमति कहले कि प्रायोरिटाइज द टास्क आउ मेकिंग ग्रुप टीम और ग्रुप एंड पर्टिकुलरली आपनकर इंटरेस्ट फॉर लैंग्वेज टीम रे सब दिन मु नोट करछि आई विल फॉरवर्ड ग्रुप रे कर देबी जदि मते लागु छी निश्चय हमें कंसीडर करबा जिंस गुडा को हमें करि परिबा तो आउ थरे धन्यवाद सर आपन को खाली गोटे मिनिट एबे ए जो हम देश रे मशीन ट्रांसलेशन ऊपर बहुत चर्चा होछ माने एपरि कि यूजीसी एआईसीटी यार सब जो मुखिया माने कह दउछन जे हमर जो मशीन ट्रांसलेशन इंजिन अछि ताको व्यवहार कर एवं ट्रांसलेशन कर जो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन ता साथरे मु कथा वार्ता करिछि हमें बोध हुए डिसेंबर के जनवरी रे गोटे वर्कशॉप करिवु एवं सेहितरे मशीन ट्रांसलेशन रो इवैल्यूएशन ऑफ वेटिंग केमिति हबो से विषय रे चर्चा करिवु हम देखिबे आस्ते समय जदि सुविधा हुए मु जदि जोड़ी पारिबी आपण मानन को ऑनलाइन सेमते जदि किछु संभव होई पारे सेटा बे हमें सब करबा हमें एमि सब करबा धीरे धीरे काहे मशीन ट्रांसलेशन विषय माने बहुत माने मते जदि आपण माने किछु खराब न होय बकुचंती तेणु जो मैंने बुझते नहीं कि तो आप जहाँ कहे से विश्वास करेंगे तेणु आम ये जो इवैल्यूएशन टेस्टिंग विषय में कथबार्ता करूँ मुझे आपण समस्त को इनफॉर्म करी अंजन जरिया बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे पुणी नमस्कार नमस्कार सर नहीं आम सर निश्चय आम काम करवा आप जमी कहले आमको इनवाइट करंतु आम भी इंटरेस्टेड जॉइन करने काम करचु जब आप टाइम बाहर कर जॉइन कले एंड धन्यवाद आपनकर मूल्यवान माने जो सजेशन गुडा करते ऑल आर प्रैक्टिकल एंड वैलिड सो अगेन थैंक्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस सो नेक्स्ट we'll proceed for our next expert Mr. Vivekananda Pani I think earlier also we met and he has spoken in earlier conversation. He's the co-founder and CTO of Every Language Technology
and before that he was also working in CDAC, and mostly he is heading the multilingual platform teams, and he has a lot of experience in particularly in a language domain, and he's also actively voluntarily so his messages communication over social media regarding the language and particularly Indic languages. So yeah, with all I'd like to invite him for his talk. It's about our race towards inclusivity. So over to you, Mr. Vivekananda Pani. Thank you so much, Santipriya. Jai Jagannath. ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଅଲରେଡି ବହୁତ ଲେଟ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲେ ହେବ? हाँ स्क्रीन शेयर कर दूंगा. So screen visible तो okay. Okay, so ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆରେ, କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ रेस जोटा वर्तमान if we look at AI तार major usages होची एई टाइप रो classifications रे, recognition रे, transformation रे बा generation. So I'm audible, right? Okay. So in all of this एबे पर्यंत जते जन कम मैंने सुनी आसले सब जगह रे हमें देखि कि data is key, and unfortunately जेबे कि हमें जदि मन करा जो कहबा इमेज और अन्य कोन सी टाइप रो, so सब जगह रे data is more or less generic, applicable to almost all human activities. But when it comes to language, it is very specific because it is language. So सेथरे and mostly NLP रे काम करी आछि प्राय 27 वर्ष हबा, तेनु मोरो फोकस टा इथरे रही छी। मु आपन मन को किछिटा बतेबी कि in the race for NLP, for inclusivity, where exactly do we stand? And first मु गोटे छोटो एग्जांपल देबी जे हमें प्राय 2016 रे न्यूरल मशीन लर्निंग यूज करिकी मशीन ट्रांसलेशन बने पे चेष्टा करू। आगे हिंदी पे का प्राय लखे पैरेलल कॉर्पस लखे सेंटेंसेस, देन नाटक वो बढ़ेलु आ 3-4 लखे करलु, and whatever accuracy that we got, we tried to give that to certain translators who were helping us with the translations. And when we did that, although we had started seeing a huge jump in the translation accuracy, after we extended that tool to the translators, even though they contributed 3 times more or even 4 times more to the corpus, the accuracy increase did not happen. It started not just slowing down, in some cases even falling. So, what problem actually hela? So, today the world is very different. We have neural machine translations for so many languages, and we are working on so many different kind of data creation techniques and so on. But let us actually see what happens. So, if we look at where we stand, Odisha has about 3% of the country's population, with more than about 20 languages, large and small, with one classical language in our country. And India contributes about 17% of the world's population. 10% of the world's most spoken languages actually are in India. And we have 1/5 of the world's internet users. In spite of all of this, the digital representation for Indian languages is extremely poor. हमने भी देखते कि एवे पर्यंत जति कि generative AI large language models भी तैयारी हेची, सेवड़ा सब रे भी Indian language, all languages put together, it is not even 1,000th in a percentage, right? So now let us look at the vehicle. Internet को प्राय 30 वर्ष हेलानी, और deep learning major growth only last 1 decade भितरे बेसी हेची. Global literacy, if we look at it, is about 85%. India is not really very far behind. We are about 78. Kintu global English literacy is only around 17%, which is obviously a minority. And English literacy in India is only 7%. Hey ki bhi, 60% of the internet content is in English. Now, in these 3 decades, even if the United States may have started the internet,
the lead time may have been a year or two, but all over the world, internet came around the same time. Why is it that English dominated so much? Let's look at what really was happening out there. So till about 2022, if we see, जित्ते content internet रे create ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ प्राय natural. That means there were no augmentation technologies that people were using very popularly. So natural creation mane keyboard re likhibe, and those are the means. So noise is very bounded. That means mu jodi type karuchi to gote mistype karibi pakha pakhi ko kita to bigala ki kon hela ei type ro kimba mu gote word ro spelling ta janimi. So jo type ro human confusions create hoba, those are the kind of mistakes that I will make. Now all of that data, when that is necessary for machine learned system, it is useful because we want noise to be a part of signal as well, so that we will be able to filter noise from sources as well and give more importance to signal. But when the nature of noise itself will not be known, we will not be able to deal with the system very well. Its efficiency will dip exponentially. So let's look at what is the importance of the road itself. So kon hela na jodi ho mane amane ebe dekhile ki 2 वर्ष mane 3 decades agro internet asila au last 10 years bhitere helani deep learning pre focus ete achi. Kintu internet asla pare bhi most of the devices and browsers remained unsupported for any language other than English. माने आपण यूनिकोड बा अन्य कोनसी लैंग्वेज यूज करि परिबे नाही. Indian languages took at least 15 years, and Odia in the most popular devices like tablets, phones, it actually came in the year 2018. So most of us, we are माने समस्त जो मिसी की ओडिया भाषा ऊपर काम करिया पे चेष्टा करछे हुए तो 2018 पूर्वरु आमने कि ओडिया टाको एक्चुअली कंप्यूटर रे इंटरनेट यूज करि पारु नथिले. तेनु ता माने इंटरनेट आसला परठारु जदि 20-25 वर्ष 20 वर्ष पर्यंत आपण आपण को भाषाटा को यूज ही सेतरे करि परिबे नै तो डेटाटा बनिबो केमति. These are practically the reasons why there is a large amount of English data but not representing other languages as faithfully and in the same ratio. Beyond this, there has been also another very, very big problem with our languages, that we have a very slow digital literacy. तामने कोन जदि भी हमें कहबा कि जे 70% लोक लेखि पढ़ी पारुचंती से माने तांको डायरी खोली कि राति रे तांको डायरी लिखि दे परिबे कि कविता लिखि दे परिबे सांग को चिट्ठीओट लिखि दे परिबे एवडा सब कर दे परिबे किंतु सेटा टाइप करिवे नै कहीं ना टाइपिंग जणा नै. Typing is difficult lage. Indian language typing is considered difficult than English, or people just do not know how to do that. And I wouldn't want to go deeper into that one because this is not the subject. But so that has also been a huge problem. Why? We do not have natural data getting created. So what is it that we do really? We actually, the data that we have now is mostly machine driven. That means the vehicle is no more as much human. आमने कोचे कि जे ठीक अछि, if you cannot write or type, you speak to the system, we will use an ASR, or we will use a machine translation or some other machine tool that will generate data. For example, we are also talking so much about augmenting data. Low resource achi amar bhasha gurakar mane resources are so low, so we want to create data through artificial ways, which is obviously not natural. So human created data is too little and extremely noisy because of the encoding issues that we have and the keyboard issues that we have, the font issues that we have, and so on and so forth. And the nature of the noise, which was bounded for English, is actually indeterminate for our languages. So we suffer from way too many issues when we are trying to deal with natural data, right? Okay, so when we try to do augmented data, the inheritation of the limitations of the augmenting stack, that means हमें जो method use करिया augment करिया पे machine translation करिया कि जहाँ भी use करिया, that will have its own limitations, which we will bring it back. So what would be the magnificent silver line? That at least when we are talking about data creation now versus 10 years ago,
we have less data, so it compels us to think about algorithmic research has become big. Generation speed has also increased. The rate at which data was getting created 10 years ago for English language, probably we will today be creating at much faster rate for Odia or Hindi or for any other Indian language. Artificially created data is actually very uniform, and therefore learning can be faster, although it will not be as tolerant. So, more gote kebal anurodh rahibo ki je in spite that we are trying to create tools, these tools are still not empowering people to be able to help their own creation. We are trying to create things that will help them get knowledge, get information, get to use a system. But till the time we also do not empower people to create, naturally, that every person who has their own creativity is also able to express, write their poems, stories, whatever, and articles, blogs, etc., etc., a lot of natural data will not get created. That would be the greatest leveler. And we will not be able to keep creating tools for all the 20 languages of Odisha or the 100 languages of India. So I think empowering that will definitely help us a lot in this inclusion process. Thank you so much. Jai Jagannath. Thank you, Vivekananda Babu. ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏବେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କାମ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିବୋର୍ଡ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ଡେଟାଟା ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଡେଟା କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା କେତେବେଳେ OCR ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଇଭେନ୍ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଡେଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆସୁନି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋ ଉପରେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ବି, କୁଇ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ I think ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। Till now, tools, technologies are not ready to digitize the data. जोटा कि निहाती दरकार आउ रिसर्चर माने मत लागुची करिया दरकार। थैंक यू फॉर योर इनसाइटफुल टॉक। आउ एटा बहुत भलो जिंस कहले जदी मु जानि हम पाखरे केते समय अछि, जदी हमें गोट दिटा क्वेश्चन अछि नै परिया। I tried to be as quick as I could. जदी कार किछि क्वेश्चन अछि गोटे हमें नै परिया, otherwise no problem. Yeah, we are running late. Otherwise गपसप अछि। गपसप अछि भलो जिंस कहले। So thank you. So last कले एति कहबी, thank you for all those speakers who joined this session from the generative AI session, and Vivekananda Babu and Vishwajit Nayak sir, Professor Panchanan Mohanty sir, and Vivekananda Babu. So I'll thanks from all of you, and over to the next session moderated by Mrs. Kukudas. So thank you all from my side. Namaskar. धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ महालया, जय जगन्नाथ। ओडिशा AIML रो चतुर्थ अंतर्जातीय सम्मेलन को मु कुकुदास आपण मानन को आउ थरे स्वागत करूछि। ताले आसंतु ए सभाटीर एई भागटी को गोटे सुंदर मंत्र ध्वनि रे आरंभ करिबा। मु ए वर्षर कॉन्फ्रेंस रो आवाहक अभिजित परिडा को अनुरोध करूछि to share his screen to play the mantra. Sound asuni. अभिजित टिके वीडियो रो साउंड टाकू भी शेयर करिया पड़िबो। हैव टू क्लिक द meters, expression, and poetry. We will also offer our salutations to the tradition and lineage of our teachers, starting from Lord Shiva, who is the destroyer of ignorance, through Adi Shankaracharya, to our direct teachers who have enriched our lives. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmat Acharya Parjantam Bande Guru Paramparam. शारदीय दुर्गा पूजा समय अनुष्ठित 2022
बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्रंकर मंत्ररू हमर जो सुंदर शारदीय आसुची मुहूर्त महोत्सव तार गोटे सुंदर एटमॉस्फेयर सृष्टि करछि एथर चलंतु सभा को आग को बढ़ेबा इट्स एन ऑनर to introduce the next speaker, the co-founder of this Odias in machine learning community, Mr. Samar Dash. He has been a career data journalist, B2B tech editor, research scholar, culture enthusiast, running the most popular Odia culture Twitter handle. He is getting us started with a new beginning for a growth state of unprecedented scale. By the way, I feel privileged to share his inspiring words with you all today. It's Samanuja's words. We are at a time when finally India digital leadership is being recognized. The nation's technological capability is long known, yet the digital thought leadership is being recognized only now, only after we have shown to the world what we are capable of thinking for ourselves and implementing at a scale and diversity, the scope for which is available only in India. Yes, I'm talking of UPI, Sofen, DigiLocker, and the like. If the G20 chose India to lead the Digital Public Infrastructure, DPI, initiative, it is not because of our ideas, words, and technical skills. It is because of the work that we have done on the ground and the valuable lessons that we can share with the world. If there is one thing that is common to all these projects, then that is inclusiveness. Last year, in this very conference, the CTO of Digital India, I'm proud to say, a fellow Odia, briefed us about new such projects. I sincerely believe the best way to apply AI to build inclusive growth is to build AI into DPI. Thank you, Samanuja, for your words and ideas. ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ପିକର ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ Mr. Manoj Mishra is the dynamic principal secretary of government of Odisha. In his leadership, Odisha IT has leapfrogged ahead. He has been consistently addressing our Odisha AI/ML community every year as the keynote speaker. The community has been thankful. Today, in his keynote, he is taking us through Odisha's transformative, inclusive, and sustainable growth in the times of generative AI. Sir, the floor is all yours. Mishra has not been able to, I think he's getting delayed. So He's getting delayed. Okay. Yeah. So looks like we'll go with our next speaker. He's Yes. no less. He's Professor Bansidhar Maji. Namaskar, sir. Professor Maji is in CSE and NIT Rourkela since 1991. An alumni of NIT with 3 years industry and 32 years of teaching and research experience. Currently, he is serving as the Vice Chancellor of Veer Surendra Sai University of Technology. His research interest has been AI and ML, computer vision, cyber security. He has supervised 21 PhD and 8 EmTeK research students in addition to regular BTech EmTeK thesis. Looks like he is an institution himself. Today, he will address the community on AI impact on education. Allow me to invite Dr. Maji. Yeah, good evening to all of you and namaskar. In fact, I'm not able to switch on my video, whether there is a permission necessary or something. Am I audible at least? Yes, yes. Somebody? Yes, sir. Can someone check that? Yeah, the video part? you can try switching on the video.
Was it stopped? I think it is No, not. no. Sir, ବର୍ତ୍ତମାନ try କରନ୍ତୁ video on କରିବା ପାଇଁ। Co-host କରିଦେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। Co-host ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅଛନ୍ତି। Sir, ସେ ହଉ ନାହିଁ ଭିଡିଓ ଟା ଅନ୍ ହଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। Yes, ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଜିତ। हम co-host ରେ already ଅଛନ୍ତି। Co-host ଅଛନ୍ତି। Sir, ପୁଣି try କଲେ? It is showing you cannot start the video because somebody has stopped it, because this host has stopped it. Host. Okay. Can you allow everyone to turn on their video? That part, can you I change don't that? know. No issue. No issue. No. Sir, No, sir, we want to see you while listening to you. Yes. Yeah. Let's make him the host and maybe he will be able to say. ଆମର host କିଏ ଅଛି? Host ହିଁ କରିପାରିବେ। Yeah, Somendra can do it. Yeah, I think it is possible now. Sir. Now we can see. No. Where is? No, it is still not working. Somendra. Sir, I sent a request. Hopefully the request went there. Yeah, I am requesting to start the video. It is start my video, I think, but still not working. Anyway, let us not bother about it. So I will share if my screenshots will be. Try that. Is it visible? If you can check it. Is it visible to all of you? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Thank you very much, first of all, because I was also part of the last year's conference, and it was pleasure listening to all of you. This year also, I'm thankful to Colonel Professor Parida and our Panda sir, who has requested me to join. It was a pleasure joining the whole community, Odia community, and machine learning and AI. And it is wonderful listening to all of you. In fact, I'm there since 1:30 onwards. So it is great. So I will just talk on my impact on the AI education. That, as all of you know, that AI has revolutionized in many sectors. Talk about any sectors, which are only few: healthcare, finance, transportation, anything you talk about. Everywhere AI has invaded, and in the recent years, the higher education, as well as starting from the mass education, also the modern technologies like an AI in particular will have a major role to play. And whether we talk about learning experience for the students or the faculty using teaching learning processes, analysis, so artificial intelligence has a role to play. And whether we talk about VR, AR, which are all part of the AI fraternity. It is, in fact, in many of the places, it has been learned that, or it has been seen that personalized learning, AI will be a part of this, learning the patterns of the students' learning processes, identification of the strengths and weaknesses of the students in the due courses of a particular semester, or the students to track the students' progress, whatever it is. Similarly, the assessment processes will be also impacted by AI. Students' performance, attendance management, participation of the students in the classrooms. Why we are saying that participation in the classrooms, that this behavior, whether it is cooperative learning or not, or the students are active in the classrooms or not. And as a result, when we identify the weak learners, we have additional tutoring systems that will be identified as expected. And AI chatbots, as is the call of the day, and the scheduling of the different systems like classes, assignments, quizzes, virtual labs, virtual field trips even. We need not have to go for the field trips in person.
but it will also supplement the people. Streamlining administrative tasks, like it will align both administrators, faculties, and students together so that the effectiveness of teaching learning processes happens. But major challenges what is expected in AI role in education, the data security, data privacy, and to understand administrators must ensure that AI in the must be utilized in the fair, transparent, and equitable way. And another challenges in the education system, what basically we are facing in Odisha especially, if we want to implement this AI or use the AI for the effectiveness of the teaching learning processes in the university or the higher education system, AI literacy is a must, at least for the people, those who want to use it, at least for the teachers especially, and which is a real lack in AI literacy. Similarly, to get the maximum advantage of this this AI, we also need to have the state-of-the-art laboratories with all the facilities that we want to exploit AI. Another challenge is what I am trying to see in AI is that these misutilizations of the AI, like the students are given assignments, the faculties has to write the research papers, the faculties has to pursue research. There is a possibility of misutilization of AI submitting an assignment sheet by a student by articulating through the chatbots. And you must be also aware that even in the research, the chatbots are ready to write research articles by seeing simple, like you talk about weather forecasting system, or you talk about a robotics, any kind of article that is being automatically done. So I expect this has to be safeguarded, or this must be taken into consideration. Everybody must be ethically strong not to misutilize this AI, and it will become a big challenge in front of the university or education system. I am here actually a big little bit of selfishness that what we are planning, how we want to take VSSUT Burla as a new directions of as a separate or as a unique university. All of you must have been aware of the sanction of the 2,000 crore. Students will be 5,000, 10,000, and there will be several. And we want to utilize in terms of the education, we want to have computer science with AI, computer science with cyber security, computer science, data science, robotics, IoT, all this. In addition to this aerospace engineering, biomedical, biotechnology, life sciences, whatever we talk about. In addition, we have a plan for the skill development center. Why I am trying to say that, I want to get your inputs, that my vision is to lead this university towards a AI-enabled university and maximum education. In addition to the conventional branches, even the conventional branches should have a bit of AI, not only bit actually. I want that at least there should be a minor specialization kind of 3 things in AI, so that the other branches can also be learned in the AI domain. And to make this, we are planning that we will have a set of schools, and every schools must be correlated with center of excellences, and each center of excellences should have a AI applications or AI domain in their respective research. Curriculum we have framed, and we are taking it from this semester, that in addition that each separate program must have a specializations towards this, but in higher semesters. But in addition, every student should have an orientation towards AI, ML, and data science. That is why we are making few of the courses like C, Python, AI, ML, maybe the fundamentals and all, may not be detailed. IoT, big data, these should be the 4 or 5 courses which should be common for all branches. But if other branch students, apart from computer science or electronics and telecommunication, whatever,
if other branch students also want to learn deep learning, business analytics, and other stuffs, many more, they can be given as a specialized courses for the students. This is what my plan is, to that we have to have a separate schools. Each school will have center of excellences, must, and each center of excellence, I don't want to go in detail of this. Each COE should be linked to schools, and we should have a partner with industries and alumni as mentors, which we have identified, in fact. And the objective is to carry out multidisciplinary research, low-cost innovative products for the society, take off industrial projects, become a diagnostic center for the industries, and act as a nodal center for the rural and urban Odisha. And I'm very happy that the state government of Odisha is also having a lot of thrust towards the development of the higher education, and they are putting a lot of thrust, especially towards the producing quality engineers in the state. These are typically in the, like, I should have a center of excellence in AI, ML, AR, VR, blockchain, IoT to a school of computer science. Similarly, for a school of electrical engineering, we should have power electronics, installation integrity, but they are all associated with something like smart and AI related stuffs, so that people can work in the AI domain. This is what the industry has been planned for, having a skill development center, a school of medical technology to exploit the nearby medical college. We have different schools of engineering and schools of basic sciences. And presently, the like university is thriving on the mostly on the AI domain research. Few of them are being put in. Like, I think all of you must be aware of the excellent, and they are getting a lot of accolades. Similarly, on the robotics, and even some people have done devised products, like automatic plantation of these. You can see that. Similarly, startups also we are all in the directions, and very happy to say that the people, the IG drones is a company which has actually started from the university, and people are doing great in that. In addition to the existing ones, are the few slides that I want to just put in front of you, the students' achievements that has been in the last 6 months or 7 months time. So with this note, in fact, I really feel that the AI, artificial intelligence, which is really being taking off the whole domain, different domain of research and applications, it will be a key driver to have a more qualitative education across the globe. And we must try to explore so that we get maximum advantage of it. With this note, in fact, I want to get few suggestions, few like advices, because all of you are working in the industry, and it needs to be industry oriented, and our people should be more like industry oriented. Our products should be. So Sir, with Jai this note, Jagannath. I thank you. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1-to-1 chat ରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ପଠେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ VSSU ପାଇଁ। ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସ ଡୋମେନରେ କାମ କରୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଲିଡିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଟ୍ ରେ। ତ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଆଗକୁ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି AML ପ୍ରଫେସନ୍ସ ଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତ ଯୋଉଟା କି ୱାର୍ଲଡ ଇକୋନୋମିକୁ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟେଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଲିଟରାଲି ସେମାନେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଡେଡିକେଟେଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯଦି VSSCT ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି Financial engineering. You mean to speak financial analytics, financial engineering kind of courses, right? Hello.
Hello, sir. Suni parchandi? Mate laguchi, Hello. I'm sorry to interrupt you, Kirti. Can we let him finish his speech, then we can go through all your requests or something, okay? He was in a flow, so let him finish his. Sir, please go ahead. Yes, you are. It's a little bit breaking, but you are. Am I audible? Not your voice break, Professor Bhaji. Yeah, I've finished. I'm finished. Yeah, I've now you can say. completed. I've completed. Yeah. Go ahead. Okay. Hello, because I don't know. So I have completed. Kuku ma'am. Okay. Okay, sir. So, sir, are you going to address Kirti's request? Yeah, like as I understood from Kitish that he wants, in addition, few more financial analytics, financial engineering courses in the university. Am I right, Kirti? Sir. Okay, thank you. I'll take care and I'll include those things. Thank you. Thank you, Dr. Maji, for your valuable suggestion and advice. I think we come will in keep it person as a because of note. this. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure to introduce our next speaker, Colonel Professor Aditya Parida, an academician and a member of the Core Advisory Committee. Today, he will take us through what it is like to build Action Plan 2030. Colonel Parida. Thank you, Kuku ma'am, and it was nice to see you again this year. So it gives a great memory. Acha, Joy Jagannath and Bande Utkal Janani and Mahalaya Samastanku Abhinandan. So Aji mu Sokale, the introduction deithili, I have discussed about the inclusiveness. So mote ko aji 5 minute bhitere Action Plan 2030 kohe pai. Now, ଯେତେବେଳେ ଆମେ action plan को ଯାଉଛୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛି and grant me this is little liberty of self-criticizing. I'll be criticizing not you, I'll be criticizing myself because being a core member, whatever I criticize, it's a criticism for me also. Though I'm 70 plus, but grant me that liberty. ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି we have so many achievers, excellent entrepreneurs, excellent domain experts, excellent researchers. But why, just after the conference, we just again go back to slumber, and I mean, that is not the way, I mean, we should be doing it. 21st century, come on, we can't waste time. Because if we are wasting time, others are taking this opportunity. What is the main aim of Odisha.ml? ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ how we should help the Odia boys do the hand holding, do the mentorship, help them in setting up startups and share the knowledge. I agree. Odisha.ml as a WhatsApp group has been very effective. You are sharing a whole lot of knowledge. And my hats off to Anjan. Sometimes I talk to him and I say, you have not slept whole night because I see him sending message, replying to others. But then it is not, one person can't do. And of course, there are some others also, I'm not denying. But then I'm finding we need volunteer because when we say AI, it's a huge domain. We need all domain experts, whether it is AI, whether it is deep learning, whether it is predictive analytics, whether it is other things. And question is, let's say, I mean, why someone has to reinvent the wheel? I'm just got a problem face kariki, more a problem face kariki, I've reached this level. I should share my thing so that my others, my juniors, my young generation should not face that problem. There is a problem, but I don't know. And let's think this way. 5 minutes per day, 5 minutes.
In a week, you can give at least 35 minutes, half an hour. In a month, you can give 2 hours. Nobody's asking you to give all time. I understand, especially those who are staying in US or in Europe or everywhere, life is very, you have to take care of your professional career, your family, your house, your children. So there is a certainly, there is no, I'm not denying, I'm facing that well in Sweden also. But the question is, we can always, those who are at least, if you are really feeling something for Utkal Janani, if you are really thinking something for the growth and development of Odisha, for the Odia youth, you can find time. Come on. So I've asked Anjan to give, please let us know how to, see, some particular person may be having some problem this year. He can say, sorry, this year I cannot do anything. But out of 10, at least 4 or 5 should come out. Who are the willing volunteers? What is your expertise? Where you want to volunteer? What help you can give? What do you want to do? So this is what is required. And I'm sorry. I'm criticizing myself. Please don't take it otherwise. It is self-criticism. And as a core group, I think I have the right. Now, question is, like 2021, we revived it. We started a summer school where 460 students, engineering students joined. Of course, some 200 or odd passed out. So we did that. And I said, let us do it 2 or 3 times in a year. But after that, nothing happened. We started a faculty development program so that we said that we should have all our faculties in Odisha should have AI knowledge. Because if the faculty doesn't have the knowledge, they're old timers, how they are going to deal with the students? And I only catch hold of Professor Maji, and we started it in BSHUT, that being my alma mater. And of course, there are some other issues I'm not going to detail. I sorted it out. And some more than 100 faculty took part in that. But we wanted to replicate that more for other institutes. We couldn't do that. We started the webinar. We did for 2-3 times. Then again, no volunteer, nothing. And again, it stopped. So this is really, really not good. I mean, please, I am not trying to criticize you in person. It is a criticism to all of us. And please come out from this slumber. Let's do the hand-holding. Let's try to do something for Odisha. If we are really sincere and motivational, and if you really want to. And you all have seen today, lot of experts have said how many, few million people, because AI is going to take over in next couple of years. You need millions and millions of AI literate people for job. And this is a golden opportunity. If we can train our Odia boys in AI, then they will not have any problem to get job in future. And what is the real problem? You ask all the youth today, they have a mobile phone. They are ready to do some chatting, to listen to song, or to do some other thing. But you ask them in their area of study or in their area of interest, how many of them are spending or doing any search or anything? I have done that because in last December and January, I visited Odisha and I interacted with 700-800 students. They unfortunately, because the society is not supporting, parents don't know anything. I'm saying the common people, by the way, because I didn't go to the elite school or elite universities. I went to the, normal schools and things like that. And that is where the real problem is. We all can help, whatever little. Like we are more than, let's say, in our Odia.ml, we have more than 260 experts. Let's say even 150. If we hold hand of one Odia entrepreneur or one mentoring, what can happen in a couple of years' time? So please, I don't want to go. I had my slides, but I am not going to do that.
because I'm really little perturbed. And subsequently, see, we started the national chapters or the countrywide chapter. We started the district-wide, district-level AI chapters. And the idea was that to motivate the school students in AI and to go, but nothing moved because we are not getting volunteers. We are not getting the helping hand. And unless you people come forward, please, whoever you may be, it is not going to happen. I've asked Anjan to send a message to all of you. Please, whoever, I mean, you have some personal problem at the moment, you say, okay, for next 6 months, I'm busy, I can't give anything. But those of you can give time. If you are really sincere, if you really feel for Utkal Janani, please come out. This is no way of doing things. We cannot just be losing time. Losing time is losing opportunity, and opportunity is for the future generation. You have achieved, perhaps you can achieve a little more, I mean more also, I wish. But what about the next generations, the present generation, the young generation? We have some responsibility for that.